So the inauguration ceremony is now going to start, and we are straight away going to the middle of the pitch. Souhardha ಟ್ರೋಫಿ 2023 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವು ಈಗಾಗಲೇ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉರ್ವಾ ವಾರ್ಡ್, ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರೋ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿರುವಂತಹ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪಿಚ್ನ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಲಿಯಾಕತ್ ಅಲಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಜಮಾಲ್ ಪುಂಚಮೆ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಖಾದರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ದೇರೆಬೈಲ್ ವಾರ್ಡ್, ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪಿಚ್ನ ಬಳಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಇವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಿಚ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಅಂಪೈರ್ಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಯಯ್ಯಾಡಿ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವು ಇಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. So everything set for the inauguration ceremony of this prestigious tournament in the name of Souhardha Trophy 2023, and all the players, I request once again the players of Red Wings Kunjat Bail and Deadly Boys Kankanadi, please come on to the come near to the pitch. ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಪಿಚ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ರಿಬ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್, ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರೋ, ಶ್ರೀಯುತ ಲಿಯಾಕತ್ ಅಲಿ, ಶ್ರೀಯುತ ಜಮಾಲ್ ಪುಂಚಮೆ, ಶ್ರೀಯುತ ಖಾದರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಿಯಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರು ಅನುಭವಿ ಅಂಪೈರ್ಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ, ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಯಯ್ಯಾಡಿ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಇತರ ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರಿಬ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮುಂದಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹೂ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ 2023 ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪಿಚ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉರ್ವಾ ವಾರ್ಡ್, ಇವರಿಗೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹಕೀಂ ಇವರು ಹೂ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ದೇರೆಬೈಲ್ ವಾರ್ಡ್, ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ನೌಷಾದ್ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೂವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ದೇರೆಬೈಲ್ ವಾರ್ಡ್, ಇವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀಯುತ ನೌಷಾದ್ ಇವರು ಹೂವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಲಿಯಾಕತ್ ಅಲಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಘುವೀರ್ ಇವರು ಹೂವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಲಿಯಾಕತ್ ಅಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಮಾಲ್ ಪುಂಚಮೆ, ಇವರಿಗೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಇವರು ಹೂವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಖಾದರ್ ಕೋಡಿಕಲ್, ವಿಶಾಲ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶಾಕೀರ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಿಯಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಶ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೂವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತರೇ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೋ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ, ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಹಬೀಬ್ ಇವರು ಹೂವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿರುವಂಥ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಲಾಘವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್, ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೋ, ಶ್ರೀಯುತ ಲಿಯಾಕತ್ ಅಲಿ, ಶ್ರೀಯುತ ಜಮಾಲ್ ಪುಂಚಮೆ, ಶ್ರೀಯುತ ಖಾದರ್ ಕೋಡಿಕಲ್, ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ರಿಯಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಇವರಿಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿರುವಂತಹ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಈ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಲಾಘವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೋ ಇವರು ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಲಿಯಾಕತ್ ಅಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ, and that is a good shot. And once again Rohan Montero is now going to bowl to Mr. Liaquat Ali. Souhardha Trophy 2023, the inauguration ceremony is now going on here. Aditya Mattome, that is an absolutely fantastic strike from Mr. Jamal Punchame. This is an outstanding strike. The former cricketer of MK Sports, Jamal Punchame, hit a fantastic shot at deep mid wicket. And now Mr. Khadar Kodikal is now going to face lofted this time from the bowling, not quite mid wicket at the last moment. And once again, Mr. Rohan Montero bowled this time, lofted, and that is gone after a couple of bounces, just stopped inside the fence. ಇನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರೋ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಇವರಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಡ್ರಿವನ್ ದಟ್ ಒನ್ former cricketer of Young Friends Urwa, one of the best fielder at cover area, Mr. Rohan Montero.
ಇನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಚೆಂಡನ್ನು ಆಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿರುವಂತಹ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪಿಚ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸರ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಇನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ, ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಯಯ್ಯಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪಟೇಲ್ ಇವರು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆಟಗಾರ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಇವರು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Thank you, Gopi. So, Harish Patil will go into complete the formalities of tossing ceremony of the opening match, which is head is the call, and it's a head and toss which is on by Red Wings Kujat Bail. That's one toss in the ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತಂದಲ್ಲ ರಾತೆ ಬೊಕ ಏತ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನದ ಏತ್ ರನ್ ನಡು ಉಂತ ಬಂದಲ್ಲಾರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ 42 ಬಾಲ್ ಉಂಡದು ಐಟೆ 42 ಐತ ಉಲೈ ಉಂತಾಡು 42 ಬಾಲ್ ಉಂಟು 42 ಉಲೈ ಉಂತಾಡು ಕೆಲವರು 42 ಇರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಪನ್ ಬಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ವೈಟ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನೋ ಬಾಲ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಉಂತಾವ್ರು ನಿಕೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎತ್ತು ಉಂತಾವ್ರು ಆತ ನಿಕ್ಲೆ ವಿನ್ ಆಪ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಗಲಿಗೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಇರ್ನ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು. ಸೊ 42 runs what Red Wings wanted to restrict the opposition of Deadly Boys Kankanadi. So news from the center is that after winning the toss, captain of Red Wings elected to field first and he wanted to restrict the opposition team just 42 runs, and we will see how well their plan will go into work out. And we are coming straight away into the commentary box for this Souhardha Trophy 2023. Yes. So Susan is one more new member will go into enter Red Wings group, and Roland Pinto sir is already presented the T-shirt, the jersey for the new member of Red Wings. All the best, new member Sujan, and we are wishing all the best and have a great cricket career in that Red Wings Kunjat Bail. Thank you very much. Thanks. And it's over to the first match. ಏಕೆಂದ್ರೆ ರಡ್ಡೆಡ್ ಒಂದು ರಾವಂದಕ್ಕೆ
ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ದ ಬಾಲ್. ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್. So, good morning everyone. Welcome back for the prestigious Souhardha Trophy 2023, which is proudly presented by Souhardha Friends in this UCG cricket ground. All set now for the inaugural match. After that, the inaugural ceremony, we are into the inaugural match. The two teams will go into start their journey in this particular Souhardha Trophy. Red Wings, Kunjat Bail and Deadly Boys Kankanadi
the teams from local pools will going to start their journey. And the two very good teams will going to face each other in the first match. And after winning the toss, captain of Red Wings elected to field first, so that opening batters already they made their way to the middle of the pitch along with the two umpires, experienced umpire Roland Pinto as well as umpire Mohan Iyadi, one more very experienced, the very good umpires. And along with the Roland Pinto sir and Mohan Iyadi, we have Harish Padil sir in our commentary box as the third umpire for the first match. So first day of the week on the Monday, and the condition looks to be very, very fantastic in the morning itself. It's a bright sunny morning here in UCG cricket ground, and all set now for the one of the biggest and fascinating day of cricket, where you can witness some fascinating cricketing actions in this UCG cricket ground, because this is a day and night cricket tournament and a lot of entertainment for the cricket lovers. Good morning everyone. This is Satish Salyan, of course. Satish Salyan in English with my friend Mr. Gopi in Hindi will go into entertain you in our commentary box, and we have Mr. Mahesh Kumar as a scorer, and Bedra Media, one of the popular live telecast YouTube channel, having a live telecast of this cricket tournament. Those who are tuned to your mobiles, and good morning everyone. Good morning to all YouTube channel viewers of Bedra Media. This is your Satish Salyan, and now we are into the Red Wings playing 11s. Those who are playing for team Red Wings 11. The names are as follows. Yajnesh being the captain of the side, Yajnesh, and Tanzim, Ashok, Aman, Asangadi, Ashwin, and Sustan. So very talented players, and very experienced Santosh, the wicketkeeper batsman. Of course, Ivan is a very good outfielder as well. We have Kishore is a left-hand batsman. Daryl, one more fantastic bowler. Srujan, just now he's got a jersey as a new face in the playing 11, and Sanil is a member of playing 11 of Kunjat Baila. And for the deadly Kankanadi, we have Shamshid is the player, Mubarish, Shafiq, Asif, the very experienced campaigner Asif, and Giri. We have Sinan, very talented Sinan, Asgar, Latif, and Taif, Nizam, and Imtiaz, one more very cool and calm customer, the captain of the side. Imtiaz is leading from the front for Deadly Boys Kankanadi. This is all the playing 11 squad of both Red Wings as well as Deadly Boys Kankanadi. It's all set now for the fantastic day for cricket. The opening batsmen for the Deadly Boys Kankanadi, already they made their way to the middle of the pitch. Asghar is in non-striker's end, the good striker of the ball. The left-hand batsman is on strike. Shafiq.
So Yajnesh will go into starts the proceedings. The first ball of the tournament, left arm over the wicket, and the first ball, it's a wide call by umpire. Yajnesh bowls this time, lofted at one. The ball is in there. Opportunity for the fielder. Oh, he can take a good catch. Oh my goodness, can you believe this? The fielder in the deep long off, Aman tried to take the catch. He little bit slipped out and couldn't manage to control his the body balance, but he taken a wonderful catch. But I think it looks like he's a safe there. And sometimes it's happening because he's charging from the long off. Couldn't manage to control that the speed, and he's just stopping a little bit. By doing that, the ball the wheels just slipped out, and the fallen down, but he's got the ball in his hand. That's very important, and is had a very good grip over the ball, so that even is lost his balance, but he's not lost a ball from the hands, and he completed that catch. So very good start there from Yajnesh. Picked up a wicket in the first over itself, and the batsman, the left-hand batsman, a little bit disappointed. Shafiq, as he wanted to go over the top of deep long off region, but couldn't manage to get the distance, and he's back into pavilion. One for the loss of one wicket. The very good start there from the captain of the side. Shafiq back into pavilion. Giri came into middle. Giri. Just examining the field set. There is a deep square leg in front of square. One at deep long on. This time full toss delivery nicely turns that one down to square leg region for a single. Giri is in a little bit defensive frame of mind, so that he couldn't manage to take the advantage of that full toss. Maybe this ball is surprised the batsman. He is not expecting the full toss from Yajnesh, so he just turns that one down to square leg region for a single. With that single, score moves on to 2 on the board for the loss of 1 wicket. Yajnesh balls dry side to the hands of a shot extra cover. Second wicket is back into pavilion. Asghar is gone. Second wicket here for Yajnesh. What a dream start given by the captain of the side for Kunjat Bail. They really got a flying start, but it's not a good start. Absolutely shackling start here for Deadly Boys Kankanadi. Asghar departs. It's 2 for the loss of 2 wicket. So new batsman is Mubarish for Deadly Kankanadi. With a lot of responsibilities, just walk towards the middle. The 2 wickets were back into pavilion in the first over itself. Yajnesh produced that very important breakthrough. Beautifully balled, perfect one. The batsman this time quite watchful. Mubarish seeing that is a dangerous delivery. He's played that one defensively back to bowler, and there is no chance at all for any run. Score remains on 2 for the loss of 2 wicket. Short fine leg, square leg, short point wicket. There is short mid off, short cow point, back at point. Left arm, round the wicket balls. Beautifully balled. Misjudgment by the batter, Mubarish. Ball well within the reach of the batter, and I just misjudgment. Left the ball. Kishore kept the ball behind the stumps, back to bowler. 2 for the loss of 2 wicket. Yajnesh Bowles going for the sweep shot, missing it completely. Fantastic over from Yajnesh. Comes to an end. 2 runs and 2 wickets in that over. A very good start given there by the captain of the side, Yajnesh. And he's justifying why he's the captain of the side, because of his ability of bowling that power play overs. Picked up 2 valuable wickets. Searching for the right track, Deadly Kankanadi.
are struggling in the middle. 2 for the loss of 2 wicket. The second match will be played between NM Cricketers Mangalore versus Young Friends Urwa. And matches for the Mangalore pool, the top two teams, NM Mangalore as well as Young Friends Urwa, will go into clash in the first round itself. It's going to be one more, the best match of this cricket tournament between these two very good teams. First ball, what a shot! Beautifully plays it down to one bounce into the fence, down to deep score leg boundary for 4. The Giri just beautifully plays that one, and almost on the ball is coming into the batsman, curving back into the batsman, and stretching his front foot quite beautifully. And the timing is so exquisite. The placement is better than that, and ball went like a tracer bullet. Beautiful shot, glorious stroke there from Giri. The kind of treatment which is required in the second over after that shackling start in the first over, and straight away Giri is releasing the pressure in the first ball of the second over. Right arm over the wicket bounce. This time up and over, down to long off region. One bounce into the fence for 4 runs. Giri is on fire. Absolutely fantastic placement there from Giri. The width is offered there by the bowler. After that, Daryl, which is punished for the first ball down to mid-wicket region. Daryl thinking about not to bowl around his legs, so that he bowled outside the line of off-stamp, not keeping any fielder in the offside region. No ample pace in the ball, no adequate field for that. And Giri just capitalizing the opportunity to go over the top of the infield, down to deep long off boundary for 4 runs. It's not so easy to hit the bowler like Daryl, one who has got a fantastic tournament in the JD Boys Trophy 2023 for Adimeshwari cricketers. But Giri absolutely know exactly that the kind of treatment which is required. He's not really looking which bowler he is facing, but he's just looking at the line of the ball where you wanted to get over the top of the infield. This time again, nicely driven, again defeats the infield, back to 3 boundaries. Hat-trick boundary comes up here for Giri. What a magnificent display of batting performance here from Giri. He is looking so confident. Again, Daryl might be thinking about what the things went wrong. It is in this particular cricketing stroke, I want to say. There is nothing wrong with that line of the ball. But Giri just making a little bit room to play the shot. And you know exactly no protection has been given in the deep. So he just got the placement right between extra cover and the mid-off. And ball running down to deep extra cover boundary for 4 runs. 14 for the loss of 2 wicket. Outstanding comeback by Giri in the second over. Making the patchwork what they got in the first over. Lost 2 wickets for just 2 runs. But Giri really back in this game by hitting 3 consecutive boundaries. This time, driven that one down to mid-wicket region. Protection has been given in the deep. Yajnesh, the captain of the side in the deep mid-wicket, fields the ball. No question of second run. Giri is interested for the second. His partner is not interested. Barish rightly so. Settle for the single. 15 for the loss of 2 wicket. Again, right arm bowls and went for the sweep shot. Chance of run out in the non-strikers end, but it's going to be a much distance here for the Ashwin to return the ball to the non-strikers end, and Mubarish completed the running between the wicket. 1+1, wide call by umpire. 2 more to the total, 2 wide, 17 for the loss of 2 wicket. Again going for the expansive drive, but not quite able to get that one from the middle of the bat. Just a single, just a dotted delivery, 17 for the loss of 2 wicket.
Again, right arm over the wicket. Ball him, clean him up. This is a huge wicket for Daryl. He's wanted to dismiss this man because he hit the 3 boundaries in the 3 consecutive deliveries in the first over, first 3 deliveries. The last delivery of the over, and the bowler Daryl takes the revenge of picking a wicket of danger man Giri back into pavilion. But I think Giri's played a good innings, short and sweet innings, small cameo of 14 runs, which is comes to an end with help of 3 attractive boundaries. ಮೀನ್ವೈಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ 2023 ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂಥ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾಕಲಾ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ್ ಆಚಾರ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಕಲಾ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಆಚಾರ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಒಂದು ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಆಚಾರ್ ಇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಅವರದಾದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಇರ್ಫಾನ್ ಇವರು ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಆಚಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ 2023 ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. So Lakshminarayan Achar is one of the most popular name as far as manufacturing the bat for underarm cricket is concerned, and he got a lot of contribution for underarm cricket and producing some quality bats for the batsmen of underarm cricket. So thank you very much for Lakshminarayan Achar for your presence for this presence in this Souhardha Trophy 2023. The 15 runs conceded by Daryl in the previous over. 17 for the loss of 3 wicket. Nicely swept that one down to square leg region behind the square, and a walkable single here for Mubarish with that single scope on Mozant. 18 for the loss of 3 wicket in the over number 3 is in progress. Sustan is the bowler, one more very talented bowler, Sustan, representing for Red Wings Kunjat Bail. Red Wings Kunjat Bail, of course, in this particular season has got some success, especially in the UCG cricket ground, and they are eyeing in this particular tournament as well. So new batsman Shamshid drives that one down to deep wideish long off region. Of course, Shamshid is from our neighboring state, Kasaragod district, and a very talented player, fantastic all-rounder, and having him in the playing 11 of Deadly Boys Kankanadi definitely will going to strengthen 3 departments: the bowling, batting, and at the same time is a very good outfielder. Again going for a sweep shot, Shamshid missing it, everyone missing the ball completely. I think it was the inside edge of the bat, and he got a single for that. After ball is just hitting his the bat ball hitting his body, and he got opportunity to complete the single. 20 for the loss of 3 wicket in the over number 3 is in progress. Sustan again bowling away from us. Right arm bowls, drives that one nicely. Shamshid, the copybook style, beautifully plays it down to long off region. Shamshid is a kind of batsman, he took his own time to settle down. The very good rotator of the strike, technically a good player, and 21 for the loss of 3 wicket in the over number 3 is in progress. Sustan again. Right arm over the wicket, bowlers back drive, nice looking drive there from Mubarish. One of the very good stroke and very delightful stroke to watch whenever the batsman hitting the ball very straight as an arrow, and he picked up a single for that. Both the batsmen are rotating the strike in this particular over. 5 deliveries, 5 singles taken. 22 for the loss of 3 wicket in the over number 3 is in progress. Right arm around the wicket. Oh, that ball is very close to the stumps. There is chance of run out in the non-strikers, and looks like there is opportunities created in the strikers end, but Ashwin trying for the run out in the non-strikers end. Very lucky escape here for Shamshid, because the ball is got a last moment, he's got a bat onto that. Otherwise that ball is definitely going to hit the middle end off stump.
So over number 3 completed. After completion of over number 3, it's a 23. 23 for the loss of 3 wicket, 3 overs completed. And now a lot of discussion is going on because a lot of runs conceded and 7 point, the more than 7, almost they're getting the runs just under 8 runs per over, very close to the 8 runs per over. It's a good run rate maintained by Red Wings, by Deadly Boys Kankanade after they got a shackling start. 2 runs in the first over by losing 2 wickets. Then second over is very expensive. 15 runs came from that over. And then 8 runs came from the previous over of Sustan. Yajnesh, one who really got a breakthrough in the first over itself, picked up 2 valuable wickets. Warm welcome for Nandan Kulshekar, one more biggest fan of Underarm cricket. Is just having a seat in the commentary box. Nicely driven, beautiful placement there from Shamshed. The ball running down to deep extra cover boundary. Good piece of fielding there by Ashok. Santosh little correction, and the batsman completed a couple of runs. Absolutely exquisite extra cover drive there from Shamshed. That's what I'm talking about. Very classical player. The classical cricketing stroke once again there from Shamshed. But I'd even the better fielding there by Santosh, being the experienced campaigner. He's done a great job saving a boundary for his team. And scoreboard now moves on to quarter century. 25 for the loss of 3 wicket in the over number 4 is in progress. Now for Shamshed, one fielder is going back to deep square leg region. Here is Yajnesh balls going down the leg stump further away. White signal umpire Roland Pinto. One more addition. With addition of that single, scoreboard moves on to 26 for the loss of 3 wicket. And here is Yajnesh again with the short run of left arm over the wicket balls and beautifully ball flighted one, and this time Shamshed going for the square cut, but it's very difficult stroke to play in the books, especially in the underarm cricket, because of uneven bounce. You can't judge the bounce of in underarm cricket. Sometimes it's keeping low, sometimes it's getting extra bounce. Oh, beautifully ball. Oh, it's tapping the ball just in front of Kishore. They're going for the quick single. Quite unusual cricketing stroke there from Shamshed. Of course, he wanted to drive the ball. The last moment, seeing that ball is coming into him, almost targeting the middle stump, he is just blocking the ball, not to hit the stumps, and he survives. Picked up a single for that. 27 for the loss of 3 wicket. Yajnesh doing a right job. Ali mottome young friends Urwa ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸೊ Mubarish, so good. Oh. That means Shamshed looks like there's twisted actually while he's running. Looks like is some part of the ground is up and down. He's put that one in that place and looks like his twisted ankle. Might be a little bit dangerous. I don't think it's going to. I hope he will going to be very fine there, because he's run very slowly. That's why he's very safe. He's just BMR. So 28 for the loss of 3 wicket. Now Yajnesh back to his bowling mark from the BMR group end. From the BMR group end, bowling left arm over the wicket. Beautiful shot, but protection is given in the deep in the extra cover region, so that batsman have to settle for the single. With that single, scoreboard numbers on to 29 for the loss of 3 wicket in the over number 4 is in progress. So far it's a very good over, quiet over from Yajnesh. 6 runs conceded in the 5 balls. Yajnesh back to his bowling mark. Mid off up in the circle. There is extra cover. There is a long on. Mid wicket is there. Improvisation by Mubarish, but protection has been given for that improvisation. Reverse sweep, just a single here for Mubarish. So good going here for Deadly Boys Kankanade. After completion of over number 4, they got a very good score. 30 for the loss of 3 wicket.
at the rate of 7.25 runs per over, 7.50 runs per over. So before the next over going to start, is a time to change in commentary box as well. And I request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. And good morning, Gopi. And absolutely, it's one more fascinating day for cricket, because we are going to witness some fantastic matches. The local pools as well as Manglore top pools will going to have a competition for the big title of Souhardha Trophy 2023. And altogether, we are expecting some great battle from all the teams to get the title of Souhardha Trophy 2023. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने कहा, इस वक्त आज एक बेहतरीन क्रिकेट यहाँ पर यूसीजी उर्वा क्रिकेट मैदान पर देखने को मिलेगा। मैंगलोर के 12 प्रतिष्ठित टीमें, 12 प्रेस्टिजियस टीम्स यहाँ पर हिस्सा लेगी और निश्चित रूप से हम दावे के साथ कहते हैं कि आज एक बेहतरीन क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस वक्त दो बेहतरीन टीमों के बीच इस वक्त संघर्ष जारी है इस श्रृंखला के पहले मैच में रेड विंग्स कुंजत बेल और डेडली बॉयज कंकनाडी के बीच में। और जहां तक सवाल है इस वक्त स्कोर का, तो डेडली बॉयज कंकनाडी एक बेहतर स्थिति में इस वक्त नजर आता हुआ 31 रन जोड़ चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। 31 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर इन फैक्ट। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए सृजन, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार शमशीर। और इस बीच सृजन गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए शमशीर के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई वाइड का इशारा, रन के लिए दौड़ पड़े और रन पूरा कर चुके हैं। गेंद गेंदबाज के हाथ पर इस वक्त टकरा चुकी है और बल्लेबाज के हाथ पर टकरा चुकी है और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर इन फैक्ट। और सृजन इस वक्त गेंदबाजी करेंगे मुबाशिर के लिए, क्योंकि इस वक्त मुबारिश के लिए, जो कि इस वक्त सपना करने के लिए तैयार। और गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट। सृजन गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद चिप किया, इस बार लॉन्ग ऑन पर गेंद जाती हुई, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। मुबारिश की पारी समाप्त। गेंद को उछालना चाहा था, ऐसा कहना पड़ेगा, नॉट क्वाइट मिडलिकेटेड द लास्ट मोमेंट, और गेंद सीधे पहुंची लॉन्ग ऑन पर। और इसके साथ इसी के साथ मुबारिश की पारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। 6 रन उन्होंने बनाए और आखिरकार आउट होने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए 16 रनों की साझेदारी यहाँ पर टूट चुके हैं। 16 रन पार्टनरशिप हैज बीन केम्स टू एन एंड फ्रॉम बिटवीन मुबारिश एंड शमशीद, एंड 33 for the loss of 4 wickets now for Deadly Boys Kankaradi in the over number 5 in progress. After this match, the high voltage match is now coming up. One of the high voltage match in fact of the tournament. NM Mangalore will takes over Young Friends Urwa। और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि वो मैच जब शुरू होगा मैदान लगभग दर्शकों से भर जाएगा। तो आज बेहतरीन मैचेस खेले जाएंगे। कुल मिलाकर सौहार्द ट्रॉफी 2023 इस मेगा श्रृंखला डे नाइट क्रिकेट श्रृंखला के अंतर्गत, क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत यहाँ पर बेहतरीन मैचेस खेले जाएंगे। अगर इस श्रृंखला के शेड्यूल्स के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो इस मैच के बाद एनएम और यंग फ्रेंड्स के बीच मैच खेला जाएगा और उसके बाद तीसरा मैच होगा ब्रदर्स मक्यार और टीम मैट्रिक्स के बीच में। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए गेंद वाइड का इशारा। 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल इन द फेस ऑफ वाइड। 35 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। और उसके बाद मैच होगा कुल मिलाकर कहना पड़ेगा 11:45 को। वन मोर गुड मैच। स्नेहा मालेमार विल टेक्स ओवर गोरी यंग बॉयज। मैच नंबर 4 ऑफ दिस टूर्नामेंट इज नाउ कमिंग अप। और कुल मिलाकर एनएम और यंग फ्रेंड्स के विजेता टीम टॉर्पेडोस खाना का मुकाबला करेगी दूसरे दौर में, जबकि स्नेहा मालेमार और गोरी यंग बॉयज के मैच के विजेता टीम केएफसी कोडिकल का सामना करेगी दूसरे दौर के मैच में। तो बेहतरीन मैचेस आज खेले जाएंगे। इस बार एक बार फिर से ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 35 रनों पर।
So 35, 37 in fact for the loss of 4 विकेट। और गेंदबाज की ये गेंद इस बार बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहता, लेकिन अंतिम क्षण में खेल नहीं पाए। बाई का इशारा और बाई के रन के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है। कुल मिलाकर 38 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए सृजन और बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार शमशीद और सृजन इस वक्त दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली बट ही गॉट अ सिंगल। इन फैक्ट दे कम बैक फॉर द सेकंड, दिस कुड बी इन ट्रबल, दिस कुड बी इन ट्रबल एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर। और यहाँ पर काफी नजदीकी मामला हो सकता है। देखना यह है कि निजाम जो कि दूसरा रन पूर्ण करने ही वाले थे, इससे पहले कि गेंद वो बल्ला क्रीज पर लैंड करे, देखना यह है कि गेंद को गेंदबाज थ्रो को रिसीव करने के बाद विकेट चटका चुके थे या नहीं। तो यहाँ पर काफी नजदीकी मामला। और तीसरा एम्पायर जो कि इस वक्त इसका परिशीलन यहाँ पर करते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। तो जहाँ तक ऑफिशियल स्पॉन्सर्स इस श्रृंखला के, उनका नाम मैं जिक्र करना चाहूँगा। इस श्रृंखला के सफलता के लिए कई महानियों ने अपना योगदान दिया है, तो ऑफिशियल स्पॉन्सर्स के रूप में तो उनका नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा। श्रीमान वेदव्यास कामत जो कि यहाँ के एमएलए हैं। और जहाँ तक सवाल है, इनायत अली इज गॉन, ही फेल जस्ट शॉर्ट ऑफ हिज क्रीज दिस टाइम। और मैंने अंदाजा लगाया था कि ये शायद बल्लेबाज का बल्ला हवे पर होगा, और वैसा ही हुआ। यहाँ पर जब स्टंप्स चटकाए गए थे गेंदबाज द्वारा, तब बल्लेबाज का बल्ला हवे में था। द बैट वाज इन द एयर एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज बैकिंग टू पेविलियन एंड 5th विकेट गॉन। 5वां विकेट गिर चुका है 5वां ओवर प्रगति पर। ऐसा कहना पड़ेगा 5 विकेट गिरने के बावजूद एक बेहतर रन रेट इस वक्त कायम रख चुका है। जहाँ तक सवाल है डेड्डी बॉयज कंकनाडी का, और देखना यह है कि इस ओवर के बाद 2 ओवर और खेला जाना बाकी, फेंका जाना बाकी। 7 ओवर्स पर साइड टू बी प्ले, 7 ओवर प्रति पारी खेले जाएंगे। और नए बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी के लिए इस वक्त उतरते हुए तैफ, और वो इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद, और सामना इस वक्त करते हुए शमशीद और गेंदबाज श्रवण इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में जमावट करने के बाद इस वक्त गेंदबाज तैयार। श्रवण सृजन दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछाला है मिड विकेट पर, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। Is it that one many a miles this time? Just caught that one right from the middle of the bat and dispatched it in a style of a deep mid wicket fence for a massive one. तो यहाँ पर शमशीद छक्का उछाल चुके हैं। काफी जहाँ तक शमशीद का सवाल है, काफी आक्रामक बल्लेबाज के रूप में वो जाने जाते हैं, और यहाँ पर निस्संदेह अपने आक्रामक बल्लेबाज यहाँ पर वो दिखाते हुए। और इस बीच गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद स्टीयर किया, बैकफुट पर जाने के बाद गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड बैन पर, फील्डर वहां पर पहुंचे, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 46 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो एक और बेहतर ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुका है, जिसमें मेरे ख्याल से रन्स बने हैं 11-12 रन तो जरूर बने होंगे यहाँ पर। और 46 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर। तो इस वक्त गेंदबाज BMR एंड की ओर से गेंदबाजी शुरू करते हुए, और 6ठा ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ डेडली बॉयज कंकनाडी की पारी में। 13 रन इस ओवर में बने, 13 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर। और इस ओवर की बदौलत एक 5 विकेट खोने के बावजूद इस वक्त डेडली बॉयज कंकनाडी एक बेहतर स्थिति में यहाँ पर नजर आता हुआ। गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार तैफ। और इस बीच फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई। प्रखर धूप इस वक्त मैदान पर छा चुकी है। सुबह का वक्त, दिन धीरे धीरे दोपहर की ओर बढ़ता हुआ। सुबह के 10:10 यहाँ पर बच चुके हैं। इस बीच पहले गेंद ऑन साइड पर, गेंद को स्विंग करना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग एट द लास्ट मोमेंट, और गेंद पहुंची इस वक्त गेंदबाजी पर 1 रन मिलेगा जरूर, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 47 रनों पर। इट्स 47 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 6th ओवर इन फैक्ट। और गेंदबाज
इस बीच सुस्तान गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। तईफ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और शमशीद ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं। पिछले गेंद पर एक रन उन्होंने लिया था और इस बीच ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त सुस्तान गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और तैयार इस वक्त दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया। रन के लिए दौड़ पड़े तेजी के साथ, रन निशाना टकरा चुका है और इसी के साथ यहाँ पर विकेट भी गिर चुका है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वर्क मेड बाय द मिड ऑफ फील्डर। गेंद को जैसे ही उन्होंने फील्ड किया तुरंत अपने हाथों से रिलीज किया। इस वक्त गेंद क्रॉस एंगल से फेंका गया वो थ्रो सीधे स्टंप्स को जाकर टकराता हुआ बिल्स इस वक्त उड़ते हुए और यहाँ पर ये विकेट गिर चुका है तईफ का। तो जोखिम भरा रन चुराने के प्रयास में अपना विकेट खो बैठे और छठा विकेट खो चुका है डेडली बॉयज का खिलाड़ी 47 रनों के ऊपर। इट्स 47 for 6। सिनान का आगमन यहां पर हो चुका है। इस बार ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना एक बार फिर से टकरा चुका है। वन मोर विकेट फॉलन, कंसेक्यूटिव रनआउट्स हैपेंड इन द इनिंग्स ऑफ डेडली बॉयज कंकनाडी और इस बार भी जोखिम भरा रन चुराना चाहा था और गेंद सीधे स्टंप्सों को बिखेर कर ले जाती हुई और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। 7वां विकेट गिर चुका है। शमशीद की पारी समाप्त और एक बेहतर पारी खेलने के बाद शमशीद पेविलियन वापस लौटते हुए दुर्भाग्यवशात यहाँ पर रनआउट के रूप में वो वापस लौटते हुए और सातवां विकेट यहाँ पर खो चुका है डेडली बॉयज कंकनाडी। 47 for 7 इन द ओवर नंबर 6 in progress. 7 overs per side to be played and this is the 6th over in progress. तो जहां तक सवाल है इस ओवर के बाद एक ओवर का खेल और बाकी है डेडली बॉयज कंकनाडी की पारी में और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा गेंद की परीक्षा इस वक्त अंपायर करते हुए अंपायर रोलैंड पिंटो और अंपायर मोहन याडी और इस वक्त बल्ले की परीक्षा करने के बाद इस वक्त अपने स्थान पर लौटते हैं। टाइम आउट, इस बार टाइम पूरा हो चुका है तो एक ज्यादा खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। तो उनके निगदित समय स्टिपुलेटेड टाइम इस वक्त समाप्त हो चुका है और एक ज्यादा खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात किया जाएगा। तो एक फील्डर को इस वक्त सीमा रेखा के अंदर बुलाते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर से एक्स्ट्रा कवर पर 20 गज के दायरे के अंदर और गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को खेला बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाते हुए एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा लेकिन काफी धीमा थ्रो, काफी वाइड थ्रो और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। बेहतर स्ट्रोक इस वक्त और इम्प्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को खेला था, 2 रन बल्लेबाज बटोर चुके हैं। 49 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 49 for the loss of 7 wickets and this is the 6th over in progress in the innings. Backward square leg deep mid wicket long on long off इस वक्त मौजूद, कोई डीप एक्स्ट्रा कवर नहीं। डीप एक्स्ट्रा कवर पर जो फीडर थे उन्हें 20 गज के दायरे के अंदर तैनात किया गया। उनके निगदित समय समाप्त होने के कारण इस बार बेहतर गेंद थी इस वक्त। Absolutely good one this time, just wanted to play that one square of the wicket, not succeeded and collected by wicket keeper behind the stumps and there is no possibility of any run. गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, सुस्तान दाहिना तो ऊपर विकेट, ये गेंद लेग कटर बेहतर, एब्सोल्युटली चेंज ऑफ पेस, धीमी गति की गेंद परिवर्तन के तौर पर और ओवर नंबर 6 की समाप्ति हो चुकी है। 6 gone, 49 for 7 except they lost their 7 wicket. Deadly Boys Kankanadi looking in a good situation now. Next match, one more big match is now coming up. Young Friends Urwa will take over NM Mangalore in the next match and because of that I request once again all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. So what a fantastic tournament is now progressing here in the name of Souhardha Trophy 2023 day night cricket tournament. और जहाँ तक सवाल है इस क्रिकेट श्रृंखला का, तो आज सुबह भव्य उद्घाटन समारोह के बाद यह श्रृंखला यहाँ पर शुरू हुई और इस श्रृंखला का पहला मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ दोनों बेहतर टीम
इस वक्त भिड़ते हुए रेड विंग्स कुंजत बैल और डेडली बॉयज कंकनाडी। सुसज्जित टीम है दोनों भी। और इस बीच ये गेंद टॉप एज मौका और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में टॉप एज पर गेंद टकराई थी और शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर ने एक बेहतर कैच आगे की ओर दौड़ कर आते हुए लिया और इसी के साथ 8वां विकेट गिर चुका है। 5 गेंदें अब बाकी उनकी बारे में। जस्ट 5 बॉल्स नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। और धूप की तीव्रता इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहां पर बढ़ती हुई, कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा 31 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान कल दाखिल हो चुका है मंगलूर का। और निस्संदेह ह्यूमिडिटी जिसे कहते हैं, तापमान यहाँ पर बढ़ता नजर आता हुआ और इस धूप की तीव्रता का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए। मैदान पर कुछ ज्यादा दर्शक तो नहीं, लेकिन हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि जैसे जैसा वक्त गुजरता जाएगा दर्शकों की संख्या में भी वृद्धि होती जाएगी। दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला लॉन्ग ऑफ पर और गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर लपक ली गई है। काफी ऊंचा स्ट्रोक था लेकिन गेंद में इतना पर्याप्त दम नहीं, स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके। और इसी के साथ 9वां विकेट गिर चुका। 49 for 9 नाउ। और बल्लेबाज इस वक्त इम्तियाज आउट होकर पवेलियन वापस लौटते हुए। इम्तियाज की पारी की समाप्ति हो चुकी है। सिर्फ 4 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में। 4 बॉल्स नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। तो 2 गेंदों पर 2 विकेट डेरिल यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। हैट्रिक का मौका और अंतिम विकेट इस वक्त मैदान पर डेडली बॉयज कंकनाडी का। 4 गेंदें बाकी उनकी पारी में। 4 बॉल्स रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, डेरिल अपनी हैट्रिक गेंद लेकर तैयार। नंबर 11 बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए। ये गेंद इस बार चिप किया, हैट्रिक कंप्लीट। ही ड्रॉप दैट वन, ही ड्रॉप दैट वन। और हैट्रिक पूर्ण होते होते इस वक्त बच चुका है। तो यहां पर मुश्किल सा मौका जरूर मेरे ख्याल से किशोर जो फील्डर थे मिड ऑफ पर जीतोड़ कोशिश जरूर की, बेहतरीन प्रयत्न जरूर किया, लेकिन गेंद उनके सिर के बाहर, उनके हाथों पर टकरा कर सिर के ऊपर से निकल चुकी है। 1 रन प्राप्त कर चुका। 50 comes up for Deadly Boys कंकनाडी। 50 for the loss of 9 wickets. 3 balls now left in their innings। और गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिना तो बढ़ता विकेट, रिवर्स शॉट इस बार द बॉल पास्ड बिटवीन द बैट्समैन्स लेग्स एंड स्टक टू द स्टंप्स। द इनिंग्स ऑफ that's it. The innings is up for Deadly Boys Kankanadi, and they were bowled out for exactly 50 runs before their 2 deliveries of their stipulated quota. That means in 6.4 overs, and now they set a target of 51 for Red Wings Kunjat Bail. 51 runs Red Wings Kunjat Bail have to score in their stipulated 7 overs with a required run rate of 7.28 runs per over. They have to score for victory. And let's see, can they reach the target or not? With the help of 10 wickets, they have to score for victory. The present equation sure for them. 51 the target in 7 overs for Red Wings Kankanadi, and their inning starts with Richard shot while. और तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटी सी ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब रेड विंग्स कुंजत बैल की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू।
Thank you very much, Gopi. So 51 is going to be a target for team Red Wings Kunjat Bail. It's going to be a fantastic the match because even Red Wings Kunjat Bail has got some good batting department. But I think the batsmen of Red Wings, batsmen of Deadly Boys Kankanadi, they did the job. They did the job, especially the innings of Samshid been outstanding. 16 runs he scored, highest individual score, and afterwards Giri scored quick fired 14 runs, and because of their contribution in the top in the order, batting order, they got 50 runs, exactly 50 runs, and decided target of 51 to win this match. So opening batters there came into middle for Kunjat Bail, left and right combination. Tanzim, the striker, Kishore, the very talented and experienced campaigner in on-strikers end, and captain of the side, Imtiaz, starts the proceedings. Starts with a excellent delivery, which is outside the line of off-stamp, and Tanzim wanted to sweep that one and missed it completely because the line is so difficult to sweep the ball. He wanted to drag the ball from outside the line of off-stamp and missed it completely. Then backstop fielder fields the ball back to bowler. Imtiaz again, right arm over wicket balls. This time Tanzim went for the drive, didn't got enough timing in that stroke, just got a single for that. Before that, back to point fielder will go in to field the ball, and one on the board. Ali, ದಯಮಾಡಿ NM ಟಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಹಾಗೂ NM ಟಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು. This time serve that one. Kishore going to open the account with the single as a typical sweep shot there from Kishore. He loves to play that strokes sweep shot, and he picked up a single and he's up the mark, 2 without loss of any wicket in the over number. First is in progress. 51 is the target, and needed some good start from the beginning itself here for Red Wings Kunjat Bail. This time Tanzim, oh my goodness, he wanted a single there. Little bit yes and no between Kishore and Tanzim. Ball is, which is not too far away from the wicket keeper, isn't it? Tanzim wanted to play that by playing that horizontal bat, but he couldn't manage to get the ball into his bat. Missed it completely from the bat, hitting his leg, but he wanted to run, and where there is no run at all. Imtiaz, very good start there from Imtiaz. Right arm over the wicket balls to Tanzim. Tanzim wanted to drive the ball straight to the hands of fielder. Chance of run out. Kishore have to hurry. Kishore have to hurry to the strikers, and now umpire Roland Pinto is referring for the third umpire to get the decision of run out. Looks like Kishore might be struggling to reach his home, and body language of the fielding team is doesn't look like it's going to be there. Very confident enough. Even Kishore has also has got a little bit doubt in his mind, but we want to see that how the third umpire will go into think after getting some angles from technicians of Bedra Media. Will go into provide whether the batsman Kishore is safe or not. Out is the call from umpire. So Kishore finding himself short of his crease. And Kishore is quite disappointment end for him. The good work by the fielder, and even a very good glove work from the wicketkeeper behind the stump. Quickly done, so that Kishore finding himself short of his crease.
2 for the loss of 1 wicket. So new batsman in is Santosh. So new batsman in is Santosh walking towards the middle, experienced campaigner. Santosh Kodakal, of course, so many Santosh in Underarm cricket. All are great players. Santosh, if you start with the great players, the legend player, Santosh of Mangalore cricketers, one of the legendary player. The Santosh of Young Friends Urwa is one more legend player, one of the absolutely legend player, no doubt at all. Got a fantastic career. Then Santosh Bantwal is one more the present great cricketer. So all we can say that Santosh, the name itself, they are a very good performer. 2 for the loss of 1 wicket. Here is again first ball. Oh my goodness, ball is just a little bit. The ball is missing the leg stump. I don't know. That ball is very far from that the leg stump. Absolutely fantastic stuff there from Imtiaz. First over completed. Red Wings Kunjatpal has got a shackling start, just like what they got. The comparison between these two teams after completion of 1 hour, that's not a too much difference, because even Kankanadi, Deadly Kankanadi also got a shackling start in the first over. They lost 2 wickets for 2 runs, and here is Kunjatpal. They lost 1 wicket for 2 runs. The difference is only the 1 wicket, but in the second over, I think the man who really changing the game, the Giri, he picked up of 3 boundaries after the bowling of Daryl. That might be the turning point of the game. NM Cricketers Mangalore ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ NM ಜೆಪ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. Shamshid, left arm bowler, round the wicket, to top edge, opportunity for the oh my goodness, oh, total misjudgment. Mid-wicket fielder, mid-on fielder thought it's catch. Mid-wicket fielder Taif thought it is a catch of him. And that is a total misunderstanding between Taif and Latif, and catch has been dropped. And it is definitely going to be a huge wicket is missed out by Deadly Boys Kankanadi. Shamshid. Left arm this time, it's going to be a chance. One more opportunity created, and Santosh departs, looking for the lofted drive over the cover point region, but he didn't got enough bat onto that. Mistimed cricketing stroke, lofted stroke. Huge wicket is back into pavilion of Red Wings Kunjatpal. Asghar, the fieldsman, down at extra cover, making no mistake at all. And the wicket number 2 is back into pavilion. There's a similar condition out here for Deadly Boys Kankanadi, what they got in the first over. And the same condition continues here for Red Wings Kunjatpal. They're looking in a deep trouble. 3 for the loss of 2 wickets. So new batsman in. Ashok, one more very talented and experienced campaigner. Ashok, a very good cricketer, and he will go into face Shamshid. He's got a wicket here. He's a little bit unlucky. One catch has been dropped in the mid wicket, but extra cover fielder, very next ball, he takes the catch. Lovely improvisation, a good piece of fielding there by the fielder, and just going back and not really settling for a boundary for Ashok there. Absolutely good improvisation there from Ashok. Unfortunately, the fielder quickly moved towards his right to fields the ball,
And he has to settle for the single. 4 for the loss of 2 wickets. Shamshid again bowling from the BMR end. This time, lovely shot. This is a Tanzim for you. 1 bounce into the fence for 4 runs. I've already mentioned when he's got a life, he's such a danger batsman for any opposition. And he just got that one right from the middle of the bat. And never looks like it's going to be an easy stroke to play in the book. It's a slog shape shot, but played like cutting the wood in the axe, just like that ball is played by Tanzim quite beautifully down to deep backward square leg for boundary. 8 for the loss of 2 wickets. Improvisation down to square leg region. Protection has been given. Coming back for the second. In comes the throw. Excellent running between the wicket there from Tanzim. Great quality running between the wicket. Putting some pressure on to the outfield. After completing the first run, he is charging for the second run. And scoreboard now moves on to 10 for the loss of 2 wickets. Shamshid again back to his bowling mark. A right arm over the wicket to the left right-handed batsman Tanzim. Left arm. Bowls beautifully bowled. Perfect delivery to finish the over. Shamshid completes his first over. After completion of over number 2, searching for the right track, chasing 51 to win this match. Red Wings Kunjat Bile still there, has got a deficit of required run rate. 10 for the loss of 2 wicket. Another 41 required from 5 overs. So third over going to start from the commentary box and no change in bowling. Captain of Deadly Boys Kankanadi, Imtiaz will going to continue, who starts very well with the fantastic first over, 2 runs and a wicket. Now he will going to continue from the commentary box and right arm over the wicket. Nicely driven down to deep long off region by Ashok. And they're looking for second, but no chance at all for the second. This time improvisation, nicely down to deep third man region for a single. With that single, scoreboard moves on to 13 for the loss of 2 wicket. These 2 batsmen, and slowly they try to get some partnership, try to adapt to the condition of the game. And the Tanzim and Ashok is very good at 2 very good players. One is experienced, one is a talented player. They can win the match for Red Wings if they continues the batting for just till 5 overs. So one more single has been taken there by Ashok. Quick single. And with that quick single, scoreboard moves on to 13 for the loss of 2 wicket. Red Wings Kunjat Bile needed some partnership. Imtiaz bowling away from us. Right arm over the wicket, improvisation, but protection has been given for that stroke down to square leg region for a single. With that single, scoreboard moves on to 14 for the loss of 2 wicket. Here in over number 3rd is in progress. Again, Imtiaz bowling right arm over the wicket. Balls this time, appeal for leg before wicket. Of course, the ball just going down the leg stump. Right call from umpire Mohan Ayadi, rightly so, because Imtiaz little bit bowled wide of the crease. The angle what the ball has got, of course, ball pitched in a line, but Imtiaz bowling off cutter, so that ball is need to travel a little bit after ball is hitting a front foot. That ball just going down the leg stump, and umpire rightly so, Mohan Ayadi not interested. 15 for the loss of 2 wicket. Improvisation. But not more than a single for Tanzim. With that single, scoreboard moves on to 16 for the loss of 2 wicket. 3 overs completed. After completion of 3 overs, searching for the right track.
It's 16 for the loss of 2 wickets. Still there a long way to go. And wait and see which bowler going to start the pressure over. And a new bowler has to be introduced. Looks like it's going to be a Sinan, the jersey number 11. And not Sinan. And I think today is the birthday boy. The Sinan is a birthday boy for Dead Boys Kankanadi. He's celebrating his birthday. So on behalf of all cricket lovers, wishing Sinan a very, very happy birthday. And Sinan is a birthday boy who is standing in the deep long on region, a very talented player. And on behalf of organizers, on behalf of all cricket lovers, on behalf of all officials of this prestigious cricket tournament, would like to wishing him a very happy birthday. Sinan is standing on deep long on. Nizam to continue from the far end. Right arm over the wicket, lofted that one. What a shot! What a great on! It's going to be a mighty blow from Tanzim. What a great shot that one! Absolutely high and handsome. You can't get better than this, and one can't say that you cannot judge the size of the player. The talent is different. Of course, he's a little master, but he's got a lot of talent as far as the timing the ball is concerned. Nicely executed down to square leg region. And coming back for the second. What a running between the wicket. Fantastic. The feature of this partnership is a running between the wicket. The feature of this partnership is a running between the wicket between these two, especially the Tanzim. Even though ball, which is a ball in the hand of the fielder, but still is judging that run quite brilliantly. 24 for the loss of 2 wickets. Giri again. Bows to Tanzim, improvising nicely, running hard, but this time they will going to get a single for that, not more than that. Oh, going for the second. And it's the suicider. It's unnecessary, I will say. The smartness is a different, but too smart is a total different, isn't it? That's a big difference between confidence and overconfidence. This is the result of overconfidence, isn't it? No chance at all for the second run. After getting such a good position in the match, after you are settled down in the middle, throwing the wickets like that, it's absolutely disaster dismissal for any player, any batsman. Looking so good in the middle, tried to steal the second run, and he's back into pavilion. It's 25 for the loss of 3 wickets. Still 26 more runs required for the victory. So Tanzim back into pavilion, unnecessary. They tried to steal the second run. Wicketkeeper behind the stump did a great job to targeting Tanzim's wicket. One who looks so dangerous. After scoring 20 valuable runs and just 14 deliveries back into pavilion. This time single-handed stroke there from the new batsman. Picked up a single, jersey number 27. Sunil is off the mark. So 26 for the loss of 3 wickets. Sunil, who represent for Friends Kuttar, usually. Ashok improvising that one down to deep back point region. A little bit fumble from the fielder. No question of second run, just a single there. So 27 for the loss of 3 wickets. Equal battle is on. Equal battle is on. Over number 4 is in progress. Kunjat Bhai still they can feel that they can win the match if they bat well. Giri again. A very interesting kind of cricketing stroke there from Sunil. He wanted to play the reverse shape, but seeing the line is so difficult to play that one. Just like a left-hand batsman tapping the ball down to backward point. He picked up a single then. A good over actually for both the teams as far as wicket taking is concerned. In that over, Tanzim's wicket is back into pavilion. At the same time, Kunjat Bhai has got 12 runs in that particular over. So 4 gone, it's 28 for the loss of 3 wickets, 3 overs remaining. And in that 18 balls, they have to get another 23 runs to win this match. The match is evenly poised. It's going to be anybody's game. Bowling change, Taif brought into attack. And here is a commentary
Also changing here in our commentary box. It's over to Gopi. Thank you. धन्यवाद सतीश। सो 23 रिक्वायर्ड इन 18 डिलीवरीज। स्टिल द मैच इज इन बैलेंस। और जहां तक सवाल है इस वक्त स्ट्राइक का, तो किशोर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। पांचवा ओवर शुरू होता हुआ लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर की ओर निकलती हुई और काफी बाहर के आना पड़ेगा। वाइड का इशारा। 1+1 2 रन्स एडेड टू द टोटल एंड विद दैट कपल ऑफ रन्स द स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 30 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। तो इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद बैकफुट पर गई। गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में गेंद पहुंची। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 31 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तो अगली गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट तैफ गेंदबाजी इस वक्त करते हुए और किशोर सामना करने के लिए तैयार। तैफ की गेंदों का दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को स्वीप करना चाहता लेकिन गेंद पहुंची थोड़ी सी सीधे दिशा में स्लिम मिड ऑन पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 21 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 2+ ओवर्स। ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಹಾಗೂ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So 21 required and 2 overs to go after this one. In fact, it's 16 balls in overall calculation needed. 19 more runs they have to score for victory. और गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, not quite mid wicket in fact, down to a gully area. He's got a single for that and with that single run the scoreboard moving up to 33 for the loss of 3 wicket. 18 runs more now they have to score for victory. And 15 balls to go in the innings और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए तैफ दाहिने हाथ राउंड द विकेट। किशोर सामना करने के लिए इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को इस वक्त खेल दिया खूबसूरती के साथ बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 34 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 34 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 17 रन टू गेट एंड 14 बॉल्स टू गो इन द इनिंग्स। और इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए तैफ दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। सनील इस वक्त सामना करते हुए ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर नहीं और सही गेंद घोषित। डॉट गेंदों की सख्त जरूरत इस वक्त डेडली बॉयज कंकनाडी को यहाँ पर मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए। और जहाँ तक सवाल है रेड विंग्स कुंजत बेल का, तो रन्स इस वक्त चाहिए हर गेंद पर उन्हें इस मैच में अपनी वापसी करने के लिए। दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद सनील के लिए रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन लेकिन प्रोटेक्शन मौजूद वहां पर डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर। नॉट मोर देन अ सिंगल टू एंड द ओवर। 35 for 3, 16 required, 12 balls to go. And just talking about the next match, one more big match is now coming up. Young friends Urwa will take over and Manglore in the next match, and because of that I request the captains of these two teams to please report to the stage immediately for toss procedure. So 16 रिक्वायर्ड ऑफ 12 डिलीवरीज। और इस वक्त बातचीत के बाद देखते हैं गेंदबाजी किसको सौंपी जाएगी। और कुल मिलाकर दर्शकों की तादाद देखिए, इस वक्त दर्शक मैदान के चारों ओर धीरे धीरे जमा होते हुए और जमा होनी भी चाहिए क्योंकि एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई सौहार्दा ट्रॉफी 2023 के नाम पर डे नाइट क्रिकेट श्रृंखला। और इस मैच के बाद जो मैच खेला जाएगा निस्संदेह ना उस मैच को देखने के लिए ना सिर्फ मंगलूर में बल्कि देश विदेशों में भी कई लोग सैकड़ों लोग यहाँ पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हुए उर्वा क्रिकेट मैदान पर यूट्यूब पर लाइव देखने के लिए। तो एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट बेद्रा मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है जनाब इरफान इनके सारथ्य में। और इस वक्त नया ओवर यहां पर प्रारंभ होता है। मैच एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है। 12 गेंदे 16 रन ऑफ स्टंप से बाहर। गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, रन ऑन स्ट्राइक, बल्लेबाज काफी आगे निकला है। रन शायद मिल सकता था अगर बल्लेबाज दौड़ते स्ट्राइक रन के, लेकिन अंतिम क्षण में उन्होंने रन लेना मुनासिब नहीं समझा। सही गेंद घोषित। 11 गेंदे बाकी 16 रन चाहिए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार।
अशोक। और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज लतीफ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को इस वक्त स्कूप किया है स्क्वायर ऑफ द विकेट कवर पॉइंट पर। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकल रहे थे, छोड़ते तो शायद वाइड हो सकता था, लेकिन अंतिम क्षण में उन्होंने अपना बल्ला अड़ाया था, तो यहां पर 2 रन बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं। स्क्वायर ऑफ द विकेट डीप कवर पॉइंट पर गेंद को फील्ड कर लिया गया था। 2 रनों के साथ 37 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 10 गेंदें बाकी, 14 रन चाहिए। लास्ट कॉल फॉर द टॉस for the captains of Young Friends and NM, please to be reported here. And now once again here he comes. अगली गेंद के लिए तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार स्कोप किया इनटू द गैप एज वेल। पीछा करते हुए इस वक्त फील्डर, 2 रन मिलेंगे यहाँ पर, और इन 2 रनों के साथ कुछ हद तक समीकरण आसान होता हुआ। अब 12 रन चाहिए, गेंदें बाकी हैं 9 गेंद 12 रन। तो यहाँ पर हमें आवाज सुनाई दे रही है कमेंटेटर बॉक्स के नीचे, प्लेयर्स गैलरी में, दोनों टीमों के समर्थक सपोर्टर्स अपने टीम का यहाँ पर जोश उत्साह मनोबल बढ़ाते हुए तालियों के साथ, सीटियों के साथ। और जहां तक इस मैच का सवाल है, मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है, बराबर का टक्कर यहाँ पर जारी है। और गेंदबाज लतीफ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। अगली गेंद लेकर ये गेंद रिवर्स शॉट टॉप एज, एक बार फिर से फील्डर गेंद तक पहुंच चुके हैं यहाँ पर, कैच को न पकड़ने में सफल, बेहतरीन कैच। और इस कैच की बदौलत यहाँ पर विकेट गिर चुका है। पीछे की ओर दौड़ते हुए कैच लपकना उतना आसान नहीं है, और यहाँ पर पीछे की ओर दौड़ते हुए गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखी, आखिरकार कैच को बेहतरीन तरीके से बाखूबी यहाँ पर लपका बैकवर्ड थर्ड मैन पर। अगर ये कैच को नहीं लपकते तो 2 रन शायद मिल सकते थे बल्लेबाज को, लेकिन न सिर्फ उन्होंने 2 रन बचाया बल्कि कैच भी लपका शफीक का, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। 39 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, 12 टू गेट फ्रॉम 8 बॉल्स। अशोक की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है, और नए बल्लेबाज जो कि नंबर 27 की जर्सी पहने हुए इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए अश्विन, और वो इस वक्त सामना करेंगे लतीफ की गेंदों का। तो निस्संदेह यहाँ पर जहाँ तक सवाल है रेड विंग्स कुंजत बेल का, तो अगर उन्हें विजय दर्ज करना है तो बचे हुए गेंद और बनाने हुए रन्स के बीच के 4 के फासले को मिटाना है। और जहाँ तक सवाल है डेडली बॉयज कंकराड़ी का, तो उनको अगर विजय दर्ज करना है तो इस 4 के फासले को उन्हें और बढ़ाना होगा बचे हुए गेंद और बनाने हुए रन्स के बीच में। और गेंदबाज लतीफ इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अश्विन के लिए ये गेंद, इस बार गेंद को खेलना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, चूके परफेक्ट ऑफ कटर, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 7 गेंदें 12 रन चाहिए विजय के लिए। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इस बार उछालना चाहा, हवे में फॉलो थ्रू में यहां पर कैच को लपका गया, और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है अश्विन का। बेहतरीन ओवर समाप्त हो चुका है लतीफ का, सिर्फ 4 रन उन्होंने प्रदान किए इस ओवर में, और 2 विकेट प्राप्त करने में भी सफल। और ऐसा कहना पड़ेगा इस ओवर की समाप्ति के बाद डेडली कंकनाडी का तख्ता यहां पर भारी हो चुका है। अब रेड विंग्स कुंजत बेल को अंतिम ओवर में बनाने हैं 12 रन, जबकि 4 विकेटें सुरक्षित हैं। So last over remaining and 12 runs to get for Red Wings कुंजत बैल, और निज़ाम का आगमन यहाँ पर होता हुआ, और इस वक्त वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद, और गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए निज़ाम इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए अमन का आगमन यहाँ पर हो चुका है, और इस वक्त बाएं हाथ के बल्लेबाज सनील इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 12 टू गेट फ्रॉम 60 लेवर इस फर्स्ट बॉल, पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, लेग स्टंप पर आती विकेट कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकली, रन के लिए दौड़े, ओवर थ्रो, लेकिन वहां पर बैकअप होता हुआ एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। आखिरकार दोनों बल्लेबाज 1 रन के साथ संतुष्ट। 11
रन चाहिए, गेंदे बाकी हैं 5। तो अब रन्स 11 बनाने हैं, गेंदे बाकी हैं सिर्फ 5 और गेंदबाज इस वक्त निजाम फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए सामना इस वक्त करने के लिए तैयार अमन, और कम से कम एक चौके या छक्के की जरूरत इस वक्त रेड विंग्स कुंजत बेल को वापसी करने के लिए। दाहिना तो ऊपर विकेट, ये गेंद इस बार उछालना चाहा, बेहतर गेंद थी, गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर, सीमा रेखा की ओर बढ़ती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर नहीं, अंदर की ओर रोकी गई है। इस बीच बल्लेबाज के पास मौका है यहां पर 3 रन प्राप्त करने का। बेहतरीन वहां पर शायद मिसफील्ड हुआ था, और जब तक गेंद बैकअप हो डीप मिड विकेट पर अपने पैर के जरिए गेंद को रोका उन्होंने सीमा रेखा के अंदर, और इस बीच 3 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका है। अब जहां तक सवाल है 8 रन चाहिए, गेंदे बाकी हैं कुल मिलाकर 4 गेंदे 8 रन, 7 फॉर टाई 8 फॉर विन। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, निजाम बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए सनील, और अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट। इस बीच ये गेंद बेहतर गेंद थी, और गेंद इस वक्त पहुंचे सीधे विकेट कीप, और यहां पर ये विकेट गिर चुका है। तो यहां पर विकेट गिर चुका है स्टंप आउट के रूप में, एक विकेट गिर चुका है। एंड नाउ इट्स 8 नीडेड एंड द बॉल इज रिमेनिंग जस्ट a 3. So what a fantastic match is now progressing here. The equal battle is now continuing here in the inaugural match of a fantastic tournament in the name of Souhardha Trophy 2023 in this beautiful UCG Urwa cricket ground, the Lords of Underarm cricket. And now 8 required for Red Wings Kunjat Pail in remaining 3 balls. 7 for tie, 8 for win, and the number 8 batsman is now comes out to the middle. डेरिल का आगमन यहाँ पर होता हुआ, और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा रेड विंग्स कुंजत बैल को इस वक्त एक चौके या छक्के की सख्त जरूरत इस मैच में वापसी करने के लिए। पलड़ा इस वक्त काफी हद तक भारी लगता वन डेडली बॉयज कंकरानी का। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए निजाम, और गेंदबाजी इस वक्त करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज डेरिल के लिए, और डेरिल इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट, गेंदबाजी करते हुए अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद थी, गेंद को इस वक्त खेलने में चूके लगभग पैर के अति निकट गेंद आई थी, 1 रन मात्र मिला, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 44 रन पर। 44 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, 7 टू गेट फ्रॉम 2 ಡೆಲಿವರೀಸ್. NM ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು. So 7 to get, और इस बार अंपायर ने इशारा किया है कि निगदित समय स्टिपुलेटेड टाइम समाप्त हो चुका, तो एक फील्डर को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात किया जाएगा. 1 फील्डर कम इनसाइड द 20-yard सर्कल एज फार एज द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस टूर्नामेंट इज कंसर्न्ड फॉर स्लो ओवर रेट. और जहां तक सवाल है इस वक्त 2 गेंदे 7 रन चाहिए, 7 टू गेट फ्रॉम 2 balls, 6 फॉर टाई 7 फॉर विन. और इस बीच गेंदबाज निजाम तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट, गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस वक्त गेंद को छोड़ा वाइड इस वक्त, अब चाहिए 6 रन, गेंदे बाकी हैं 2. यंग फ्रेंड्स कैप्टन प्लीज टू बी रिपोर्टेड हियर फॉर टॉस. और जहां तक सवाल है अब छक्के की जरूरत है, गेंदे बाकी हैं 2. और इस बीच गेंदबाज निजाम तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट, इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए दर्शक काफी दिलचस्पी के साथ इस मैच का मुआयना करते हुए ये गेंद लेकर तैयार, गेंद को इस वक्त उछालना चाहा, गेंद इस वक्त पहुंची फॉरवर्ड शॉट लेग पर, रन्स नहीं मिलेंगे, और यहां पर अंतिम गेंद पर अब चाहिए छक्का. 6 रनों की जरूरत, अंतिम गेंद बाकी. और यहां पर निजाम का जहां तक सवाल है इस ओवर में अब तक वो बेहतरीन गेंदबाजी कर चुके हैं, 5 गेंदों में सिर्फ 6 रन प्रदान कर चुके हैं, और एक बेहतर गेंद उन्हें इस वक्त करनी है अपनी टीम को विजय दिलाने के लिए. और रेड विंग्स कुंजत बेल को चाहिए अंतिम गेंद में छक्का विजय के लिए. द लास्ट बॉल, द मैच डिसाइडिंग बॉल इज नाउ कमिंग अप. हियर ही बॉल्स लॉफ्टेड मिसेस, दैट्स इट. 5 runs victory, 5 runs thrilling victory for Deadly Boys Kankanadi against Red Wings Kunjat Bail, and with that 5 runs thrilling victory they are through to the next round of this tournament. So fantastic opening match for Souhardha Trophy 2023 is now came to an end, and finally Deadly Boys Kankanadi registered a 5 runs thrilling victory against Red Wings Kunjat Bail. Against Red Wings Kunjat Bail, they are through to the next round of this tournament. Next match, the big match of the tournament
is now coming up. Young friends Urwa will take over NM Mangalore, and that match starts with just shot while till then we're taking a short break. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यंग फ्रेंड्स उर्वा और NM मैंगलोर की मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद.
Thank you very much, and welcome back for the one of the best match of this prestigious Souhardha Trophy 2023. NM Cricketers Mangalore will go in to take young friends Urwa and arch rivals, and especially when coming to the UCG cricket ground, the two teams are definitely going to battle hard for the victory, and I hope the battle will going to be very healthy, and it's going to be a fantastic match for the cricket lovers, and hope both the teams definitely going to battle hard with the true spirit of cricket, and winning and losing is a part of cricket, but eventually the cricket will go into winner. And wait and see. After winning the toss, young friends were captain elected to field first, and Shagir will go into start the proceedings, and Asif will be the striker. First ball, it's a chip that one. Looks like quite deliberately Asif, seeing that as a mid-on fielder is in the deep, so that he's just checking the stroke in the last moment, because that ball is the incoming delivery, sharp incoming delivery, and Asif he got his first run for NM Cricketers Mangalore, and he is also up open the account with that single. One without loss of any wicket. Azim is one more very talented young cricketer facing Shagir. Going for the off drive. Wicket keeper behind the stump fails to collect the ball. Now umpire Roland Pinto having some word with the bowler that it might be. Umpire have a clarification asking for the third umpire for the white, and that's the biggest problem for umpires is that whenever the bowler is coming right in front of the protected zone, and it's going to be difficult for umpire to see the line of the ball, so that umpire straight away asking for the third umpire to get the decision whether the ball is inside the line or outside the line. And sometimes it's happening in cricket, especially very difficult whenever the bowler coming right in front of umpire. That's always called it's a protected zone. And in that protected zone, when the bowler is coming after a follow through, then it's difficult for umpire to judge. So a lot of discussion is going on here. Umpire along with the Santosh may be having some word about that decision. And umpire here is the third umpire, Mohan Iyadi, will going to get the best result of this delivery. So we are taking our own time. It's coming back to these two teams. Of course, in this particular season, NM Cricketers Mangalore have won 3 to 4 titles, maybe the 3 winners and 1 runner-up trophy. And even young friends who also, they also have got a very good run in this particular season, especially in the last real estate organized trophies, and in that particular real estate trophy, young friends who are surprised everyone, and they become the champions. And more than anything else, UFC organized the RRP Memorial Trophy, the one of the biggest achievement what young friends Urwa has got in this particular season. So altogether, both the teams has got in a great run, in the great track, and we are expecting some great battle between these two teams in this prestigious Souhardha Trophy 2023. So third umpire decision, it's a white from umpire Mohan Iyadi, saying that the ball is just going outside the line of that off stump, and rightly so, and 1 more run is added to total. So that means 2 on the board now. 2 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. For Azim, let me correction, there is a short fine leg, square leg, and one fielder is in front of square, one at short mid wicket. Santosh, deep long on is there, back point, short cover point, short mid off, and a deep wideish long off between extra cover and long off. So Shagir will go into ball away from us. Right arm over the wicket, balls. Wow, that's a big wide, absolutely big wide. The second warning has been given for the bowler, so wide call by umpire, and 1 run added to total. Scoreboard numbers on to 3 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. Now Shagir
I think it's the right way when you are fails to correct the mistakes. It's better you to ball, better you to change the angle, and he's just changing his angle. He's bowling round the wicket to avoid that wide about that line. This time lovely shot, up and over, down to deep extra cover boundary for 4 runs. Beautiful shot. This is Azim for you. I already mentioned when he came into middle, he's such a talented player, and just a little bit width is offered there by the bowler, and batsman got all the time in the world to got that one down to deep extra cover boundary for 4 runs. I'm not really understand the Shagir's the intention of keeping the fielder in the deep in the onside region. 2 fielder protection has been given in the onside region, but he's targeting the line outside the line of off stamp. That means he needs to pay the penalty for that. And perfect stroke for poor line bowled by Shagir. Again, bowler's back drive. Again, Azim wanted to post the ball in the negation, but it's not. This time, he's not playing as per the merit of the delivery because of just a little bit excitement. What is shown after that boundary, that ball is played back to bowler, and there is no chance. Lovely shot, beautiful everyone. Now looks to be one more boundary there. Runs are coming in the first over itself here for NM Cricketers Mangalore. Shagir once again not learning from the mistakes. That might be the problem that as he got warning from umpire when he was operating in the over the wicket, coming right in front of umpire, then he is changing his angle, which is not helpful for him. He is not feeling comfortable in that round the wicket, and the batsman capitalizing that opportunity to hitting 2 boundaries. Azim is looking so good. 11 on the board. Full toss again, driven. This time ball will definitely going to stop by one of the fielders. Santosh behind the ball, and just inside the boundary, and he able to catch the ball. But here is the batsman converting that one into 3 valuable runs, and with that 3 valuable runs, Koban Namozan to 14 on the board. Again, Shagir bowled a full toss delivery, juicy full toss. You can't do the mistakes when you play bowling in the power play overs. Shagir in the previous tournament, which is organized by the real estate groups, is looking so good in his bowling, but in this particular match is fails to control the flow of the runs because of that line. What is bowling is not that much of accurate. The strong breeze passing in the middle of the ground, and here is a Shagir bowls. This time top edge opportunity for oh my goodness, can you believe this? Ball is just rotating with the direction of the wind. Looks like it's going to be a comfortable catch for Basavanagudi, Altaf Basavanagudi, but the ball is just rotating in the air. Even one of the best fielder that at square leg Sandesh is also fails to take the catch, and ball is landed safely. Lucky escape, and Gopi straight away the 15 runs in 1 over. The pressure for young friends Urwa, because whenever the first over of the power play, the opposite team getting 15 runs means it's always going to be a good start for any team. And 15 runs, and most of the contribution there from Azim hit 2 boundaries, but it's not a good start for young friends Urwa. एग्जैक्टली सतीश, और जहाँ तक सवाल है शागिर का, तो पहले ओवर में 15 रन वो प्रदान कर चुके हैं, खासकर आजिम जिन्होंने 2 चौका पहले ओवर में झड़ा, और अंतिम गेंद पर हालांकि मौका जरूर था विकेट प्राप्त करने का, लेकिन नहीं मिला। तो यहाँ पर 15 रन एक बेहतर शुरुआत, और अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप ऑफ यंग फ्रेंड्स हुआ 15 रन आप पहले ओवर में बनाते हैं पावर प्ले में, तो बेहतर शुरुआत यहाँ पर कहलाएगी। तो यहाँ पर यंग फ्रेंड्स हुआ को अगर कम बैक करना है तो आने वाले ओवर्स में उन्हें किफ़ायती गेंदबाजी यहाँ पर करनी होगी, और लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या एनएम मैंगलोर के बल्लेबाज पहले ओवर में 15 रन बटोरने के बाद उन्हें इसका मौका देंगे उन पर हावी होने के लिए। तो इस वक्त 15 रन एनएम मैंगलोर की ओर से इट्स गोइंग टू बी अ परफेक्ट स्टार्ट फॉर देम। Absolutely, Gopi, no doubt at all. The perfect start, because 2 boundaries came from that over, but it's not a perfect start for young friends Urwa. That's why it's so important for young friends Urwa. In this particular over, second over of the power play, they need to restrict the flow of the runs if they wanted to back into this game, because NM Cricketers Mangalore, definitely they're going to capitalize the start what they got in the first over. And have a look at the crowd here. Absolutely jam-packed stadium. Again, nicely driven down to deep long on region for a single by Asif. Asif doing a right job. Of course, he's also aggressive cricketer, but seeing that his partner is more aggressive than him, his job is to pick the single and gives a strike as much as possible to
Azim. Azim back on strike now. Very good contest now. Arshad, left arm, slower one, beautifully balled. Wicketkeeper fails to collect the ball. Frustration for the bowler. Leg by call by umpire. That means it's a difficult opportunity for the wicketkeeper behind the stump. It's all happening in cricket, in the cricketing field sometime. The firework. The firework and from the closing fielders, especially the Santosh is more aggressive, who is standing at short mid off. You know exactly one chance which is missed out in the previous over. Then even Shagris didn't got a very good start from the ball. Quite understandable. The condition more difficult. And here is Arshad, the balls beautifully balled. Again, wicketkeeper fails to collect the ball. This is not a good to see. And wait for the umpire signal. It's a bye call by umpire. Now once again it's going to be a Rajesh Ubar have to get some firework from their teammates. And one more single, 18 on the board without loss of any wicket. And coming back to Arshad, yesterday there is a Kulai Premier League 2022 just finished yesterday. And he's become the man of the series in that KPL Kulai Premier League. Again driven but not quite getting that one from the middle of the bat, Azim. But there is a possibility of a single there. With that single, scored Namuzan to 19 on the board without loss of any wicket. Arshad has got a fantastic season. And from the bat, from the ball, even when he was standing behind the wicket, he's been outstanding throughout the season. And he bowling from the far end. Ball beautifully balled again. Wicket keeper behind the stump. This is what you call, Gopi, whenever you need to have some the good wicket keeper behind the stump, isn't it? And now have a look at that. Santosh is not happy with that one. Certainly, Gopi, it's always going to be frustration, isn't it? Because a bowler doing a lot of hard work. It's not so easy to defeat the bat of the batsmen like Asif as well as Azim. When bowler doing that much of effort, some kind of support which is required from behind the stumps. And 20 on the board without loss of any wicket. Arshad balls, bowler's back drive. Beautifully bowled there by Arshad in the Arshad forcing the batsman and to play that one back to bowler. So 20 without loss of any wicket. And Gopi, altogether it's electrifying atmosphere in the cricket ground, but not that much of electrifying atmosphere in commentary box. Here is a friendly atmosphere because my close friend Ganesh Pujari just is arrived here in the commentary box. He's a very good singer as well, master class singer, no doubt at all. And altogether we have Nandan Kulshekar, we have Jeevan Pereira, Lakshmi Narayan Achar, some senior citizens enjoying the game of cricket here. And altogether, Gopi, it's been a fantastic atmosphere. And even Vivek, and one known to be a fantastic bowler of a challenge bowler, and now is giving service as as umpire. Altogether, Gopi, this condition seems to be one of the most beautiful and friendly atmosphere in our commentary box. एग्जैक्टली सतीश, यहाँ पर बिल्कुल फ्रेंडली एटमॉस्फेयर छा चुका है और ऐसा कहना पड़ेगा अंडरआर्म क्रिकेट के महारथी जो कि यहाँ पर मौजूद कुछ ऑर्गेनाइजर्स, कुछ सपोर्टर्स, कुछ वेल विशर्स और ऐसा कहना पड़ेगा कुल मिलाकर एक त्योहार भरा माहौल यहाँ पर छा चुका है और छानी भी चाहिए क्योंकि इतनी बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला यहाँ पर प्रगति पर है सौहार्द ट्रॉफी 2023 के नाम पर। और ये सब जो अतिथि हैं हमारे साथ कमेंटेटर बॉक्स में मौजूद है इस श्रृंखला, इस टूर्नामेंट की शोभा को और यहाँ पर बढ़ाते हुए, और यहाँ पर एक बेहतरीन मैच खेला जाता हुआ हाई वोल्टेज मैच। Absolutely, Gopi. Santosh brought into attack. What a great player he's been. Outstanding. What a start there from Santosh. Again, wicketkeeper behind the stump, Gopi. Fails to collect the ball. And Asha saying that, you go, man, you go to my place. I will keep the wicket here. What are you doing there behind the wicket? Is that the statue? Just a statue behind the stump. So you need to collect the ball, man. And here is Santosh again. Right arm over the wicket bounce. Oh, fantastic leg cutter. This is a master class. This is a master class there from Santosh, isn't it? Where that is getting the turn and bounce is unbelievable, isn't it? That's why Santosh, as he got a 25 years of cricket career, he's been amazing and unbelievable. Here is Santosh again, right arm over the wicket, slashes and hard down to deep extra cover region for a single. With that single, let's go but Namozan to 21 on the board without loss of any wicket in the over number 3 in progress. And cricketers Mangalore, they really got a start. They laid the foundation through this very good talented players, Asif, Adur as well as Azim. Very, very
Slowly they're building a partnership. This time reverse strokes comes into play and he got the distance. What a fantastic cricketing stroke there from Azim. All talking about the big names like Atif, all talking about the big names like Asif Adur, but here is one more A in the pack that is called Azim for you. This has been outstanding cricketing stroke for you. What a shot, keep picking up the line and length so quickly. And a perfect stroke to play that one. This time good comeback here by Santosh. Played the ball that sharp incoming delivery, quicker one and faster one, and negotiated very well by Azim. Plays it down to short cover point region for a single. With that single, scoreboard moves on to 28 on the board without loss of any wicket. Santosh again. This time appeal for leg before wicket, but umpire says it's ball going to miss the leg stump, and rightly so. One more over completed. No problem whatsoever as far as NM Cricketers Mangalore is concerned. And excluding that 6 Gopi, it's a very good over, but one stroke changing the complexion of the all over, the effort is gone in vain. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर वो एक स्ट्रोक को अगर एक्सक्लूड करके देखा जाए तो संतोष ने बेहतरीन गेंदबाजी की है, लेकिन वो गेंद भी बेहतर था, नॉट रॉन्ग लाइन विद द बॉल, लेकिन अंतिम अक्षर में जो फुटवर्क था वो एक्सक्विजिट था और क्विकली ऑन टू द बॉल एट द लास्ट मोमेंट, गेंद को तिरछे बल्ले के साथ विद अ ट्विस्टेड बैट रिवर्स शॉट के जरिए एक्सक्विजिट फुटवर्क के साथ आजिम ने जो लगाया है निस्संदेह काबिले तारीफ है। और यहाँ पर उस छक्के की बदौलत यहाँ पर एनएम क्रिकेटर्स इस वक्त एक बेहतर स्थिति में नजर आता हुआ। 29 रन जोड़ चुका, हालांकि पहले ओवर में रन से बने थे 15, दूसरे ओवर में अरशद ने बेहतरीन गेंदबाजी की, 5 रन प्रदान किए, तीसरे ओवर में संतोष ने 9 रन प्रदान किए। 3 ओवर के बाद ओवरऑल ऐसा कहना पड़ेगा एनएम क्रिकेटर्स आर नाउ लुकिंग इन ए गुड सिचुएशन। Absolutely, Gopi, and more than NM Cricketers Mangalore is in a good situation. Azim is looking in a good condition, and looks like it's been today is a day for him. The way that he's batted has been unbelievable. He played some electrifying cricketing stroke and played some entertainment cricketing stroke, and he's witnessing some enterprising cricketing stroke throughout this his innings. 2 boundaries and 1 sixes in this innings. It's definitely going to be a fantastic knock which is played by Azim so far, and good stand given by Asif in other end. He's doing his right job, and again he's just rotating the strikes very well, getting the placement one to deep third man region before Altaf Basavanagudi from the short third man to run towards the deep third man region. Ample time for the batter to complete that couple of runs. 31 on the board. Absolutely perfect start here for NM Cricketers Mangalore in the first 3 overs. The 4th over is in progress, and Arshad Bajal will be the bowler from the far end. BMRN bowling right left arm balls. Did a beautifully bowled there by Arshad Bajal, but this time quite hardly Rajesh Ubar managed to collect the ball, and there is no question of any run. 31 without loss of any wicket in the over number 4th is in progress. Arshad again bowling left arm round the wicket pass umpire Arish Padil. This time a slower one, wicket keeper behind the stump. One more by, one more misses. Today is not really day which is not belong to Rajesh Ubar. Certainly I want to say that, because but sometimes difficult, Gopi, quite understandable, because Arshad is bowling a left arm spin. Googly, it's very difficult to find his turn. Sometimes he bowl a quicker one, sometimes he bowl a slower one. So it's not so easy. It's very easy for us to explain that wicketkeeper not making good job, but it's not easy to make the job. And here is again nicely driven down to deep extra coverage, and Santosh is there in the deep extra cover. Neat collection, good return to the hands of Rajesh. Maybe Santosh is giving some catching practice for Rajesh to get the ball to his hand. Maybe he's returned the ball, that one in the hands of Rajesh. So 33 without loss of any wicket in the over number 4 is in progress. All we can see that all 3 is out there in the scoreboard. 33 without loss of any wicket in the over number 4 is in progress. Going with a mighty shot, and this time looks like the batsman couldn't manage to get the ball right from the middle of the bat. And one more dotted delivery. Ashad looking so good as compared to the all overs. Shagir who bowled 1 hour, Santosh is bowled 1 hour. But compared to these 2 bowlers, I think Ashad is looking much better as far as restricting the runs is concerned. Bowler's back drive, caught and bowled, and is gone. So at last Arshad, he's got a very important breakthrough, and he just got the breakthrough, and 33 runs of partnership which is comes in. And Gopi, fantastic over. Arshad, I already mentioned, the man with the golden hand, and he's got a golden boy of
KPL season 5 yesterday, and certainly is the golden boy, Gopi, because in this particular season he's been outstanding and is unstoppable, not only from the bat but even from the bowling. Exactly, Satish. Absolutely fantastic piece of bowling spell under pressure. और खासकर बाकी के 2 ओवर में कुल मिलाकर अगर रन्स के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो 24 रन बाकी के 2 ओवर में बने हैं। और जहां तक सवाल है अरशद का, तो अरशद ने सिर्फ 2 ओवर में 9 रन प्रदान किए हैं। तो यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा, अरशद ने बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर का प्रदर्शन यहां पर दिया। और कल जो कि KPL में वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में वो उन्होंने खिताब अर्जित किया था, और उस फॉर्म को यहां पर बरकरार रखते हुए गेंदबाजी में वो बेहतरीन गेंदबाजी कर चुके हैं अंडर प्रेशर। और यहां पर देखना है कि 4 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन जो कि अब बन चुके हैं। 3 ओवर का खेल जो कि इस वक्त बाकी है, और देखते हैं इन 3 ओवर में किस तरह कमबैक कर पाते हैं यंग फ्रेंड्स उर्वा के गेंदबाज संतोष। ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद उछाला इस वक्त डीप मिड विकेट पर गेंद जाती भी, कोई फील्डर वहां पर नहीं। और जब तक काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद वाइड स्लॉन्ग ऑन के फील्डर गेंद तक पहुंचे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग एट द लास्ट मोमेंट, और गैप को इस वक्त चुना था बल्लेबाज ने, आजीम ने, और 2 रन इस बीच बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल। आजीम इस वक्त काफी खतरा बनते हुए यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए, दाहिना तो ओवर द विकेट, संतोष की गेंद लेग स्टंप पर स्ट्रेट अवे, द प्रेशर ऑन द बॉलर। इस वक्त लेग स्टंप से बाहर की ओर फेंकी थी, हालांकि तेज रफ्तार के साथ गेंद थी, एक्स्ट्रा क्विकर, लेकिन गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला, लेकिन टीम को जरूर मिला। और इस बीच गेंदबाज की ओर क्या फुल टॉस, जस्ट वांटेड टू पुल दैट वन, जस्ट चेंज ऑफ पेस फ्रॉम संतोष, और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद 1 रन बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं। और जहां तक आजिम का सवाल है, अपनी बेहतरीन फॉर्म को इस महीने में वो बरकरार रखते हुए 1 महीने के अंतर में 2 अर्धशतक वो जड़ चुके हैं। तो यहाँ पर गांधी मैदान कारकड़ा पर उन्होंने अर्धशतक लगाया था। ये बाहर लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलती हुई, वाइड का इशारा, चाहे तो गेंद को डिस्पैच कर सकते थे ऑन साइड की दिशा में, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद उनके पहुंच से बाहर, और वाइड का इशारा अंपायर का। 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर, दाहिना तो ओवर द विकेट, यह गेंद स्विंग किया इस वक्त खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, गेंद बेहतरीन तरीके से रोकी गई। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ फील्डिंग मेड बाय द बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर अल्ताफ बसवनागुडी वहां पर फील्डर थे। जैसे ही गेंद सीमा रेखा को पार करे, अंतिम प्रयत्न में उन्होंने गेंद को अंदर की ओर ढकेला, और दूसरे फील्डर ने गेंद को फील्ड करने के बाद इस वक्त लौटा दी यहां पर विकेट कीपर के हाथों में। बेहतरीन फील्डिंग, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 40 रनों पर। यह गेंद रिवर्स शॉट, इम्प्रोवाइजेशन, एब्सोल्युटली परफेक्ट, लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा दम नहीं। 1 रन मिलेगा, बेहतर फील्डिंग हर्षद का, और इस बीच 1 रन का इजाफा हो चुका है। 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और जहां तक सवाल है गेंद का, तो इस ओवर में अभी भी 2 गेंदें बाकी हैं, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त संतोष इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद अब एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, जस्ट चेंज ऑफ पेस, बोल्ड अ स्लोवर डिलीवरी बट स्ट्रेट अ लाइन, द बैट्समैन गॉन फॉर अ ब्लाइंड स्ट्रोक, नॉट सक्सीडेड, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एक बार फिर से संतोष गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिना तो ओवर द विकेट, लेकर गेंद स्विंग्स इट अवे एंड इट्स गॉन मिलियम, in fact the ball stuck to the roofs of the tree, and as far as the rules and regulations of this tournament is concerned, it's called a 6. Absolutely fantastic struck. आजीम के बल्ले से यह छक्का लग चुका है, और इस छक्के की बदौलत अब ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, NM cricketers are now looking in a commanding situation. Absolutely, Gopi. And in this particular over, I don't think Santosh is bowled well, because it's bowled so many short pitch deliveries. 2-3 times. One time I think he's missed out. Riaz missed out to swing the ball, but this time he's not missing the opportunity, golden opportunity. Altogether, Gopi, this is not a great effort, especially when you're playing against NM cricketers. Mangle, little margin for error. You can't do this mistake bowling the short pitch delivery to the caliber like what Riaz has got, what Azim has got. This is definitely going to be a Santosh over. Bowled by Santosh bowled the second over, which is not acceptable because of that short pitch delivery is bowled. Altogether, Gopi, NM cricketers Mangalore, rightly so, they're in a commanding position. They're looking towards a huge total. And coming back to the young friends who are playing 11, Gopi, they have some senior players as well, like Parvezis came into young friends who are playing 11. And one more field, the youngster Sandesh, who is standing at mid-off, is celebrating his birthday. He's a birthday boy, Sandesh. So on behalf of all cricket lovers, I would like to wish him a very happy birthday for Sandesh.
बिल्कुल सतीश, संदेश को जन्मदिन के बधाई देते हुए एक बार फिर से आगे की ओर बढ़ते हैं। छठा ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ इंप्रोवाइजेशन किया इस वक्त थर्ड मैन की दिशा में, दूसरे रन के लिए नहीं मिलेगा। थ्रो पहुंच चुका है यहाँ पर, बेहतर फील्डिंग वहां पर थर्ड मैन फील्डर करते हुए, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था सिर्फ एक रन प्राप्त करने का। और निस्संदेह सतीश, जैसा कि आपने कहा, कई नए चेहरे का इस वक्त यहाँ पर हम देख रहे हैं। संदेश इस वक्त मौजूद, जबकि एक वक्त के जाने माने खिलाड़ी यंग फ्रेंड्स के परवेज की वापसी यहाँ पर हो चुकी है। और इस बीच गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, यह गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, दृष्टि हसन जो कि गेंदबाज है, गेंद को इस वक्त वाइड स्विंग करना चाहता चूंकि, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 29 आजिम बैटिंग ऑन 29, 29 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर वो बल्लेबाजी करते इस वक्त 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से। और एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दृष्टि हसन दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद आजिम के लिए, गेंद को उछाला, इनफील्ड क्लियर करते हुए गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑफ सीमा लगा जवाब 4 रनों के लिए। आजिम इस वक्त छाते हुए मैदान पर, और इस चौके के साथ द 50 कम्स अप फॉर एनएम मैंगलोर। 33, Azim is batting on 33. What a fantastic batting performance continuing here from him. और निस्संदेह इस वक्त गेंदबाज अंडर प्रेशर नजर आते हुए, लॉन्ग ऑफ के फील्डर को आगे बुला लिया था मिड ऑफ पर, और इसे देखते हुए गेंद को इनफील्ड क्लियर करते हुए दिया आजिम ने 4 रनों के लिए। एक बार फिर से गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद, दृष्टि हसन ने, यह गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, राजेश चूके इस बीच 1 रन का इजाफा हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 53 रनों पर। 53 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। व्हाट अ फैंटास्टिक प्रोग्रेस हियर फॉर एनएम मैंगलोर। कम बैक इस वक्त करना है एनएम यंग फ्रेंड्स उर्वा को, तो खासकर आजिम का विकेट इस वक्त उन्हें प्राप्त करना होगा। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दृष्टि हसन, रियाज जो कि सामना करते हुए इस वक्त दृष्टि हसन की ओवर की अगली गेंद का, इस बार अजीब और गरीब ढंग से खेला, गेंद हवा में, फील्डर गेंद को लपकते हुए, और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। पहले सोचा कि गेंद को इस वक्त रिवर्स शॉट खेला जाता है, अंतिम क्षण में अजीब ढंग से गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, गेंद उनके टॉप एज पर टकराई, और राजेश अपने पीछे की ओर आकर इस कैच को लपकने में सफल, और 53 रनों पर दूसरा विकेट गिर चुका है। रियाज की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है, 4 रन उन्होंने बनाए, और जहां तक सवाल है 53 रन बच चुके हैं, 33 रन अब तक आजिम यहाँ पर बना चुके हैं, यानी सतीश ऑलमोस्ट 60% ऑफ द टोटल रन्स स्कोर्ड बाय आजिम। तो जहाँ तक बेहतर स्कोर अब तक खड़ा कर चुका है एनएम मैंगलोर, उसमें आजिम का योगदान बहुत बड़ा है। No doubt, Gopi, and this is what you call grabbing the opportunity, isn't it? In NM cricketers, Mangalore, they got a lot of batting orders and talented players. But when you are promoted up in the order to open the innings, and Azim just grabbing the opportunity and just showing that I'm also got a talent, I can be the very effective batsman and the top in the order. So this is what you call grabbing the opportunity, and Azim is grabbing the opportunity, especially when you're playing against teams like Young Friends. It was scoring 33 valuable runs, Gopi. It's been unbelievable. That will give a lot of confidence for that player when it's going for the incoming tournaments for NM cricketers Mangalore. बिल्कुल सतीश, यंग फ्रेंड्स उर्वा के खिलाफ अगर जैसी यंग फ्रेंड्स उर्वा जैसी बेहतरीन टीम के खिलाफ आप अगर 33 रन बनाते हैं तो क्रिकेट के किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बेहतरीन पारी यहाँ पर कहलाती है जो आजिम ने इस वक्त खेली है। और यहाँ पर आजिम नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद, जो कि अजहर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, एक और बेहतर बल्लेबाज एनएम मैंगलोर की ओर से इस वक्त। तो इस वक्त अजहर सामना करने के लिए तैयार, और इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दृष्टि हसन, मैदान जो कि दर्शकों से खचाखच इस वक्त भर चुका है, एब्सोल्युटली जंप पैक स्टेडियम। और इस बीच गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिना तो ऊपर विकेट, अरशद के लिए इम्प्रोवाइजेशन किया, इस बार मिस जजमेंट अरशद द्वारा, और इस बार रन का खतरा, लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं, काफी ज्यादा अपनी दाईं ओर आ गए थे अरशद हड़बड़ाहट में, और गेंद निकली उनके बाईं ओर से, लेकिन बैकअप हुआ वहां पर अल्ताफ बसों ने गुड़ी द्वारा, लेकिन यहाँ पर 1 रन ज्यादा मिले, तो 2 रन यहाँ पर मिलेंगे। 55 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर, और अजहर इस वक्त 2 रन प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ पर आजिम के लिए एक इनाम घोषित किया गया है, अगर आजिम 50 रन मारते हैं, अगर अर्धशतक अपना पूरा करते हैं, तो मैदान गाइस मुडबिद्री इनकी ओर से 5000 रुपए का नगद पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। आजिम विल रिवॉर्डेड 5000 रुपीज कैश प्राइज इफ ही स्कोर्ड 50 इन दिस मैच, अनाउंस्ड बाय मैदान गाइस मुडबिद्री।
तो इस वक्त 33 रन लगभग 200 की 34 रन 200 की लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से इस वक्त बना चुके हैं आजिम, और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अंतिम ओवर शुरू होता हुआ और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए रिफान इस वक्त, और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए अपने अर्धशतक से 17 रन दूर। और यहाँ पर जहाँ तक सवाल है यंग फ्रेंड्स उर्वा के गेंदबाजों को, तो इस वक्त अंतिम ओवर में उन्हें अंकुश लगाना जरूरी बन चुका है आजिम पर, और देखते हैं किस तरह वो इस अपने इस प्रयत्न में यश प्राप्त करते हैं। ओवर की पहली गेंद रिफान दाईनाथ राउंड द विकेट, ये गेंद आजिम के लिए उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, गेंद पहुंची फील्डर गेंद के नीचे आ चुके हैं, और जिस तरीके से यहां पर गेंदबाज रिफान ने ताली बजाई उससे हमने अंदाजा लगा लिया कि गेंद को वहां पर अल्ताफ ने सीमा रेखा के अंदर लपक लिया है। और यहां पर चौथा विकेट, तीसरा विकेट गिर चुका है और आजिम आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए, और इसी के साथ एक बेहतरीन पारी पर पर्दा गिर चुका है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक इनिंग्स केम फ्रॉम आजिम। 34 runs he scored in just 18 balls with a strike rate of 190 plus, and with that fantastic knock he is backing to pavilion, और अपने टीम को एक सुस्थिति पर पहुंचाने के बाद आजिम पेविलियन वापस लौट चुके हैं। और तीसरा विकेट मैंगलोर यहां पर खो चुका है 55 रनों के ऊपर। It's 55 for the loss of 3 wicket with just 5 balls to go in their innings। नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ जायद, एक और बेहतर खिलाड़ी इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर कदम बढ़ाते हुए, और पहली गेंद पर रिफान विकेट इस वक्त प्राप्त कर चुका है। निस्संदेह इस अंतिम ओवर में रिफान को एक बेहतर गेंदबाजी यहां पर करनी है अगर बल्लेबाजों पर अंकुश लगाना है, और 5 गेंदें बाकी हैं, और देखते हैं इन 5 गेंदों में रिफान किस तरीके की गेंदबाजी यहां पर करते हैं। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार जैद इस वक्त सामना करते हुए, और दोनों टॉप सीडेड टीमों के बीच इस वक्त मुकाबला जारी है इस मैच में। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, एक्स्ट्रा क्विकर, जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। स्कोर रुक चुका है 55 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर, और रिफान एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाईनाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाईनाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद है एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ओवर, 3 consecutive dot balls and a wicket, and this is turning out to be a third fantastic over इन यंग फ्रेंड्स उर्वा's पॉइंट ऑफ व्यू। 2 ओवर बेहतर अरशद ने फेंके थे, तो उसके बाद ये तीसरा बेहतर ओवर है जो इस वक्त रिफान फेंके, लेकिन 3 गेंदें अभी भी बाकी है इस ओवर में, और देखते हैं 3 गेंदों में किस तरीके की गेंदबाज करते हैं। दाहिना ओवर द विकेट अगेन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, 4 डॉट बॉल्स, और इस बार राजेश इस वक्त विकेट पर अभी तक उन्होंने गेंद को नहीं लगाया, तो अरशद यहाँ पर कुछ डांटते हुए उनको स्ट्राइकर एंड पर कि भैया आप बल्लेबाज को क्यों देखते हो, आप विकेट उठाओ यहाँ पर, क्योंकि अजहर का विकेट चाहते थे राजेश, लेकिन यहाँ पर अरशद तुरंत दौड़ कर आए उनके पास, और उन्होंने तुरंत गेंद अपने हाथों में ले लिया और विकेट चटका दिया और कहा कि भैया यहाँ पर विकेट कितना जरूरी है, चाहे वो किसी का भी है। तो यहाँ पर 55 रनों पर चौथा विकेट गिर चुका है, और इस बीच नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ आतिफ, एक और बेहतर खिलाड़ी क्रीज पर उनका आगमन होता हुआ। 4 गेंदें बेहतरीन इस ओवर में फेंक चुके हैं रिफान, और अपनी ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार। बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है, 11:40 सुबह के बच चुके हैं, और हाई वोल्टेज मैच इस वक्त प्रगति पर, यंग फ्रेंड्स उर्वा वर्सेस एनएम मैंगलोर, और एक प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट सौहार्द ट्रॉफी 2023 डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट की शानदार प्रगति यहां पर होती हुई। तो गेंदबाज तैयार, दाईं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद स्वीप करना चाहा, सफल होते हुए फाइन लेग पर फील्डर चूके अरशद, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो यहां पर चौका प्राप्त कर चुके हैं, तो 59 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यहां पर थोड़ा सा मिस जजमेंट अरशद ने किया था, और गेंद इस वक्त फाइन लेग सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। तो अगला मैच के बारे में अगर जिक्र किया जाए, ब्रदर्स मक्यार का सामना होगा टीम मैट्रिक्स के साथ, तो इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट निवेदन करता हूं दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर दर्ज करने के लिए। तो अंतिम गेंद, द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नॉट कमिंग अप, और इस बीच गेंदबाज तैयार रिफान, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर। दिस इज नॉट अ गुड बॉलिंग, दिस इज नॉट अ गुड बॉलिंग।
5 गेंदें बेहतर फेंकने के बाद इस बार गेंद लेग स्टंप से बाहर काफी उन्होंने फेंकी और 2 रन यहां पर एनएम मैंगलोर प्राप्त करता हुआ। 61 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, स्टिल अ लास्ट बॉल लेफ्ट। और तो यहाँ पर अंतिम गेंद इस वक्त बाकी है और गेंदबाज इस वक्त रिफॉन तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, अजहर इस वक्त सामना करने के लिए एब्सोल्युटली रिवर्स शॉट कोशिश करेंगे। मैंने पहले ही अंदाजा लगाया था, अंतिम गेंद बाकी है तो अरशद यहाँ पर अजहर रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास जरूर करेंगे और उन्होंने किया भी, लेकिन सफलता उनके पक्ष में नहीं आई और बेहतर गेंद थी रिफॉन की। और इसी के साथ चौथा विकेट गिर चुका है। 7 ओवर की समाप्ति, 61 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 61 for the loss of 4 wicket after completion of 7 overs, and they set a competitive target in front of young friends Urwa. 62 the target in 7 overs, just under 9 runs per over they have to score for victory. 8.88 runs per in exactly calculation सतीश। और निस्संदेह 62 रनों के लक्ष्य तक अब पहुंचने के लिए यंग फ्रेंड्स उर्वा को जी तोड़ मेहनत मुशक्कत करने की, लेकिन उनके पास भी कुछ ऐसे बल्लेबाज मौजूद है, खासकर द मैन जैसा कि आपने कहा है किलर ऑफ द बॉल जो अरशद इस वक्त इनफॉर्म बल्लेबाज हैं और उसके साथ संतोष बंटवाल वो भी मौजूद है, अल्ताफ बसवनगुड़ी, ऐसे बल्लेबाज यहाँ पर मौजूद है। परवेज की वापसी यहाँ पर हो चुकी है। तो और जैसा कि ये बल्लेबाज अगर अपना कौशल आक्रामक बल्लेबाजी के रूप में यहाँ पर दिखाते हैं तो यंग फ्रेंड्स उर्वा इस लंबे से लक्ष्य तक पहुंच सकता है। लेकिन एनएम क्रिकेटर्स के पास भी न सिर्फ सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप है बल्कि सशक्त बलाढ्य गेंदबाजी का लाइनअप भी है। और देखना यह है कि अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप ऑफ एनएम मैंगलोर यंग फ्रेंड्स उर्वा के बल्लेबाज किस तरह यहाँ पर बल्लेबाजी कर पाते हैं। फिलहाल ऐसा कहना पड़ेगा इस मैच का दूसरा सत्र द्वितीय अवधि द्वितीयार्ध एक रोचक होगा, क्यों सतीश? Absolutely, Gopi. And before coming back to that opinion, we just would like to welcome our chief guest, respected Jeevan Pereira of Tanir Babi. And I request Akim, one of the backbone of this cricket tournament, will go in to welcome him with the memento and with the flowers. So warm welcome for Jeevan Pereira of Tanir Babi, one who organized the successful Tanir Babi Premier League 2023 in the last month, and even he is one of the backbone of the cricket tournament. Adinatheshwara Trophy will go into commence in the coming next month, 29th and 30th of April, that was Saturday and Sunday, will go into commence the huge cash prize of rupees 1,50,000 with the attractive Adinatheshwara Trophy 2023. And now it's a warm welcome for my friend Mr. Ganesh Pujari. Of course, he's also one of the best cricketer, former cricketer, but more than anything else, he's got a lot of name and fame with the singing capacity. He's a very good singer, and of course, he's a very good human being more than anything else. The friendly nature. So, welcoming him for the prestigious Souhardha Trophy 2023 from Shakir of one of the organizer of this cricket tournament, and Akim, the two pillars of this cricket tournament, Souhardha Trophy 2023. Now it's a time to announce the man of the match of the first match, and man of the match which goes to Shamshed of Deadly Boys Kankanadi for his all-round performance. May I request Shamshed of Deadly Boys Kankanadi ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶಂಶೇದ್ ಆಫ್ ಕಂಕನಾಡಿ, ಡೆಡ್ಲಿ ಕಂಕನಾಡಿ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
Well, thank you, Gopi. And just coming back to your point, what you just mentioned earlier, that 62 might be the difficult task in front of young friends, but not impossible. Just considering the fact that Gopi and Santosh, everybody knows Santosh Bantwal's ability, the potential, what he can do in tennis ball. Cricket is one of the fantastic striker of the ball, and no doubt at all. But he's got a fantastic record in this UCG cricket ground as well, as far as the fastest 50 is concerned. And that's all about the Santosh. But in the other end, the man has got a fantastic season, and just like I named him as a killer of the ball. And he's got a killing instinct. Is always going to be danger for any opposition, because if you're able to stay in the middle for at least 3 to 4 hours, he can change the complexion of this game as well. So, but dynamic cricketers realizing that these two batsmen definitely going to be a key factor. They wanted to get the wicket of these two batsmen. The first ball, Santosh wanted to play the reverse sweep, and looks like it's going to bat into that. Otherwise, it's going to be a very close call, and a very close call, absolutely. And umpire just harding that the noise of bat which is involved, so that umpire rightly so denying the appeal from the bowler. That is a leg before wicket. So first run comes up here for Santosh, and he's up the mark with a single, one without loss of any wicket in the over number first is in progress. Of course, Santosh is a very good reverse sweeper of the ball, but against the face of Mujib, playing your first delivery, it's always going to be asking for trouble. Indian, yeah. So here is Mujib, right arm over the wicket, bounce this time. It's beautiful shot, up and over, down to deep extra cover region before the fielder from the deep extra cover run across to his left to field the ball. Ample time for the batter to complete a single run. Santosh is off the mark with a little correction. Santosh got his second run, and Ashad has got a first run. Mujib again bowling away from us. Right arm over the wicket, bounced to Ashad. Ashad left the ball, just a little bit misjudgment of the line of the ball, and wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Mujib again bowling away from us. Right arm over the wicket, bowls to Arshad. Arshad this time, that was a beautiful delivery again. A quicker one, beaten by the face. Mujib knows that what Arshad has got ability of doing, and that's why he's not bowling to his strength. He's bowling almost around midland leg stump with the pace, so that very difficult for the batsman to get that one into the fence. But so far it's a good start there for Mujib, and just 4 runs on the board without loss of any wicket. Mujib, at this time Santosh lofted that one high and handsome. Ball, oh my goodness, oh, dropped. Nandan Kulshekar is dropped the catch, but I think he's tried his level best, but unfortunately you need to get some practices, catching practices to get that catch. But what a fantastic stroke, Gopi. Magnificent struck. It's not so easy, I want to say. It's not so easy because it's not so easy, Gopi, because against the bowling of Mujib and against the direction of the wind in the morning, hitting to the commentary box, it's absolutely unbelievable struck. Exactly, Satish. Absolutely fantastic struck came from the bat of Santosh. He just got that one right from the mid of the bat and lofted that one in a style. And this is a magnificent struck came from the bat of संतोष और एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर कर चुका है. 10 रन पहले ओवर में, फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 10 रन ऑन द बोर्ड और 10 रन 62 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक बेहतर शुरुआत कह रहेगी सतीश. पहले ओवर के बाद 10 रन बनाना. Absolutely very good start. 10 runs from the first over. Now it's the time to present the man of the match award for Shamshid for his outstanding all-round performance, and Jeevan
Pereira will go into present this man of the match award for Samshid for his outstanding performance. And with a T-shirt, we will be presented for. It's a bag, absolutely, and it's a very good concept there from the organizer to get one bag which is presented for Shamshed, because it's a useful thing, and that's why organizer decided to present the bag and for the man of the match winners. Congratulations, Shamshed, for your outstanding performance. Hope you will going to continue for the next match. So Atif, a little correction, Riaz brought in the attack from the far end. Second over of the power play. Right arm over the wicket. This time, Arshad, the step that one ball is in there. Oh my goodness, ball landed safely. Mujib is running back, and Fayaz was standing from the deep short cover point, running back. But ball is landed between the two fielders. You can't give that chances to the batsman like Arshad. Of course, a difficult chance, but you need to convert that difficult chance, isn't it? Whenever try to get the catch off the batsman like Arshad. He got a couple of runs anyhow. It's a 12 on the board without loss of any wicket in the over. Number second is in progress. What a fantastic cricket tournament is progressing here, and what a fantastic the match which is progressing here for especially for cricket lovers between NM Cricketers Mangalore versus Young Friends Urwa. Riaz bowls Arshad going for the rise, going for the quick single in the legation. Excellent judgment of run there by Arshad. Usually Arshad is very choosy as far as quick running between the wicket is concerned. He never go for the risky runs, but this time he is realizing that the fielder in the mid-on is not quick enough as not a regular player, so that he is converting that one into a single very quickly. So 13 without loss of end wicket in the over. Number second in progress. Riaz bowling for the BMR end. Right arm over the wicket. Bowls to Santosh. Santosh this time improvising that one by delicately placing the ball down to third man region for a single. With that single, scored Namazan to 14 on the board. It's going to be anybody's game. Of course, NM Cricketers Mangalore might be thinking about it. Might be the enough runs on the board. But I already mentioned, if these two batsmen goes on bat with the 4 to 5 overs, that's going to be a very interesting match. It's going to be anybody's game. Riaz again from the far end. Pass umpire Harish Padil. Right arm around the wicket, absolutely spectra wide, huge wide there from Riaz. This is what you call the pressure. This is what you call the pressure when you are bowling against the batsman like Arshad. It's not so easy for any bowler to control that the feelings what he has got. He wanted to restrict the runs from the bat of Arshad. By doing it, it might be he's lost the concentration over the line. He bowled a big wide. 15 without loss of any wicket in the over. Number second is in progress. Absolutely pin drop silent. This shows that the cricket lovers, the spectators, enjoying the game of cricket very silently. This time, oh, ball is in there, but quite nicely gets it one between the two fielders. They're going for the second run, and now the direct hit, and they will going to convert that one direct into for the third run. And the 3 valuable runs has been taken. This is quite unusual. NM Cricketers Mangalore, the fielding is not really up to the mark now, and both the batsmen grabbing the opportunity. The left and right combination is looking so good. It's 18 without loss of any wicket. And again, the Arshad is playing a very intelligent cricket, Gopi. And just like in the yesterday's match, we are observing or witnessing the KPL season 3, season 5. In that particular match also, in the particular tournament also, Arshad is played very intelligent cricket. And this is what the cricketer need to do. And of course, your instinct is to killing the ball, but sometimes you need to play as per the condition required. Here is Riaz again from the far end. Right arm over the wicket, bowls to Santosh. Sada swept that one very hardly down to square leg region. Not more than a single. Mujib quickly back and stops a certain couple from these two batters. Just a single for Santosh with that single scope and moves on to 19 on the board. Very good going here for Young Friends Urwa. They're really capitalizing that power play very well, and that's only because of Santosh hitting the 6 in the first over that makes the things so easy for them to continue in this particular second over of the power play by rotating the strike. 19 without loss of any wicket. Riaz from the far end, bowling with a short run up. Right arm from the wicket to Arshad, gone. This is a big fish. This is a big fish in the net.
Arshad departs, looking for the improvisation. What is a natural instinct to hitting the ball? This time he is just implementing that improvisation by playing a switch it, pays the penalty for that. And the third man fielder making no mistake at all. It's 19 for the loss of 1 wicket. And Gopi, might be that game plan of Arshad, saying that Santosh is more aggressive, so he is implementing different strategy. That and other end, I want to play acting role of rotating the strike here and there. That's why he is not implementing his natural hitting strokes, but improvising. But he pays a penalty for that. बिल्कुल सतीश, संतोष दूसरे छोर पर काफी आक्रामक बल्लेबाजी अपना रहे थे। इसलिए अरशद ने सोचा कि शायद कुछ हद तक अपने आक्रामक बल्लेबाजी को कम किया जाए और स्ट्राइक रोटेट करके ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक संतोष को दिया जाए। लेकिन जहां तक अरशद का सवाल है, वो आक्रामक बल्लेबाजी के लिए ही जाने जाते हैं और नेचुरल गेम उनको खेलना चाहिए था। अगर संतोष के साथ वो भी आक्रामक बल्लेबाजी करते तो निस्संदेह एनएम मैंगलोर के गेंदबाजों पर दबाव और बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पर इम्प्रोवाइजेशन करने के प्रयत्न में उन्होंने अपना विकेट गवा दिया। शॉर्ट थर्ड मैन पर आसानी के साथ कैच को लपक लिया था फील्डर ने और इसी के साथ ये पहला विकेट गिर चुका है। और बिग फिश इन द नेट, जैसा कि आपने कहा, बड़ी मछली इस वक्त जाल में गिर चुकी है। और देखना यह है कि इस विकेट के पतन के बाद यंग फ्रेंड्स उर्वा के बल्लेबाज जो कि संतोष इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, उनका किस तरह आने वाले बल्लेबाज साथ निभा पाते हैं। Well, Gopi, and Arshad is definitely thinking about after that he is going towards the pavilion and sitting in the dressing room and thinking about what the things is went wrong. But it's too late, isn't it, Gopi? Sometimes it's happening in cricket. You might be wanted to do something different, but you did something wrong. Maybe Arshad is thinking about, of course, it's my job is to play and big shots, but this time he's looking for the improvisation. Pays the penalty for that and back into pavilion. New batsman into middle is one more very talented left-hand batsman, Prasad. Karkala is in non-strikers and Santosh will go into face Atif. Third over of the innings. This time Santosh drives that one nicely right in the gap. Certainly there is a couple of runs here. In comes the throw from Dave, but Prasad is a very good runner. They're going for the third as well. This is what I'm talking about. This time opportunity of run out. Umpire says not out. Now he is asking for the third umpire. This is a very close one. This is a very close one now. Prasad, Gopi, everybody knows the ability of his running between the wicket. Of course, no doubt at all in the second run. They completed the second run very well. But selection of the third run is going to be crucial because Prasad is too far across from the non-strikers end. That's why you need to run a lot more than what the distance we have in the between wicket to wicket. More than that he had to run. That's what the problem for Prasad, that he has to get the little bit more distance and he's a little bit struggling. If it is out, Gopi, might be it was going to be a big blow for young friends Urwa, but NM Cricketers Mangalore wanted that blow, and at the same time young friends Urwa doesn't want to lose the wicket in this situation. एग्जैक्टली सतीश, यहाँ पर दूसरा रन पूर्ण करने के बाद दीपक काफी आगे निकल चुके हैं और इस बार बच चुके हैं। इट्स नॉट आउट कॉल फ्रॉम द थर्ड अंपायर और यहाँ पर उनका विकेट बच चुका है। हालांकि काफी आगे निकल चुके थे और वापस लौट कर और तीसरे रन के लिए वो दौड़ पड़े थे और यहाँ पर काफी नजदीकी मामला था, लेकिन भाग्य इस वक्त दीपक का साथ देता हुआ, प्रसाद का साथ देता हुआ और यहाँ पर वो बाल बचते हुए और 3 रन यहाँ पर जुड़ चुके हैं उनके खाते में और इन 3 रनों के साथ 22 रन बन चुके एक विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए एक राहत भरी सांस वो अब लेते हुए। Well, Gopi, and 22 on the board, 22 for the loss of 1 wicket. And in the first body language of square leg umpire, Gopi, Arish Padil already said not out. And then he is saying that NM Cricketers Mangalore all appealing for that. Then he is asking for the third umpire. So always Gopi, because the field umpires is always experienced campaigner, because technology which is came into Underarm cricket in 3, 4, 5 years back. But before that, these all umpires are responsible for the success of cricket tournament. With the naked eye, they are the one got confidence that they are giving a right decision. Again, going for the reverse sweep, missed it completely. We are talking about Prasad's ability. He is a very good rotator of the strike. He's a kind of batsman, Gopi, who takes his own time to settle down in the middle, rotating the strike here and there. But once he settled down in the middle, Gopi, he's got ability of hitting a big shots as well. So very key here for young friends who are having him along with the Santosh to carry on the business. Atif again bowls. That's what I'm talking about. Nicely swept that one down to square leg region, running hard, looking for the second. In comes
towards the throw. And Prasad this time, this is what the quality of this man. Whenever he is in the middle, Gopi, the condition total will go into converts, because he's putting some electrifying running between the wicket, absolutely electrifying running between the wicket. And the Prasad knows that he is running towards the danger end, and that's what he did is that he's completed the first run very quickly. Once you complete your first run very quickly, it's so easy for you to convert that one into two, because you are the one who is running towards the danger end. And Prasad is implementing a very good strategy this time. And he was struck, and he got the distance. 6 signal by umpire. This is what Prasad I am talking about, Gopi. He's not like a fast. He's not like a falling waters of the mountains, which makes some more sound. But he's a kind of batsman, just like a deep waters of the calm lakes. You can't see anything, because it's very cool and calm. But it has got a very depthness in that lake, and this is what Prasad has got. And just like you mentioned, he's a kind of batsman. He's very cool and calm, but sometimes when his opportunity is offered for him to showcase, and he got that one beautiful reverse stroke, and just like Azim is did that stroke against Santosh, the typical reverse stroke again, down to square leg region, running hard, but this time Santosh is not interested, rightly because Azhar is a man. He's got a fantastic arm, so that against his throwing arm, going for the second run means he's asking for the trouble. That's why Santosh is not interested. What a fantastic chasing here from young friends Urwa. 31 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Atif bowling away from us. Right arm over the wicket to Santosh. Oh my goodness, this is the second wicket, Gopi. The similar passion. He can hit anywhere down at the deep third man and deep backward point if he hit the ball with the power. But he's just helping the full toss ball, Gopi, and straight to the hands of short third man. This is a prize wicket for NM Cricketers Mangalore. This is not like the ball which is a wicket taking delivery, Gopi. It's a hittable delivery. But cricket is, everybody knows, is a cricket is a game of luck, and luck is now in favor of NM Cricketers Mangalore because Santosh is back into pavilion. बिल्कुल सतीश, निर्णायक मोड़ पर यहाँ पर संतोष का विकेट गिर चुका है और हल्के से गेंद को खेलना चाहता है इस वक्त, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके और यहाँ पर संतोष का विकेट का पतन इस वक्त एनएम क्रिकेटर्स के कुछ हद तक राहत भरी सांस लेने में सहाकारी हो चुका है। तो 31 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर, 31 रन और बनाने हैं और जहाँ तक मैच के विजय का सवाल है, मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है। एक और बेहतर बल्लेबाज राजेश का आगमन यहाँ पर होता हुआ और प्रसाद का साथ निभाने के लिए उस क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और निस्संदेह यहाँ पर जहाँ तक सवाल है इस वक्त राजेश का, तो देखते हैं राजेश किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर करते हैं। लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी इस वक्त संतोष ने किया और एक बेहतरीन पारी का अंत यहाँ पर हो चुका है संतोष का। Well, Gopi, absolutely. The Santosh has played a very good innings, but without completing the job, Gopi, because the one side Prasad is looking so good, and Santosh is a batsman who is settled down in the middle, so that it's going to be a very good moving for young friends Urwa in that particular over. But last delivery, which is bowled by Atif, is a full toss delivery, is gave a very huge wicket for NM Cricketers Mangalore. They're back into this game. 31 for the loss of 2 wicket, and Gopi, half of the job which is completed, and then they have to complete another half of the job in remaining 4 overs, Gopi. That means first 3 overs which is belongs to young friends Urwa. Exactly, Satish. जैसा कि आपने कहा 3 ओवर में 31 रन, absolutely fantastic progressing here for them. 4 overs left in the innings, 31 to get from 24 deliveries. और यहाँ पर चौथा ओवर प्रारंभ होता हुआ, पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, बेहतर गेंद, एक्स्ट्रा क्विकर लेग स्टंप से बाहर, सटनली गोइंग डाउन द लेग साइड, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 30 रन और चाहिए, 23 गेंदें बाकी, 30 रन टू गेट फ्रॉम 23 डिलीवरीज। व्हाट अ फैंटास्टिक मैच इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर, हाई वोल्टेज मैच, एंड लुक एट द स्टेडियम, एब्सोल्युटली जंप पैक स्टेडियम। दर्शकों से खचाखच ये मैदान इस वक्त भर चुका है, मैदान के चारों ओर दर्शक ही दर्शक इस वक्त नजर आते हुए और यहाँ पर इस मैच की शोभा को और बढ़ाते हुए, और गेंदबाज रियाज इस वक्त
गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज राजेश सामना करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को इम्प्रोवाइजेशन करना चाहा, नॉन स्ट्राइकर निशाना चूक चुका है, निशाना यहां पर चूक चुका है। अंतिम क्षण में इस वक्त गेंद को निशाना दागा था, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद सम से कुछ दूरी पर निकलती हुई और बल्लेबाज इस वक्त जीवदान न प्राप्त करते हुए तो 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर 32 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एंड in overall calculation it's going to be 22 balls remaining and 30 runs required in the innings. What a fantastic match is now progressing here और बराबर का संघर्ष यहाँ पर जारी है। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए रियाज, इस वक्त बाएं हाथ के बल्लेबाज राजेश सामना करने के लिए तैयार और अपनी ओर की अगली गेंद इस बीच ये गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद राजेश के लिए खूबसूरत स्ट्रोक तो नहीं लेकिन एक रन जरूर मिलेगा, पॉइंट पर गेंद पहुंचा और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता है 1 रन का इजाफा हो चुका और इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 33 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 33 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 29 टू गेट फ्रॉम 21 बॉल्स और इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं प्रसाद। और प्रसाद का जहां तक सवाल है, एक बेहतरीन बल्लेबाजी अब तक उन्होंने किया, 10 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर इस वक्त बल्लेबाजी करते, 9 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर वो बल्लेबाजी करते हुए एक छक्के की मदद से और इस वक्त उन्हें एक बेहतरीन पारी यहाँ पर खेल ली है संतोष के आउट हो जाने के बाद। तो देखते हैं यहाँ पर वो अपने टीम को सही मंजिल तक पहुँचा पाते हैं। रियाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद इस बार गेंद को स्वीप किया, गेंद जाती है बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, जब तक फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 34 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 34 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एंड 28 टू गेट फ्रॉम 28 रन्स टू गेट फ्रॉम 20 डिलीवरीज और एक बार फिर से गेंदबाज रियाज तैयार, लेकिन इससे पहले उन्होंने अंपायर ने गेंदबाज को रोका और वहाँ पर स्टंप्स कुछ हद तक टेढ़े होकर खड़े हुए थे, उस स्टंप्स को वो ठीक करते हुए इस वक्त और गिल्लियाँ बेल्स भी गिर चुके थे और बेल्स को इस वक्त वो लगाते हुए और इस बीच रियाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ बाएं हाथ के बल्लेबाज राजेश इस वक्त तैयार सामना करने के 20 गेंदों पर 28 रन चाहिए विजय के लिए। अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, गेंद विकेट कीपर के पैरों पर टकराने के बाद सीधे इस वक्त पहुंच चुकी है गली पर, शायद बल्लेबाज के बल्ले पर गेंद टकराने के बाद विकेट कीपर के पैर पर गेंद टकराई थी। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 35 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 35 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 27 रन्स मोर नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमाइनिंग 19 डिलीवरीज। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक मैच इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर और गेंदबाज की ओर की अगली गेंद इस वक्त लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रसाद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, ये गेंद प्रसाद के लिए वो इस बार ऑफ से काफी बाहर, इस बार वाइड का इशारा, रनआउट का खतरा, रनआउट चूकते हुए और इसमें 2 रन बल्लेबाज को मिलेगा। लाइन के काफी बाहर गेंद फेंकी थी और 2 रन एक्स्ट्रा अतिरिक्त के रूप में उनके खाते में जुड़ता हुआ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर 37 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एंड 25 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 19 बॉल्स। दोनों टीमों के समर्थक सपोर्टर्स अपनी टीम का मनोबल बढ़ाते हुए सीटियों के साथ तालियों के साथ इस वक्त काफ़ी चीखें नीचे सुनाई देती हुई कमेंटेटर बॉक्स के नीचे प्लेयर्स गैलरी में और मैच एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है। रियाज की गेंद, ये गेंद इम्प्रोवाइजेशन करना चाहा राजेश ने, चूंकि अंतिम क्षण में गेंद पहुंची वहीं पर रुक गई और बेहतर गेंदबाजी थी। ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति 37 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर 7 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर, 37 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एंड 4 overs had been bowled, 25 to get from 3 overs. 18 deliveries remaining, 25 to get, required run rate is exactly 8.33 runs per hour. तो निस्संदेह कांटे का टक्कर इस वक्त होता हुआ यहाँ पर और 3 निर्णायक ओवर इस वक्त बाकी उनकी पारी में और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए मुजीब इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और 5वां ओवर शुरू होता हुआ यंग फ्रेंड्स उर्वा के बाद में प्रसाद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई
और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त मुजीब, 4 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण में यहाँ पर दिखाई देता हुआ। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन कहना पड़ेगा। और मिड ऑफ इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, डीप बैकवर्ड थर्ड मैन इस वक्त मौजूद है। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त मुजीब तैयार था, तो ऊपर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑन साइड पर, गेंद को मोड़ा खूबसूरती के साथ, लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 38 रनों पर, 38 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 in progress at the start of the 5th over। in fact एक बार फिर से मुजीब अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए और सामना करने के लिए तैयार इस वक्त राजेश। 17 गेंदों में 24 रनों की दरकार और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार था, तो ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद राजेश के लिए स्वीप किया इस वक्त, लेकिन ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पाए। 1 रन जरूर मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 39 रनों पर, 39 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 in progress। 16 balls left and 23 more runs now they have to score for victory। मैच still now equally balanced और गेंदबाज अपने ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रसाद के लिए ये गेंद इस वक्त, गेंद को इस वक्त इम्प्रोवाइजेशन करना चाहा था, लेकिन ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पाए। गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 40 रनों पर। What a fantastic match is now progressing here और निस्संदेह एब्सोल्युटली जम पैक स्टेडियम, बिल्कुल दर्शकों से खचाखच मैदान इस वक्त भर चुका है और भरनी भी चाहिए। टॉप सीडेड 2 टीमें यहाँ पर भिड़ रही है इस श्रृंखला के दूसरे मैच में इस वक्त। और गेंदबाज मुजीब अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, राजेश के लिए ऑफ स्टंप से इस वक्त बाहर की ओर कुछ ज़्यादा नहीं निकल रही थी, सही गेंद पहुंची, डॉट गेंद, बेहतर गेंदबाजी मुजीब की और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बार फिर से मुजीब गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद राजेश के लिए उछालना चाहा, चूंकि एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी, 2 लगातार डॉट गेंद है। अब दबाव सीधे बल्लेबाज के ऊपर, 13 गेंदें बाकी हैं, 22 रन चाहिए, 3 रन सिर्फ इस ओवर में मुजीब प्रदान कर चुके हैं। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर फ्रॉम मुजीब। और इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद इस बार ड्राइव किया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पर, इस बार गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए मिसफील्ड वहां पर और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज को मिले 4 रन। इस मिसफील्ड की बदौलत कहना पड़ेगा, बल्लेबाज को मिले 4 रन, वहां पर मिसफील्ड हुआ था और अयाज जो फील्डर थे और 44 रन बन चुके, 5 ओवर की समाप्ति, 18 रन चाहिए 12 गेंदों पर, 12 balls and 18 runs more now they have to score for victory। और तो चौका पिछले ओवर के अंतिम गेंद में लगा था सतीश, वो चौका कुछ हद तक आत्मविश्वास का ऑक्सीजन भर चुका है यंग फ्रेंड्स उर्वा के बल्लेबाजों पर। Well, Gopi, and it was unforced error, and unforced error in the sense it's what could be a certain single in that particular stroke, Gopi. But sometimes it's the voltage game, Gopi. It's a voltage game. It's not so easy for the outfielder because so many crowds are watching you, and against them the fielding is not that much of easy, isn't it? That's what might be the Ayaz is just a feel for a little bit did a mistake. That ball is couldn't manage to collect the ball properly, but 4 runs in that ball, Gopi, the last ball, might be the turning point of this match if young friends Urwa will going to win this match in a close encounter. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸತೀಶ್. ಟೀಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಕೂಡಲೇ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು बी रिपोर्टेड हियर फॉर टॉस प्रोसीजर। 4K व्यूवर्स इस श्रृंखला का मुआयना इस वक्त करते हुए देश विदेशों में और निस्संदेह जो बेद्रा मीडिया द्वारा एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है। 18 रन चाहिए, गेंदें बाकी हैं 12 और इस बीच गेंदबाज आतिफ गेंदबाज यहाँ पर प्रारंभ करते हुए और बल्लेबाज इस वक्त यार प्रसाद। व्हाट अ फैंटास्टिक मैच इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर और इस बीच फील्डिंग में जमावट करते हुए 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त मौजूद और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। आतिफ बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रसाद के लिए और
ये गेंद इस वक्त आतिफ की दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद है, ये गेंद स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ गेंद जाती है बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, फील्डर वहां पर पहुंचते हुए रन मिलेगा, दूसरे के लिए दौड़ पड़े यहाँ पर राजेश वहीं पर टिके रहे और आखिरकार ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है रनआउट के रूप में। तो यहाँ पर प्रसाद स्ट्राइक को खुद अपने पास रखना चाहते थे, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, शायद वहां पर दूसरे रन की संभावनीयता हो सकती थी, लेकिन आखिरकार गेंद इस वक्त उन्होंने राजेश ने सिर्फ गेंद की ओर देखते रहे और आखिरकार यहाँ पर रन आउट हो चुका है नॉन स्ट्राइकर रन पर। तो इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। अब सतीश राजेश का विकेट गिर चुका है। रन से चाहिए इस वक्त 17, गेंदे बाकी है 11 और इस वक्त कम से कम एक चौके या छक्के की जरूरत है यंग फ्रेंड्स उर्वा के इस मैच में वापसी करने के लिए। Exactly, Gopi. And coming back to that dismissal of Rajesh Shubar, I think everything is wrong about Rajesh Shubar because he is very safe. He is running towards a safe end, and Prasad is running towards a danger end. So he is very confident that I can reach the home. Then what about this man, Rajesh Shubar? He's a very good runner, Gopi. He need to respond because the run rate required is more than the ball, so that they need to convert each and every chances. So I think it's poor thinking there by Rajesh Shubar, not thinking about the second run, and rightly so, he's back into cover. But today is a day which is not belongs to Rajesh Shubar. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर दूसरा रन लेने का पूरा मौका था और हालांकि वो सेफ एंड पर दौड़ रहे थे जैसा कि आपने फरमाया राजेश शुभा, लेकिन उन्होंने गेंद की ओर नजरें गड़ाए रखी थी, तो इस वजह से यहाँ पर रन आउट हो चुका है। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड पैन पर, गली पर कहना पड़ेगा, बाई का इशारा, 22 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 46 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 46 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार। कुल मिलाकर 10 गेंदें अब बाकी और 16 रन चाहिए और टाइम आउट इस वक्त घोषित किया गया। तो एक ज़्यादा खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। 1 फील्डर कैन कम इनसाइड द 20 यार्ड सर्कल। उनके स्टिपुलेटेड टाइम निगदित समय समाप्त हो चुका। तो इस बीच अंपायर कुछ कहते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है। तो इस बीच एक फील्डर को बुला लिया गया है 20 गज के दायरे के अंदर और इस बीच आतिफ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट, इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। वहां पर बढ़कर स्कोर वहां पर बढ़कर पहुंच चुका है 47 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 47 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 6 in progress. 9 balls left in overall calculation. 15 runs more now they have to score for victory, and that is an absolutely fantastic match is now progressing here. हर गेंद के साथ फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए और इस बीच अल्ताफ बसवनगुडी एक और बेहतर बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर हो चुका है और जबकि इस वक्त फील्डिंग में अभी भी जमावट चलती हुई आतिफ द्वारा गेंदबाजी इस वक्त करते हुए और यहाँ पर तैयार अपने ओर की अगली गेंद लेकर बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रसाद जो कि एक बेहतर बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त सामना करने के लिए तैयार आतिफ। ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, वहीं पर गेंद है, विकेट कीपर ने तीनों विकेट इस वक्त उखाड़ दी है लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ यहाँ पर सुरक्षित था और गेंद को इस वक्त खेलना चाहता, खेल नहीं पाया, गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। हालांकि बल्लेबाज क्रीज से थोड़े से कदम आगे जरूर बढ़ाए थे लेकिन ऐन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और कुल मिलाकर इस ओवर में अब गेंद बाकी है 8, इस मैच में गेंद बाकी है 8, रन चाहिए 15। अब कुछ हद तक समीकरण मुश्किल होता हुआ और जहाँ तक चौके और छक्कों का सवाल है इस वक्त एक चौके या छक्के की सख्त ज़रूरत है यहाँ पर यंग फ्रेंड्स उर्वा को इस मैच में वापस आने के लिए और गेंदबाज इस वक्त तैयार। गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रसाद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार
आतिफ एक बार फिर से फील्डिंग में जमावट करने के बाद दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी इस वक्त करते हुए फिर से फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर एक फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया गया है और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद प्रसाद के लिए, गेंद को उछालना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग, वन मोर डॉट बॉल and now equation seems to be a much stiffer for them, 15 to get from 7 deliveries and a fantastic over progressing here from Atif। 3 रन सिर्फ इस ओवर में अब तक वो प्रदान कर चुके हैं और निस्संदेह इस ओवर की बदौलत एनएम क्रिकेटर्स का तख्ता कुछ हद तक भारी लगता हुआ यहाँ पर और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए आतिफ, बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रसाद इस वक्त सामना करते हुए और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार आतिफ। प्रसाद के लिए यह गेंद चूके एक बार फिर से एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ओवर केम टू एन एंड, जस्ट 3 runs conceded by Atif in this over और निस्संदेह सतीश अब ऐसा कहना पड़ेगा इस ओवर की बदौलत एनएम मैंगलोर इस मैच में वापस आ चुका है। Not only they back into this game, Gopi, they strongly back into this game because of Atif being the captain of the side. He did a captain's role, isn't it? Keeping up the settled batsman like a Prasad in this crucial over is not so easy. And look at the consistency in the line and then every ball which is bowled dotted delivery, which is outside the line of off temper. But I think really surprised why Prasad is not changes his technique. Once of his beaten outside the line of off stump, excuse. Second time it's the same line and also the excuse. But consecutive 4 deliveries, Gopi, the same line and same length, the batsman is not thinking about the changing the technique, isn't it? This is a quite a little bit disaster as far as the batsman's point of view. But Atif did a great job. And no doubt at all, because he's just delivering the ball where it is going to be not the strongest zone of Prasad. It was a little bit the weakest zone of Prasad outside the line of off temper. And rightly, Gopi, NM cricketers Mangalore, they back in this game. Now, young friends Urwa, all up to this man, Altaf Basavanagudi, knowing for big strokes, but he need to deliver do or die situation for young friends Urwa. Exactly, Satish. 15 needed in last over. 6 and a boundary needed. First ball from Faisal. Right arm over the wicket. Absolutely fantastic one. Gone through for a quick single. And this time he get it comfortably. 14 to get now from 5 balls. और निस्संदेह यहाँ पर अब ऐसा कहना पड़ेगा चौका या छक्का ही इस वक्त यंग फ्रेंड्स उर्वा को इस मैच में वापस ला सकता है। दोनों बल्लेबाज प्रसाद और अल्ताफ बसवनागुडी कुछ बातचीत यहाँ पर करते हुए और इस बार देखना है कि प्रसाद बल्लेबाजी में कौन सी रणनीति टैक्टिक्स यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं अगली गेंद पर फैजल की गेंद पर। तो फैजल इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए हर गेंद के साथ फील्डिंग में जमावट करते हुए इस वक्त एनएम मैंगलोर के कप्तान और जहां तक सवाल है इस वक्त 5 खिलाड़ी इस वक्त सीमा रेखा के अंदर 20 गज के दायरे के अंदर तैनात है। सिर्फ 3 खिलाड़ी मात्र ऐसा कहना पड़ेगा सीमा रेखा के बाहर तैनात। तो यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा फैजल का जहां तक सवाल है फैजल किस तरह की गेंदबाजी अगली गेंद पर करते हैं। 14 रिक्वायर्ड ऑफ 5 बॉल्स। फैजल कम्स दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार इंप्रोवाइजेशन किया, फाइन गेंद निकल चुकी है, हाफ स्टॉप इस वक्त करते हुए गेंद जाते बैकवर्ड थर्ड मैन पर दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े। 2 रन यहां पर मिलेंगे, 2 रन यहां पर मिलेंगे। इंप्रोवाइजेशन किया था लेकिन फैंटास्टिक स्टॉप, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्टॉप मेड बाय द शॉर्ट फाइन लेग फील्डर। हाफ स्टॉप जरूर किया था मुजीब ने लेकिन कम से कम 2 रन वो अपने टीम को बचाने में सफल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 50 रनों पर। 50 कम्स अप और अब चाहिए 12 रन जबकि गेंदें बाकी हैं 4। 4 balls left, 12 runs required। और यहां पर जहां तक सवाल है अगली गेंद के लिए तो अगली गेंद देखते हैं फैजल। यहां पर कुछ हुआ है जरूर मुजीब के लिए, गेंद को इस वक्त रोकते समय हाफ स्टॉप उन्होंने किया था और शायद वहां पर गिर गए थे कुछ, इस वक्त उन्हें वहां पर चोट आई है, शायद अजहर है वहां पर कुछ हद तक उन्हें चोट आई है और कुछ उपचार के बाद वो अपने पैर पर हाथ धरे हुए इस वक्त तो इस वक्त 3 फील्डर बाहर। तो यहां पर अब
4 गेंदें बाकी हैं, 12 रन चाहिए विजय के लिए और केवल 3 मात्र क्षेत्र रक्षक अब 20 गज के दायरे के बाहर। तो ये वक्त है सतीश यहाँ पर इस वक्त अंतिम 4 गेंदों में कमबैक करने का यंग फ्रेंड्स उर्वा को। Absolutely, Gopi. This is a penalty, and if you are not following the time sense with a stipulated time, which is already over, so that as far as continuation of that penalty, of course, once it's a one fielder going to be asked to come inside the ring. Now, once again, that's 2 fielders inside the ring. Extra 2 fielders inside the ring need to keep on. That means not more than 3 fielders outside the circle, and wait and see how well Prasad will going to capitalize this opportunity. Of course, always Gopi, when this particular condition, this kind of the fielding restriction will going to help the chasing team. It will make a big impact. That was going to be a lesson for the teams. They need to play that, need to pay the concentration or the time sense. बिल्कुल सतीश, ये एक सबक है खिलाड़ियों के लिए जो टाइम सेंस का पालन नहीं करते। तो यहाँ पर 4 गेंदें और 12 रन चाहिए। ये गेंद इस बार गेंद को चला स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड, गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑन पर और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एंड द मैच इज नाउ स्टिल अलाइव, 8 to get from 3 deliveries. What a fantastic stroke came from the bat of Prasad now. It just leaving the wicket and lofted that one, clearing the infield. और यहाँ पर 3 खिलाड़ी जो सिर्फ 20 गज के दायरे के बाहर है उसका फायदा उठाते हैं। तो बेहतरीन स्ट्रोक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्ट्रोक। क्यों सतीश? One of the best stroke, Gopi. Once it's just look at when the only 3 fielders outside the circle. This is one of the best stroke to play because very difficult to station the field set for that lofted straight drive. One of the most delightful stroke cricketing stroke and one of the most safest stroke to play. And Prasad is just inside out cricketing stroke, making a little room to play the shot and lofted that one down to deep long on for 4 runs, Gopi. Now the match is just like you mentioned, match is still alive because the runs required 8 and deliveries remaining 3. One big shot, very next ball will going to change the complexion of this match. Exactly सतीश, क्रिकेट इज अनप्रेडिक्टेबल गेम। इसका उदाहरण हम यहाँ पर दे सकते हैं क्योंकि क्रिकेट में अभी भी कहना मुश्किल है, जबकि 3 गेंदें बाकी है तो अभी भी कहना मुश्किल है कि विजेता कौन होगा। तो यहाँ पर प्रसाद इस वक्त उम्मीद की किरण इस वक्त दिखाई देते हुए यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए। और यहाँ पर देखते हैं अगली गेंद पर फैजल किस तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर अपनाते हैं। तो फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए और इस वक्त यार द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रसाद इस वक्त सामना करते हुए फैजल की इस गेंद को इस वक्त क्या करेंगे, स्वीप कर चुके हैं इस वक्त, शॉट फाइन लेग पर गेंद पहुंच चुके हैं, नॉट मोर देन अ सिंगल लेग बाय। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 55 पर, 7 रन चाहिए, 2 गेंदें, 5 के विवर्स। इस श्रृंखला का मुआयना इस वक्त करते हैं जो बेद्रा मीडिया इस वक्त लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। 5 के विवर्स आर नाउ वाचिंग दिस मैच विच इज टेलीकास्टेड बाय बेद्रा मीडिया ऑन यूट्यूब। तो 2 गेंदें 7 रन, 6 for tie, 7 for win, 2 balls left and still the match is now alive. Strike इस वक्त अल्ताफ बसवनगुडी, one more good striker of the ball, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार फैजल की गेंदों का। और फैजल इस वक्त दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए लगभग पावर प्ले का माहौल इस वक्त लग रहा है। 6 फील्डर इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद हैं और जहां तक सवाल है इस वक्त है फैजल का गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी लेकर फैजल इस वक्त तैयार और अल्ताफ भी तैयार। तो फील्डिंग में इस वक्त फिर से जमावट करते हुए शॉर्ट थर्ड बैन के फील्डर, एक फील्डर जो मिड ऑन पर खड़े हुए थे उन्हें थोड़ा सा वाइडर तैनात किया गया है मिड विकेट पर मंसूर को। और फिर से एक बार फैजल इस वक्त तैयार। Here we go, 2 balls, 7 runs, 6 for tie, 7 for win and फैजल बाउल्स। इस बार गेंद को ड्राइव किया, गेंद जाते हुए एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को, दूसरे रन के लिए तो और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो absolutely fantastic struck from Altaf for body into the gap, just inside out cricket he played and finds the gap as well, and this is an absolutely Altaf Baswanagudi struck. So this is an ये चौका मैं समझता हूँ सतीश अब अंतिम क्षण में मैच को लगभग बराबरी पर ला चुका। 3 रन चाहिए, 2 for tie, 3 for win. Anything will happen in the final delivery of this match. Absolutely, Gopi. Anything can be possible. And what a fantastic struck there from Altaf Basavanagudi, isn't it? Powerfully struck, Gopi. Powerfully struck. And the drawback here for NM cricketers Mangalore is that only 3 fielders outside the circle, Gopi. Once the ball is past the out circle, then it's going to be a boundary because very difficult to stop
top the boundary because it's just look at the batting power play is going on. Only 3 fielders outside the circle. Difficult condition for NM Cricketers Mangalore, Gopi. Now 3 to get from last ball, 2 for the tie. If the match will go into end it in a tie, then super over will go into decide the winner of this match. एग्जैक्टली सतीश, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है. लास्ट बॉल 3 रन. एक बार फिर से मंसूर दौड़ कर आए. जैसे ही गेंदबाज ने गेंदबाजी शुरू करी, मंसूर दौड़ कर आए, उन्होंने कुछ कहा. इस बार इस वक्त जैसा कि आपने कहा सतीश, सिर्फ 3 खिलाड़ी बीसीएस के दायरे के बाहर है, तो ये एक प्लस पॉइंट है इस वक्त यंग फ्रेंड्स उर्वा के बल्लेबाज अल्ताफ बसवनगुड़ी के लिए. अंतिम गेंद, द मैच डिसाइडिंग बॉल कम. 3 ऑफ लास्ट डिलीवरी, 2 for tie, 3 for win, and Faisal bowls. Here we go. Dainat over the wicket. Again इस बार चूके गेंद पहुंची इस बार शॉर्ट एक्स कवर पर. 1 रन मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े. यहाँ पर थ्रो पहुंचा लेकिन यहाँ पर नहीं बच पाए और इसी के साथ एनएम मैंगलोर आर won the match by a single run. Absolutely fantastic match came to an end. Kya Satish? What a match, Gopi. What a match. This is what kind of the competition the crowds wanted to see between these two very good teams. But winning and losing is a part of cricket, Gopi. But NM Cricketers Mangalore as well as young friends Urwa played a fantastic game of cricket. And this is a nail-biting finish and close encounter and thrilling finish for just a single run. And at last, NM Cricketers Mangalore managed to win this match with a close encounter. Congratulations for NM Cricketers Mangalore, and Imtiaz is holding the now in the little correction. Faisal is holding the now in the last ball by bowling around the legs of batsman and keeps Altaf Basavanagudi from the contact with the bat and the deserved victory of our NM Cricketers Mangalore. Congratulations NM Cricketers Mangalore and thank you very much everyone. Thank you. So man of the match of this match, the award goes to the batsman who batted brilliantly, scored valuable 34 runs in just 18 deliveries with a strike rate of 190 plus. Azim of NM Mangalore adjudged the man of the match for his fantastic knock, magnificent knock off, explosive knock off 34 of just 18 deliveries with a strike rate of 190 plus. I request Mr. Azim to please go on to the right of the stage of our ground and receive the man of the match award from Mr. Shabir. I request Mr. Shabir to please distribute the man of the match award for Azim for his wonderful knock off 34 in just 18 balls. Thank you.
ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶಬೀರ್ ಎನ್ನಮ್ಮ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮಜೀದ್ ಸೂರಿಂಜೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛ ಹಾಗೂ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಶಬೀರ್ ಎನ್.ಎಂ ಫಾರ್ your contribution for the success of this cricket tournament, and on behalf of all cricket lovers, on behalf of organizer, we'd like to welcome you for this prestigious cricket tournament. Thank you very much. Thanks a lot. So thank you very much. Welcome back for the match number for the match number 3, and Team Matrix after winning the toss. A little bit correction. Brothers Makyar winning the toss elected to field first, so that Team Matrix the first ball itself, it's a drop catch, so that life would straight away for the batsmen of Team Matrix. Munna bowls outside the run of off stamp, and batsman going for the drive but misses it completely, and there is no chance at all for any run. 2 without loss of any wicket in the over number first is in progress. Munna from the BMR end, right arm over the wicket, bowls, they're going for the drive, and this time before Santosh from the short mid wicket region to field the ball. Ample time for the batter to complete the single. With that single, Souhardha moves on to 3 on the board. 4 on the board, lip correction, without loss of any wicket. Mohsin and Safan, the 2 batters, are in the middle. Try to get some good start for the Team Matrix. Here is the right arm over the wicket, bowls, going for the drive, but couldn't manage to get the placement and timing right. But still, it's going to be a single here for the batsman Safan, and Souhardha moves on to 5 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. After that thrilling finish in the previous match, NM Cricketers Mangalore through to the next round of this prestigious Souhardha Trophy 2023. Munna again, right arm over the wicket. This time, what a shot! This is maximum. He just muscles that one. Absolutely one of the biggest 6 of the day. What a shot that one from the batsman Mohsin. He's just hammering it down to wideish long on boundary for a youth 6. 11 in the first over, and a very good start here for Team Matrix. ಈಗಾಗಲೇ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಉತ್ತಮ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಈ ಒಂದು ಉರ್ವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದುವೇ ಬರುವ ಮೇ 3 ಮತ್ತು 6 ತಾರೀಕಿನಂದು ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ಇವರು 2ನೇ ವರ್ಷದ 3 ಮತ್ತು 6ನೇ ತಾರೀಕು 3ರಿಂದ 6 ಅಂದರೆ 3, 4, 5, 6 ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಇವರ 2ನೇ ವರ್ಷದ ನೂತನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ದಿವಂಗತ ಆಸ್ಟಿನ್ ಮೊಂತೆರೋ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವು 3 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ದಿನಾಂಕ 3 ಹಾಗೂ 4ರಂದು 16 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. 8 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಗದು ಬಹುಮಾನ 30,333 ವಿಜೇತರಿಗೆ, ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 15,555 ಹಾಗೂ ನೂತನ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ 5,000 ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ 5 ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಡೆಯಲಾಗುವುದು. 10 ತಂಡಗಳು 8 ಓವರ್, 20,222 ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ 11,111 ರೂಪಾಯಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ನೂತನ್ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. The start of the second over, Aziz bowled a wide delivery, so that Souhardha was on to 12 on the board.
ಹಾಗೆ ದಿನಾಂಕ 6ರಂದು ಆಯ್ದ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಯ್ದ 8 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. This time Flum, absolutely Flum in front of wicket, no doubt at all. Aziz strikes with a fantastic off cutter and batsman Safwan wanted to go for the stroke against the line of the delivery, pays the penalty for that. It's a 12 for the loss of 1 wicket. ಸೊ 8 ತಂಡಗಳು 10 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಇವರ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟವು ಅದು ಸಪರೇಟಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅದು ಕೂಡ ಅದು ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಆಯ್ದ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಆಯ್ದ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ 10 ಓವರ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವ್ ದ ಬೈ ದಿ ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ organizing the 10 hours game as always going to be a very good move because if you wanted to get the good cricket, I think at least the 10 hours must be a very good move by the organizers of Nutan Champions Trophy 2023. ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಆಯ್ದ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ 7,000, ನಗದು ಬಹುಮಾನ 40,444 ಮತ್ತು ನೂತನ ಟ್ರೋಫಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 15,555 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ, ಉತ್ತಮ ಶತಗಾರ, ಉತ್ತಮ ದಾಳಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. 3 ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. So Anil is a new batsman and is a very talented left-hand batter. Just came into middle and he will go into face Aziz. For Anil there is a short fine leg, there is a square leg, short mid wicket, short mid on. There is no mid on actually, mid wicket is there and short mid off. Short extra cover and short third man going for a huge wide and nothing much to do with the delivery. Wide call by umpire. So with the addition of that singles cover Namuzan to 13 for the loss of 1 wicket. ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಈ ಒಂದು ನೂತನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಕೇವಲ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಟ್ರೋಫಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. Here is Aziz bowls. This time tries that one down to deep long on region for easy single. Anil is off the mark with the single. Total score now moves on to 14 for the loss of 1 wicket in the over number 2nd in progress. Team matrix, of course, they are not playing with full strength. They are only playing 10 players. So that it's going to benefit the opposition team. And team Makyar. Right arm over the wicket, bowls. Dies that one. Beautiful shot and very good stop. Munna did Sam stopping that ball. But there is a protection deep in the long on, so that effort which is gone in vain. And because that could be a sudden single, but the Munnas tried to stop the ball. Ball went towards extra cover revision and they got a couple of runs there. That 16 for the loss of 1 wicket. Team Makyar, of course, they won the very important and prestigious title in UCG cricket ground. This time appeal for leg before wicket. Looks like that is a BK Champions Trophy which is organized by Tucker Skudroli, and in that particular tournament Makyar is performed very well, so that in the local pool they came into the finals and performed very well. This time lofted, beautiful shot. This is the power, but long off fielder is in the right position. Long off fielder is in the right position, so that the batsman even muscles that one, but this time he didn't got the distance because he's just playing the stroke against a little bit against the direction of the wind, and he just pays the penalty for that. 16 for the loss of 2 wicket.
And even Team Matrix also got a very good tournament in that particular season. And JD Boys Trophy, they came into the finals. And in the UCG cricket ground also, they performed very well. And so 16 for the loss of 2 wicket. And Aziz strikes twice in this over. And is well deserved these 2 wickets, one in the form of leg before wicket, one at caught at deep long off region. So Little Master just came into middle. Karthik for Team Matrix will go into face Aziz. Very good bowling action. Aziz bowling away from us. Right arm over wicket bounce. This oh my goodness. Looks like he's got the wicket. But luckily that ball is just missing the leg stump. Otherwise it's going to be a third wicket in this over for Aziz. So over number 2 completed. It's 16 for the loss of 2 wicket Team Matrix. So just like I mentioned earlier, today is Monday, but still it's a lot of cricket lovers enjoying the game of cricket. And in our commentary box, we have our close friend, 2 very good umpires. Dinesh Acharya is enjoying the game of cricket in our commentary box. And one more umpire, Shriniket, also here in our commentary box, right of our commentary box, enjoying the game of cricket. And more than anything else, we have our close friend, Musba. Musba is one of the very good player, the legend player during 90s, and is a very good supporter of cricket as well. So he just came here along with his son to get some support and get some entertainment in this prestigious cricket tournament, Souhardha Trophy 2023. Meanwhile, bowling change from the far end. Firoz brought into attack. Firoz bowling. Firoz, it's not Firoz, it's a Firoz. Balls to Anil. Anil misjudging the line of the ball. He thought it might be a wide, but well within the reach of the batsman. And Irshad behind the stumps did the rest and back to bowler. 16 for the loss of 2 wicket in the over number 3 is in progress. Firoz. Balls this time inside out to getting stuck. Ball is in there for a while. And before the fielder from the deep long off region to run across his right to field the ball. Ample time for the batter to pick the couple of runs. Chami is standing at a short extra cover. But ball just going away from him. So here is again Firoz. To Anil. Anil going for the dive, and a fantastic effort there from Irshad. He diving to his front, tried to take the catch. The ball just slipping out of his hand. And unfortunately, that always is definitely is going to be a very good catch if he completes the catch. And the lucky escape here for Anil there, looking for a mighty stroke, but didn't got enough bat onto that. 18 for the loss of 2 wicket. Match number 4 will be played between the Sneha Malemar versus Gori Young Boys. The very next match is a one more good match. A white call by umpire, one more extra. With that extra score, Namuzan to 19 for the loss of 2 wicket in the over number 3 is in progress. Firoz again from the far end. Right arm. Went for the drive. Irshad fails to collect the ball. By call by umpire. With that extra score, Namuzan to 20 for the loss of 2 wicket in the over number 3 is in progress. Sneha Malemar takes on Gori Young Boys in the next match. So that I request all the players of both the teams to complete your signatures as soon as possible. Please get ready for the next match. One more big match is coming up in front of huge spectators. Of course, previous match is witnessing some very good number of crowds. Nicely driven, Karthik down to deep long on. Very interesting to see that the team Makyar has got a lot of players
belongs to neighboring state, neighboring district, Kasaragod district. But only one player is representing against that team. That is Karthik, is representing for Team Matrix. And this time drives that one down to long off region for a easy single. With that single score numbers on to 22 on the board. Over number 3 completed. So good going here for Team Matrix. As far as run rate is concerned, they got 22 in 3 by losing 2 wickets. Lot of cricketing action is coming up in this UCG ground. We are talking about Nutan Friends Trophy, Nutan Champions Trophy will go into commence, and before that one more big tournament is coming up. That is what I am talking about, the Gori Young Boys. The Gori Young Boys will go into organize Souhardha Trophy, and in the memory of late Suresh Bian, and that will going to be a huge tournament, and we are having some the big prizes for that Souhardha Trophy in the memory of Suresh Bian of Gori Young Boys, and cash prize will be of rupees 1 lakh with the attractive trophy, and the runners will going to get 50,000 and along with the trophy. And I request the interested team to kindly request you to enroll the name. There will be 2 groups, Mangalore pool as well as a local pool. Meanwhile, one more single has been taken in the form of leg by, and the scoreboard numbers on to 23 on the board for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. Aziz is in action, who bowled very well the first over with 2 wickets in that over, and now is continuing here from commentary box, and Karthik is a striker. Aziz again, right arm over the wicket bowls. Karthik nicely drives that one down to deep long on region for a single. Very cool Carps customer. Karthik is a useful cricketer. 24 for the loss of 2 wickets. We are talking about the Gori Young Boys who organized Souhardha Trophy, which is in coming 27th and 28th April, and that is of course on Thursday and Saturday. Thursday and Saturday. Thursday will be of local pool, and Saturday for Manglore pool. That is 27th and 29th April, and lot of cricketing action remaining here for the cricket lovers here in UCG cricket ground. The big tournament is coming up. Here is again Aziz bowling away from us. Right arm over the wicket balls to Karthik. Karthik went for the slog sweep shot, but didn't got a bat onto that. Leg by called by umpire. With that leg by scored numbers on to 26 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. Aziz is doing a good job here for Makyar so far. Brothers Makyar has got a lot of experienced campaigners in that side. Those who are from Kasaragod district. Aziz again. Balls beautifully ball, perfect one. Fantastic delivery from Aziz. Really is bowling with some extra pace. With the direction of the wind is getting some help. And this is what you call the using the crop. Using the crop in the sense using the condition of the weather, which is favoring the fast bowler. And getting some extra pace with the direction of the wind. And getting some good line and length. Again Aziz bowls. Samanil looking for the expansive drive, didn't got timing, but enough for him to come back for the second from the second before the fielder from the deep square leg region to collect the ball. Couple of runs, good over complete there by Aziz. After completion of over number 4, Team Matrix are 28 for the loss of a 2 wicket, and before the next over going to start, here is a change in commentary box as well. It's over to Gopi for the further explanation of the match in our national language, Hindi. Thank you very much.
धन्यवाद सतीश. So 28 for the loss of 2 wicket after completion of 4 overs for team metrics against Friends Makyar in the match number 3 of Souhardha Trophy 2023. और पांचवा ओवर लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. फाइरोज गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करते हुए कार्तिक, जो कि एक बेहतर खिलाड़ी, आमतौर पर SNNC का कासरगोड का प्रतिनिधित्व वो किया करते हैं. यहाँ पर टीम मैट्रिक्स के लिए कुछ समय से वो इस वक्त खेलते हुए ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में खूबसूरती के साथ गेंद को स्वीप कर दिया. और जहाँ तक कार्तिक का सवाल है, टैलेंटेड प्लेयर, प्रतिभाशाली खिलाड़ी, और जहाँ तक सवाल है पिछले कई दिनों से वो टीम मैट्रिक्स का प्रतिनिधित्व करते हुए, और जहाँ तक सवाल है इस वक्त स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज का, तो सामना करने के लिए इस वक्त तैयार अनिल. और गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज फिरोज दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार चिप किया गेंद को, लेकिन नॉट क्वाइट मिडलिंग इट एट द लास्ट मोमेंट एंड बिफोर इट वाज कलेक्टेड एट टेक्स्ट कवर. द बैट्समैन हैव गॉट अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू क्रॉस ओवर फॉर द सिंगल. और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 30 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. और 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. और गेंदबाज इस वक्त अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन इस बार विकेट गिर चुका है. कार्तिक की पारी समाप्त. He's got a deflection on that at the last minute. He's got a toppage on that, I think so. And wicket keeper completely taken just behind the stumps, and that is the wicket number 3. It's 30 for the loss of 3 wicket in the over number 5 in progress. नासिर का आगमन हो चुका है नए बल्लेबाज के रूप में, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. तो नासिर इस वक्त सामना करते हुए और दाहिना हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछाला है, गेंद लंगोल फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को लपकने में सफल. गेंद को उछाला था जरूर नासिर ने, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा गेंद में इतना पर्याप्त दम नहीं था कि वो सीमा रेखा को पार कर सके और लंगोल सीमा रेखा के अंदर इस कैच को लपक लिया गया. तो इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है 31 रनों के योग पर. तीसरा विकेट गिर चुका है. पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में नासिर की पारी समाप्त हो चुकी है. इट्स 30 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. तो नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त बल्लेबाज शास इस वक्त मौजूद और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. स्वीप करना चाहा, इम्प्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में. एक रन दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं. इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 32 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. इट्स 32 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 in progress. Still a ball left in this over.
और फिरोज गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए शाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार गेंद को इस वक्त रिवर्स शॉट खेलना चाहा, अंतिम क्षण में अपने निर्धार को बदल दिया, देखा कि गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही है, वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 34 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 34 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और फिरोज इस बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए इस ओवर में अंतिम बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा चूके और गेंद विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर फील्ड कर लिया। 5 ओवर की समाप्ति, 34 रन बन चुके 4 विकेट के नुकसान पर और एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज टीम मख्यार के और टीम मैट्रिक्स इस वक्त रनों के लिए कुछ हद तक संघर्ष करता हुआ 34 रन जोड़ चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। इट्स 34 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स। इस श्रृंखला इस टूर्नामेंट के सफलता के लिए कई महानियों ने अपना योगदान दिया है, उनका नाम इस वक्त मैं लेना चाहूँगा। श्रीमान वेदव्यास कामत, श्रीमान जनाब इनायत अली, जनाब दाऊद हकीम BMR ग्रुप ऑफ कंपनी, जनाब नकीज़ ऑफ रूफटेक, हफीज़ ऑफ रूफटेक प्रोटेक इनफैक्ट, शहद एंड शाहिद कृष्णापुरा, शमीम टोरपडोस खाना, कलंदर वामत पदऊ, आमिर बाम्बिला, हफीफ KFC कृष्णापुर और सरफराज टेकविंग्स। तो इन सब महानियों के लिए हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। इस श्रृंखला के सफलता के लिए उन्होंने सौहार्दा ट्रॉफी 2023 की सफलता के लिए उन्होंने अपना सहकार दिया है। तो यहाँ पर अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, तैनात ऊपर तक विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद अच्छी गेंद थी, एब्सोल्युटली परफेक्ट वन, मच स्ट्रेटर लाइन। और जहाँ तक सवाल है रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मैच, वन मोर गुड मैच इज नाउ कमिंग अप। गोरी यंग बॉयज विल टेक्स ओवर स्नेहा मालेमार in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. अगली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट, इम्प्रोवाइजेशन, गेंद को किया इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर थर्ड मैन की दिशा में, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा लेकिन विकेटें उखाड़े गए विकेट कीपर द्वारा, सिर्फ अपने हाथों से, गेंद से नहीं। तो इस वजह से बल्लेबाज बाल इस गेंद पर बच चुके हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 36 रनों पर। 36 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस इन फैक्ट। तो फील्डिंग इस वक्त अंपायर विकेटों को सही करते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए। बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है, दोपहर के 1:05 यहाँ पर बच चुके हैं और धूप का कहर इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई देता हुआ और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ दर्शक बल्कि खिलाड़ी भी यहाँ पर करते हुए। दाहिने हाथों बढ़ता विकेट, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन फ्रॉम द बॉलर, केम अलोंग द कार्पेट, जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग आफ्टर बीइंग शफलिंग अक्रॉस द लाइन जस्ट अ लिटिल बिट एट द लास्ट मोमेंट, नॉट कनेक्टेड दैट वन और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। मुन्ना एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथों बढ़ता विकेट गेंदबाजी, ये गेंद स्वीप करना चाहा विकेट कीपर चूके और जब तक दोबारा वो गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। इट्स 37 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। तो 2 गेंदें इस ओवर में बाकी है और मुन्ना इस वक्त तैयार, जबकि सामना करते हुए अनिल बाएं हाथ के बल्लेबाज, एक बेहतर पारी अपनी टीम के लिए अनिल यहां पर खेलते हुए और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार मुन्ना की गेंदों का। मुन्ना दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद अनिल के लिए उछाला इस वक्त मिड विकेट पर गेंद जाती हुई और जब तक डीप इन विकेट पर गेंद को फील्ड किया जाता दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, नजदीकी मामला हो सकता था लेकिन निशाना इस वक्त चूकता हुआ और यहाँ पर बैकहैंड थ्रो किया था गेंदबाज ने लेकिन उनका निशाना चूकता हुआ और बल्लेबाज 2 रन आसानी के साथ पूर्ण करते हुए इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 39 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट और फिर से एक बार गेंदबाज मुन्ना इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद अनिल के लिए ड्राइव किया, गुड स्टॉप ऑन इस फॉलो थ्रू बट वोंट प्रिवेंट द सिंगल। 1 रन मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 6 गॉन, इट्स 40 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स।
ಉಳ್ಕಿಡ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಂದ 4 ಲಕ್ಷ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ಕೋರ್ ನಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಂದಿದೆ 10 ಲಕ್ಷದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ तो इस वक्त अंतिम ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ First ball, and this time lofted that one, but can't find the gap. गेंद लंगोफ पर इस वक्त लपक ली गई है और गेंद को उछाला था जरूर स्क्वायर ऑफ द विकेट। तो एक्स्ट्रा कवर पर कहना पड़ेगा, डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के अंदर इस वक्त गेंद लपक ली गई है और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। 5वां विकेट गिर चुका है और बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। और कुल मिलाकर अब उनकी पारी में 5 गेंदें बाकी, जस्ट 5 balls रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। तो इस वक्त नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, ये गेंद हल्के से गेंद को स्टीयर करना चाहा, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 41 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर 41 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिना तो ऊपर द विकेट ड्राइव किया इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल फील्ड कलेक्ट द बॉल जस्ट इनसाइड द फेंस और बल्लेबाज के पास मौका था सिर्फ 1 रन प्राप्त करने का और 4 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी। और गेंदबाज मंजू इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद स्वीप करना चाहा, कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, बिल्कुल जमीन के साथ अलोंग द कार्पेट गेंद आई थी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। तो स्कोर रुक चुका है 42 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिना तो ऊपर द विकेट रिवर्स शॉट गेंद को खेला इम्प्रोवाइजेशन करते हुए, लेकिन नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट और इस वजह से 1 रन मिला इस वक्त। हालांकि ओवर थ्रो वहां पर जरूर हुआ था, लेकिन बल्लेबाज के पास दूसरा रन लेने का कोई मौका नहीं। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 43 रन पर। 2 गेंदें अब बाकी उनकी बारी में, जस्ट 2 balls लेफ्ट इन देयर इनिंग्स। गेंदबाज मंजू इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट मुन्ना के इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर गेंद निकली इस वक्त। विकेट कीपर डाइव लगाने के बावजूद गेंद को फील्ड कलेक्ट नहीं कर पाए और छोटे रन पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन दौड़कर बल्लेबाज पूर्ण कर चुका है। 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 45 रनों पर। इट्स 45 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। 2 गेंदें अभी भी बाकी। मंजू दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए, दाहिने हाथ के बल्ले गेंदबाज की गेंद का ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, नहीं कर पाए, शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद पहुंचे, विकेट कीपर को वंचित करते हुए 1 रन का इजाफा। 46 फॉर 5। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए। मंजू दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद चिप किया जस्ट ओवर द इनफील्ड डाउन टू अ लॉन्ग ऑन। इनफैक्ट दे कम बैक फॉर द सेकंड, स्ट्राइकर इन पर थ्रो पहुंचा और ये विकेट गिर चुका है यहाँ पर। सो विकेट लॉस्ट, विकेट नंबर 6 लॉस्ट इन द फाइनल डिलीवरी ऑफ द इनिंग्स एंड द इनिंग्स इज अप। 47 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। 7 stipulated overs are completed for team metrics and now they set a victory target of 48 for Friends Makyar
So friends Makyar have to score, brothers Makyar in fact have to score 48 runs in 7 overs with the required run rate of just under 7 runs per over. That means in exactly calculation it's going to be 6.83 runs per over they have to score for victory as far as the required run rate is concerned for them at this situation. 48 the target, 48 रनों का लक्ष्य इन 7 ओवर 7 ओवर में बनाने हैं ब्रदर्स मक्यार का और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी चंद लम्हों बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और इस छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब ब्रदर्स मक्यार की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी. धन्यवाद. थैंक यू. So thank you very much, Gopi. 48 target for team Makyar, and wait and see how brothers Makyar will going to chase this total of 48 runs. I don't think it's going to be a huge total, but it's a manageable total. Seeing that the batting department of brothers Makyar are looking so comfortable and so strong enough. And as far as the team matrix is concerned, you cannot underestimate as far as this particular cricket ground, UCG cricket ground is concerned. Team matrix has got a outstanding record of having a fantastic bowling department because they're the one they got a success in their bowling department, so that even the 48 going to be a little runs to chase down, but I think friends Makyar, brothers Makyar has to get some good start if they wanted to win the match. Taslim is a key player and he got a fantastic season from the ball, and who got ability of giving a very good start for his team, and he got a ball in his hand. 10 fielders, only 10 fielders for team matrix. That might be a little bit drawback. The first ball, Irshad wanted to sweep the ball, but this time he's got a single in the form of leg by. No contact with the bat, and first run comes off here for team Brothers Makyar. One without loss of any wicket. Brothers Makyar has got some the players from Kasaragod district, some players from South Kent district,
And this man, he's got a lot of name and fame behind him. He's Chami, who is a very popular name as far as hard hitting is concerned. So experienced campaigner who got experience of playing for some big teams in South Kent district, and he will go into face Taslim. The strong breeze out coming in the middle of the cricket ground, and dust we can see that is coming out of the ground, and the pitch shows that the strong breeze is passing in the ground. And Taslim bowling away from us. Right arm over the wicket to the right hand batsman. Chami this time cuts that one. A slight misfield by the fielder. Chami coming back for the second. Little bit wide throw. Otherwise, it's going to be a chance of run out. Chami is really struggling to get his second run. At that time, the wide throw coming from that fielder so that he survived from the run out. 3 without loss of any wicket. Sneh Malemar takes on Gori Young Boys for the next match. So that I request all the team's players, please complete the formalities of signatures as soon as possible. It's not a constant wind. We can see that this is not a constant wind. Sometimes wind is passing towards the left of our commentary box. Sometimes it's in front of our commentary box. It's very difficult to judge. Taslim, beautifully bowled. You're right on the block holder, and the batsman negotiated very well with the last moment. Chami just putting a bat onto that delivery, and look at that Taslim. He thought he got a huge wicket here, but at last moment Chami is put his bat into the line of the ball, denying that wicket from Taslim. Altogether, it's a very good contest is going on here. 4 without loss of any wicket. Taslim back to his bowling mark. Very accurate bowler as far as the line and length is concerned. This time outside the line of off time, beautifully bowled. This is a weapon of Taslim. Sometimes he can surprise any batsman by his change of line, change of the movement of the delivery is so good. And the slower one, leg cutters, off cutters, quicker one. It's always going to be big weapons what fast bowler wanted to use to restrict the runs, especially when you're bowling the power play overs. Taslim bowls this time again, went for the sweep shot, missed it complete, then wicketkeeper behind the stump did the rest. And very good going here for Taslim. Again, have a look at that one. It's absolutely broken the stumps. That wind which is uprooted the stumps from the ground, and that shows it's how strong wind which is passing here. And it's not the kind of typical weather condition in the month of March, isn't it? Probably in the month of January, February, there's a huge wind passing. But in this season, it's a huge wind we are witnessing in the month of March. Went for the reverse sweep again, not quite getting that one from the middle of the, no bat at all, and leg by call by umpire. Ishaq trying, not getting the ball to his bat. So good over there from Taslim after completion of a very good first over, and chasing 48 to win this match. Skiddy start there from the batsmen of Brothers Makyar. It's 5 without loss of any wicket. So straight away coming back to the equation, 5 deducted from 48. That means 43 more runs required for the victory in remaining 36 balls. It's going to be anybody's game. One big over will going to change the complexion of this match. And the question raising here is that how well Brothers Makyar will going to get that big over, because Team Matrix has got some fantastic bowling department, just like I mentioned earlier. Taslim will going to start proceedings, always is a best bowler as far as the power play over is concerned. Now Nasir is brought into attack to bowl that second and last over of the power play. Deep long on, deep square leg. The two fielders outside the circle. Mid off, short extra cover, short backward point, short third man.
Short fine like mid wicket, short mid wicket. No need to run for that. No need to run for that. Ball running down to deep fine like boundary for 4 runs. Little margin for error when you're bowling in the power play overs. You can't do that mistake by bowling around the legs of the batter. And batsmen like Ishad is they always strong on their off their legs. So easy pick here for Ishad. Just getting that 1-1 to very fine. And once it passes the infield, it's a quick outfield in a UCG cricket ground. Ball racing towards the fence for 4 runs. 9 without loss of any wicket. Hakim, left arm around the wicket. This time, lofted, fielder going back. Anil will going to take the catch. So wicket number first is back in the pavilion. Looks like it's a Nasir Panela who is the one who is running back by just is going back. Looks like he's might be is a little bit struggling there because of extra effort which is given. Extra effort which is given to that catch because he's running back and tried to stop the speed of his run. By doing that, looks like he couldn't manage to control the speed and extra effort which is given to his leg. So he's feeling a lot of pain. So first wicket is back in the pavilion. The huge wicket. The Ishad is back in the pavilion. It's 9 for the loss of 1 wicket. Ali Sneha Malemar. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. I request all the players of Gori Young Boys please be reported here immediately to sign the official chart. Hakim. To Naushad, appeal for leg before wicket. Umpire says not out. Might be that ball has got a bat onto that, or it's ball going down the leg stump, and it's got a bat onto that, and definitely he's got a bat onto that while he's trying to sweep the ball, and loud appeal coming from bowler. But umpire Mohan Ayad is so experienced, seeing that ball he's got a glove or bat while try to sweep the ball, and score remains on 9 for the loss of 1 wicket. Left arm round the wicket balls. Again outside the non-leg stump, going for the sweep shot. Ball is just passing under the bat, so that umpire not interested to call that. Hakim testing the temperament of the batsman Naushad in the second over of the power play. After that boundary which is came in the first ball, it's a good comeback by the bowler. Hakim again against the line, across the line, wanted to get the ball into the long on region, but mistiming the ball, and bowler on his follow through fields the ball and back to his bowling mark. Struggle time continues here from Makyar. The needed one big over, just like I mentioned earlier. 48 it seems to be a small total, but against the good bowling department of Team Matrix, a lot of hard work is required from brothers Makyar. This time going for the swing of the bat, missed it completely by the wicketkeeper behind the stump. One more over completed, 2 gone, chasing 48 to win this match. It's a 10 for the loss of 1 wicket.
So 38 more runs required for the victory. So Taslim to continues and bowled a very good first over and this time nicely rebound down to the wicket region. Fielder behind the ball. Anil behind the ball. Before the throw coming from the deep, they turning out. Wow, Gus gone. He's gone. Taslim celebrating, punching the hand in the air. Why not? Because hitting the ball, hitting that stumps directly, and responsible for the run out here. And Anil, who is one, is returns the ball. Not a good throw, but Taslim almost charging to get that throw from Anil and hits the stumps. A fantastic commitment from Taslim there. Absolutely fantastic. So wicket number 2 is back into pavilion. It's a 12 for the loss of 2 wickets. So 12 for the loss of 2 wicket again. Starter Taslim nicely pushes the ball down to cow point region for a single. With that single, score moves on to 13 for the loss of 2 wicket in the over number 3 is in progress. It's a new batsman in after the dismissal of Naushad. Fairoz will be the striker. Then that's Taslim setting a field. We have Amidaka, one of the senior most cricket lovers as far as the spectator is concerned. Is one of the most popular name. Amidaka is came from long way from Mudabidri to here in UCG cricket ground to witness this Souhardha Trophy 2023, and we welcome him for this prestigious cricket tournament on behalf of organizers, on behalf of all cricket lovers. It's 14 for the loss of 2 wicket in the over number 3 is in progress. Taslim again bowling away from us. Right arm over the wicket balls. This time sensible batting there from Chami. And Chami is a kind of batsman. Its natural instinct is that hitting the ball. And sometimes you know exactly the condition of the game is not that much of suitable to throw your bat. But you need to play the innings where he wanted to construct and takes the chances to get some acceleration in the incoming overs. So this just rotating the strike, right job. It's a 15 for the loss of 2 wicket. Taslim again, right arm over the wicket, delivers. Nicely driven down to extra cover region, just for a single. Good piece of fielding there by the fielder. The 16 for the loss of 2 wicket in the over number 3 is in progress. Oh, there's a possibility of second run there. But Chami almost settled for the single. Is not really aware of that overthrow. Taslim once again back to his bowling mark. Still 32 more runs required for the victory. Is the over number 3 is in progress. Taslim keeping on field in that short fine leg, one at the square leg Karthik, one at short third man, and one at short mid wicket. The 4 fielders inside the 3 fielders inside the ring because they got only 10 fielders. Slashes it hard, but not quite getting that timing behind that slash from Chami. 1 more over completed, 3 gone after completion of over number 3, chasing 48 to win this match. 17 for the loss of 2 wicket, and the remaining 24 deliveries. They need to get another 29 runs, 31 runs to win this match. 31 required from 24 deliveries. And before the next over goal going to start, it's time to change in commentary box as well.
It's over to Gopi for the further explanation of the match in our national language Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो यहाँ पर 17 रन बन चुके हैं। रियल इंटरेस्टिंग टाइम कंटिन्यूइंग हियर फॉर द बैट्समैन ऑफ ब्रदर्स मक्यार। 31 more runs now they have to score for victory in remaining 24 overs. Exactly required run rate is 7.75 runs per over. They have to score for victory. Still they got 8 wickets kept intact. So fourth over starts in their innings और चौथा ओवर लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार धनुष और इस बीच सामना करते हुए बल्लेबाज समीर, जबकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर फिरोज मौजूद और ओवर की पहली गेंद लेकर धनुष। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलते हुए और 4 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। 31 they have to score for victory in remaining 24 deliveries और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। पहली गेंद धनुष दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को इस वक्त खेल दिया शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 18 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर and exactly 30 runs more now they have to score for victory in remaining 23 deliveries। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट धनुष दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग दिस टाइम। सेलिब्रेशंस इज गोइंग ऑन देयर एंड दैट इज द विकेट नंबर 3 नाउ। बाउल्ड आउट के रूप में विकेट गिर चुका है। ऑफ स्टंप पर जाकर गेंद टकराए थे, ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहता चूके और यहाँ पर अपना विकेट गंवाने के बाद बल्लेबाज पवेलियन वापस लौटते हुए ब्रदर्स मक्यार इस वक्त कुछ हद तक संकट की स्थिति में नजर आता हुआ। 3 विकेट खो चुका है सिर्फ 18 रनों के योग पर। Meantime, the next match, one more good match is now coming up. Sneha Malamar will take over Gori Young Boys, and because of that I request all the players of these two teams to please get ready for the next match. Or we are just waiting for the number 5 batsman for Brothers Makyar. Nawaz, the number 5 batsman, is now comes out to the middle for Brothers Makyar. Still they have a long way to go. 30 runs exactly they have to score for victory in remaining 22 deliveries. And as far as the partnership is concerned, the situation for Brothers Makyar, they badly required a good partnership at this stage to get back into this match. और इस बीच गेंदबाज धनुष इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ इस वक्त मौजूद। डीप एक्स्ट्रा कवर इस वक्त ठीक सीमा रेखा के पास तैनात और ओवर की पहली गेंद लेकर तीसरी गेंद लेकर इस वक्त धनुष तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग करना चाह नॉट क्वाइट मिडलिंग इट एट द लास्ट मन। इसको सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। स्टिल द इक्वल बैटल इज नॉट गोइंग ऑन हियर और एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए धनुष अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। This time swings it away, but the ball straight went into the hands of fielder at deep mid wicket. He just collected that one after a couple of bounces, but won't prevent the single और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर। It's 20 for the loss of 3 wickets in the over number 4 in progress. और रन्स ज़्यादातर सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए चाहिए 1 या 2 चौके और छक्कों की इस वक्त ब्रदर्स मक्यार के इस मैच में वापसी करने के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाहा। बेहतर गेंदबाजी, गेंद उनके हाथों पर टकराई और शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में पहुंची, लगभग पैर पर टकराई थी कहना पड़ेगा। इट्स अ लेग बाय एंड विद दैट लेग बाय ऑन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स नाउ। और जहाँ तक का सवाल है इस वक्त
अगली गेंद का। तो इस वक्त अगली गेंद फेंकने के लिए धनुष अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए। एक धीमा क्रिकेट यहाँ पर देखने को इस वक्त मिल रहा है इस दोपहर के इस सनसनाती धूप में। और ऐसा कहना पड़ेगा सूरज आसमान की बुलंदियों की इस वक्त छू चुका है अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला है लंगोल पर, गेंद सीमा रेखा से बाहर हो चुकी है 6 रनों के लिए। Absolutely fantastic effort made by the Longall fielder to push the ball just inside the fence at the last moment, but can't succeeded. And ball after hitting his hand, it went over the steps of the boundary line. 6 runs into the account of Brothers McCarran. With this 6, they are now back in the game. 21 to get from 18 balls now. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಹಿತೈಷಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರಿತೇಶ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವೀಗ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಮಗಿದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್. So 18 balls left, 21 runs more. Now they have to score for victory. And the 5th over starts in their innings. गेंदबाज अनिल इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए और पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर 2 छक्का लगा था वहाँ पर समीर के बल्ले से। वो छक्का इस वक्त काफ़ी हद तक ब्रदर्स मक्यार को इस मैच में वापस ला चुका है। और 5वां ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ अनिल गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट ये गेंद इस बार स्वीप किया इम्प्रोवाइजेशन करते हुए, रनआउट का खतरा और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। गेंद कहां गई है इसे बिना देखे हुए रन लेने की जोखिम उन्होंने उठाई, लेकिन गेंद गई थी सीधे फील्डर के हाथों में, कार्तिक जो कि स्क्वायर लेग पर खड़े हुए थे। और इससे पहले कि बल्लेबाज क्रीज पर वापस लौटे सीधा थ्रो पहुंचता हुआ कार्तिक का विकेट कीपर के हाथों में, विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट चटका दी और चौथा विकेट गिर चुका है। 27 रनों पर 4 विकेट गिर चुके। इट्स 27 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। So the new batsman is now comes out to the middle, number 6 batsman मंजू। और इस वक्त गेंदबाज अनिल गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए 17 balls left in the innings, 21 more runs now they have to score for victory. Absolutely fantastic battle is now going on here. और गेंदबाज इस वक्त यार ये गेंद इस बार that is an absolutely good one this time. धीमी लेग कटर गेंद थी, बिल्कुल जमीन के सामने आई। गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 27 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए मंजू ये गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार उछालना चाहा अंतिम क्षण में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ। तो मंजू इस वक्त 2 गेंदों को खेल चुके हैं, लेकिन रन्स कोई भी उन्होंने इस वक्त नहीं बनाया। अनिल एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए 15 गेंदें बाकी हैं और रन्स चाहिए 21।
तो एक बार फिर से फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट चलती हुई और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार हल्के से कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, जस्ट गॉट राइट बिहाइंड द लाइन ऑफ दैट बॉल एंड ड्रिवन दैट वन परफेक्टली। और एक रन इस बीच बटोरते हुए 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 28 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। और इस बीच गेंदबाज अनिल गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए गोरी यंग बॉयज ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು संपर्किसಬೇಕಾಗಿ विनंती। और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार चिप किया, गेंद हवे में, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और आखिरकार जी नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। नासिर वहां पर फील्डर थे और लेकिन जी तोड़ कोशिश करने के बावजूद गेंद तक नहीं पहुंच पाए। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था सिर्फ एक रन प्राप्त करने का और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 29 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। पंडित ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು। तो अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक इम्प्रोवाइजेशन एंड he's got a boundary for that. Perfect struck came from the bat of the batsman and with that boundary the batsman just kept the hopes alive for brothers Makyar। स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 33 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 overs completed, 33 runs on the board, 4 wickets lost and 15 to get from 12 balls now। और मंजू का जो स्ट्रोक पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर लगा था विद रिवर्स शॉट उनके उम्मीदों को इस वक्त बरकरार रख चुका है। 15 रन चाहिए 12 गेंदों में। तो इस बार नया ओवर प्रारंभ हो चुका है। पहली गेंद बेहतर गेंद थी और इस गेंद पर रन यहाँ पर नहीं बना। 15 रन चाहिए, 11 गेंदें बाकी और गेंदबाज इस वक्त धनुष गेंदबाजी यहाँ पर शुरू कर चुके हैं। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े गेंदबाज, पहुंचते हुए फॉलो थ्रू में थ्रो पहुंचा स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचा बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। लेग बाय का इशारा यहाँ पर और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 34 रनों पर। 10 गेंदें बाकी है, 14 रन चाहिए और मंजू इस वक्त स्ट्राइक पर वापस आ चुके हैं। तो समीर पिछली गेंद पर ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं। मंजू इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार और गेंदबाज धनुष अपनी ओर की अगली गेंद। 10 गेंदें बाकी, 14 रन चाहिए। द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा शफल होते हुए, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। चूंकि स्ट्रोक्स खेलने में और गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 34 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए धनुष दाहिने हाथों पर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, एक बार फिर से चूके कंसेक्यूटिव डॉट बॉल्स। अब 8 गेंदें बाकी, 14 रन चाहिए। 14 runs to get from 8 balls now. The equation seems to be stiffer now for brothers Makyar। कम से कम एक चौके या छक्के की इस वक्त जरूरत इस मैच में वापसी करने के लिए बल्लेबाजों को ब्रदर्स मक्यार के। अगली गेंद, ये गेंद इस बार चूके पैरों पर टकराई, सडनली गोइंग डाउन द लेग साइड एट द लास्ट मोमेंट और स्क्वायर लेग पर जब तक गेंद फील्ड हो 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 35 रनों पर। 7 गेंदें बाकी, 13 रन चाहिए और समीर इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं और एक बेहतर पारी जो समीर इस वक्त खेलते हुए। ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ। ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಓವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಟ್, ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಟೇಕನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ और समीर
कि एक बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है। गेंद को उछालना चाहा, उछाला भी, लेकिन फील्डर के हाथों में पहुंची लॉन्ग ऑन पर, और इस विकेट के पतन के साथ विजय की उम्मीदें और कम होती हुई इस वक्त ब्रदर्स मक्यार के लिए। 35 for 5, 6 overs completed, 13 runs to get from last over. So 13 they have to score in remaining last over. और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। तो इस बीच गेंदबाज मैच निर्धारित ओवर शुरू होता हुआ अनिल गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए। 13 रन चाहिए ब्रदर्स मक्यार के लिए और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हिट, नॉट सक्सीडेड एंड कलेक्टेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। द स्कोर बोर्ड स्टेज 35 और इसी के साथ स्टिपुलेटेड टाइम इस वक्त समाप्त हो चुका है और एक फील्डर को इस वक्त अंदर बुला लिया जा रहा है। 5 गेंदें बाकी हैं, 13 रन चाहिए विजय के लिए और केवल 4 मात्र खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के बाहर इस वक्त तैनात और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार चिप किया लेकिन फील्डर वहां पर कोई मौजूद नहीं। 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन पूर्ण यहां पर कर चुके हैं। ऐसा कहना पड़ेगा, नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट बट ही गॉट अ कपल रन्स फॉर दैट। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर एंड 11 more runs they have to score for victory in remaining 4 balls. ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. बाएं हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार गॉड इज आउटसाइड इट, डाउन टू अ थर्ड मैन, कलेक्टेड बाय द शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर। 38 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट, 3 balls लेफ्ट एंड 10 more runs they have to score for victory. 3 गेंदे 10 रन। ऐसा कहना पड़ेगा ब्रदर्स मक्यार को इस वक्त सिर्फ चौके या छक्के ही इस मैच में वापस ला सकते हैं। तो फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई और गेंदबाज अनिल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। संतोष जो नए बल्लेबाज इस वक्त आए उनको गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद लेग स्टंप पर आती वाइड वाइड। 39 for 5, 9 runs to get from 3 deliveries. Still the match is now live और पहला वाइड इस वक्त फेंक चुके टीम मैट्रिक्स के गेंदबाज उनकी पारी में। तो ये बात ये दर्शाता है कि कितनी नपीतुली गेंदबाजी इस वक्त उन्होंने की है। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, 1 रन मिलेगा इस बीच और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 40 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 2 balls left, 8 runs required. So तो तो 2 गेंदे 8 रन, 2 balls 8 runs required और अंतिम गेंदबाज अनिल इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला है लॉन्ग ऑन पर लेकिन यहां पर गेंद लपक ली गई है और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। अगर ये स्ट्रोक छक्के के रूप में परिवर्तित होता तो ब्रदर्स मक्यार इस मैच में वापस आ सकता था, लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके। अंतिम गेंद बाकी, 8 रन चाहिए। अगर गेंदबाज अंतिम गेंद पर कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते हैं तो यहां पर टीम मैट्रिक्स की विजय निश्चित है। So in the next match, Sneha Malemar after won the toss, they elected to field first against Gori Young Boys in the match number 4 of Souhardha Trophy 2023 और इस मैच में सिर्फ 1 गेंद बची हुई है। 8 रन चाहिए, 8 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट बॉल और गेंदबाज को इस वक्त गेंदबाजी करनी है एक सही गेंद और
मैच की अंतिम गेंद लेकर अनिल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, बाएं हाथ राउंड द विकेट, right delivery, that's it. 7 runs victory for team Matrix against Brothers Makyar, and with that 7 runs victory they are through to the next round of this tournament. So the next match will be played between one more good match is now coming up. Sneha Malamar will take over Gori Young Boys, and that match starts within just a short while. So man of the match award goes to Anil of Team Matrix, who scored 10 valuable runs and captured 1 wicket, conceding 11 runs in his 2 overs. And because of this good bowling and batting performance, he bagged the man of the match award. Anil of Team Matrix, please go to the stage and receive the man of the match award from the organizers. And we'll be back right after the short break with Satish in English. Thank you. Dhanyavad. Welcome back. Good afternoon, cricket lovers, and we are back into the one more the big match. Sneha Malamar versus Gori Young Boys. Two very good teams will go into
compete each other for the next place. And after this match will be played between Deadly Boys Kankanadi versus Zaman Boys Kaladka. So that I request all the players of two teams, please be reported here immediately to sign the official chart. ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಹಾಗೂ ಜಮಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So all set now for the platform, and it's a great match, a good match. Two very good teams. Goryang Boys takes on Sneha Malamar after winning the toss. Captain of Sneha Malamar elected to ball post, and Dilip will going to start the proceedings for Sneha Malamar from the commentary box. And right arm over the wicket bounce to Riaz. Riaz drives that one down to deep long on for a walkable single. With that single, Riaz is off the mark. And Naufal is back into strike now. Two very experienced campaigner for Goryang Boys. Riaz as well as Naufal wanted to get some good start for the team. This time, first ball itself, Naufal's intention is very clear that he wanted to get the advantage of the fielding restriction. Across the line, he wanted to swing that one, misses the line completely, and wicketkeeper behind the stump. Pratap did the rest. Back to bowler. Dilip again, bowling away from us. Right arm over the wicket bowls. This time outside the line of off stump, too far, so that umpire Mohan Ayade has got evidence enough to get that one, to signal that one white signal. So with that extra score, but Namozanto 2 on the board, without loss of any wicket. This time across the line, swings that one, didn't got enough bat onto that. Of course, the intention is very clear, but this time Naufal not happy with himself that the line of the delivery, which is suitable to play that shot, but he didn't got enough timing in that shot. This time tossed up delivery, Yorker line delivery, the next time chance of run out. Fantastic work done by Rizwan down at short core point region. Picks the ball in his right hand, tried to make the run out in the non-strikers, and that time I think Naufal struggling to reach his home, and fortunately for him that ball misses the stumps. Naufal got his first run, 3 on the board. This time Riaz lofted that one, ball is in there, fielder taken, catch down at deep long on. Ranjit the fieldsman there, the deep long on, completes the catch. Riaz departs for very cheaply. He is out for one. Caught at deep long on. Bowled up the bowling of Dilip. It was absolutely shackling start. It's a 3 for the loss of 1 wicket, Goryang Boys. So for first wicket is back into Pavilion. Riaz of Goryang Boys couldn't manage to make any kind of impression from his bat, as he's looking for the big shot on the onside region, but the placement is not good enough.
So he's back into back into pavilion. Now Deepak walking towards the middle. The very good left-hand batsman Deepak. Yesterday, the Kulai Premier League, which is comes to an end, season 5, Deepak, his team is becomes a runner-up. Is represented for VR Warriors, led by Shivaraj of Goryang Boys, and Pratap is behind the stamp. Is one more player for that runner-up team. VR Warriors. This time, oh, that ball is very close to the off stamp. It might be the huge wicket if Dilip able to hit the stumps. A good over there from Dilip. Very good start there from Sneha Malamar. After completion of over number, the first searching for the right track. It's a 3 for the loss of 1 wicket. ಜಮಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಮಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ, ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟು ಸೈನ್ ದ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಟ್. Gitesh is a one more successful player in that Kulai Premier League who got a best batsman of the tournament, scored a 96 runs in the tournament. Now he's bowling from the far end. Right arm over the wicket and wanted to swap that one. Of course, the slog sweep shot, one of the favorite stroke of Naufal. Again, he didn't got enough bat onto that because line of the delivery, which is outside the line of off stamp, and he picked up a single for that. With that single, Souhardha moves on to 4 on the board for the loss of 1 wicket. This time ball is in there. 1 more wicket is back into pavilion. Loose stroke played by Deepak in that occasion. He wanted to get that one over the top of the infield, but he's just played that one away from his body too much and didn't got enough timing, and ball is just gone into the hands of cover point fielder. Huge wicket now again for Sneha Malamar. Goryang Boys once again starts badly. 4 for the loss of 2 wicket. So new batsman in for Goryang Boys, and the new face looks like he's got a single down to deep extra cover region. With that single, Souhardha moves on to 5 on the board for the loss of 1 wicket. Afreed is a new batter. This time far outside the line of off stamp, wide signal umpire. With that extra, Souhardha moves on to 6 for the loss of 1 wicket. Coming back to this team, Sneha Malamar in this particular season, they once become the champion, the tournament which is played at Shakti Nagar. That Padav Friends organized the cricket tournament Padav Trophy. And Goryang Boys so far in this particular season, 2 times they becomes the champion. One is a huge amount of 1 lakh cash prize that is in Mudabidri. And then the last week at Krishnapura, Goryang Boys become the champion. This time lofted that one. One more catching practice here for the same fielder Ranjit down at wideish long off. The wickets are tumbling here of Goryang Boys. Absolutely irresponsible cricketing stroke there from the batter
Now fall after seeing that two very big wickets are back into pavilion. He has to anchor the innings, being the senior most player of the side. He just played an irresponsible cricketing stroke and he pays the penalty for that. And Sneha Malamar looking in a commanding position now. It's a 6 for the loss of 3 wickets are back into pavilion. 3 huge wickets are back into pavilion. So 6 for the loss of 1 wicket. Gitesh strikes with a huge wicket. Really, it's a huge wicket of no fall. Is back into pavilion. So next ball outside the run of off stamp. They're going for the quick swing. Chance of run. Oh, wide throw. If it is a very good throw, it's going to be a chance of run out. Ravi Patayuru is having a throw, but it's a wide throw, and the batsman survives. Afraid survives. One more over. Good over completed by Sneha Malamar. Completion of over number 2, searching for the right trap. Goryang boys are started very slowly and they lost 3 wickets for 7 runs what they got. And just like I mentioned earlier, so many cricket tournament will going to commence in this particular cricket ground. Already I announced in the memory of Suresh PN, there will be a cricket tournament, a huge cricket tournament. 2 days of cricket tournament. That is the commenced on April 27th and 29th in the name of Souhardha Trophy and the sweet memory of late Suresh Bian of Goryang Boys organized a huge tournament, a big tournament. The cash prize of rupees 1,50,000 for the runner-up with the attractive Souhardha Trophy 2023. Meanwhile, start of the over now. This time, Tyagaraja lofted that one right in the vacant area. And before the fielder from long on region to run across to his right, misfielded there by the fielder. And welcome boundary coming up here for Goryang Boys. Tyagaraja is a mighty striker of the ball. Even he's played that one against the direction of the wind, but he played that one right in the gap. And long on fielder might be a little bit late to react to that the fielding where he was trying to cover the ground from deep long on to wideish long on, and ball running down to deep wideish long on boundary for 4 runs. Welcome boundary comes up here for Goryang Boys. 11 for the loss of 3 wicket. Again a bowler bowling right arm over the wicket. This time again going for the slash and picked up a single. Well for the loss of 3 wicket. This time Ranjit bowls right on the block hold, a little bit outside the line of off stump, and afraid that try to take that one in the pull, but it's a low full toss, very difficult to dry the ball when for the low full toss, and he just wanted to take that one in the off volley, but he takes that one in the pull, picked up a single there, and it's 13 for the loss of 3 wicket. Ranjit again bowling away from us. The slower one attempted, but Tyagaraja is ready for that slower one, adjusting the stroke to quite beautifully, leaning into the drive. One of the best striker of the ball, Tyagaraja. When he drives the ball, it's always nice to watch. It's delightful to watch. And again, Ranjit bowls. Oh, beautiful leg cutter in the occasion. Afraid tried to play that one against the line of the ball. Misses it completely, and wicket keeper behind the stump did the rest. Ali mottame Zaman Boys ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. Ranjit again bowls, this time improvise that one down to deep backward point region for a couple of runs by Afraid.
Very good technique is implemented to get that one into backward point region. 2 runs in the last delivery of the over number 3. After completion of over number 3, searching for the right track. And the Gori Young Boys are 16 for the loss of 3 wicket. The over number 3 completed. After that, Souhardha Trophy in the memory of late Suresh Bian of Gori Young Boys, then followed by Nutan Champions Trophy, which is organized by Nutan Friends Urwa in the sweet memory of late Austin Montero and respected father of Rohan Montero, the former cricketer of Young Friends Urwa. And the Underarm cricket tournament will be organized from 3 to 6. And there will be 5 days of cricket tournament will be organized. First 2 days, which belongs to the local pool. This time one more single has been taken there by the batsman Tyagraj. And with that single, scored was on to 17 for the loss of 3 wicket. We are talking about Jitesh. It's ball time, clean him up. What a delivery that one. Afrit completely played that one against the line. You can see that ball is coming almost curving around the legs of the batter and as a leg cutter. But Afrit still tried to play that one against the line of the delivery, tried to post that one. And he pays the penalty for that. A fantastic leg cutter there from Gitesh. And wicket number 4, which is back into pavilion of Gori Young Boys. So it's 17 for the loss of 4 wicket. Very hot, sunny afternoon. It's not an easy one. So that Kiran brought water representment, realizing that it is a very hot condition. Today is not playing in that playing 11 of Sneh Malamar. Very, very friendly and very decent cricketer, Kiran. One of the only few field players who got characters. And is known as the only Kiran. And the Kiran is famously known as the only Kiran. Has brought water for their teammates. Meanwhile, here is a big man. He came into middle. Unni Krishnan, and wait and see how Unni Krishnan will going to get some partnership along with one more very good striker of the ball, Tyagaraj, in the other end. This time again outside the line of off stump, and Unni Krishnan going for the big shot. But not quite able to get that one from the middle of the bat. Ball time, one more wicket. What a fantastic piece of bowling there from Gitesh. Again, the same mistake it is did by his partner Afred. The same kind of delivery, leg cutter, slow leg cutter. And Unni Krishnan early into the stroke, misses the line completely. Being the experienced campaigner of the side, I think it's not a good shot selection. Pays the penalty for that. Gori Young was struggling in the middle. It's 17 for the loss of 5 wickets. So new batsman in is Abhilash. Gitesh picked up a 4 wicket out of that 5 wickets. Outstanding bowling performance from him. This time nicely one side to the answer fielder and Yatin down at short extra cover. Misfielded that one. Opportunities created for the run out. And Abhilash will go in to keep the strike for the next over. 4 overs completed. The Gori Young was still struggling in the middle against the disciplined bowling performance by this Sneha Malamar. It's 18 for the loss of 5 wicket and another 3 overs remaining in the innings of Gori Young Boys. And wait and see how Gori Young Boys will go into bounce back in the remaining 3 overs. 18 balls remaining. At least 25 runs badly required for team Gori Young Boys. And wait and see how well the team Gori Young Boys will go into bounce back in 3 overs. And for that 3 overs, I request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you.
धन्यवाद सतीश. So struggling time continuing here for the batsmen of Gori Young Boys. Just managed to score 18 runs on the board in the first 4 overs with a run rate of exactly 4.5 runs per over. और जहाँ तक सवाल है बचे हुए 3 ओवर का, जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया, कम से कम 25 रन बनाने होंगे बचे हुए 3 ओवर में अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो 5वें ओवर की पहली गेंद इस वक्त स्ट्रोक्स खेलने के प्रयास में चूंकि डॉट हुआ और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. गेंदबाज रंजीत, गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद फुल टॉस, गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहा, गेंद गई ऑफ साइड पर, वाइड स्लॉग ऑफ पर, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड करते फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर. 19 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स. फिर से एक बार रंजीत दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद इस बार अच्छी गेंद, लेग कटर गेंद, नॉट क्वाइट मिडविकेट एट द लास्ट मोमेंट, जस्ट वांटेड टू स्विंग इट अवे ऑन द ऑन साइड, लेकिन इस वक्त गेंद गई ऑफ साइड पर. गीतेश जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. 20 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर. और बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त अभिलाष इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट रंजीत. ये गेंद इस बार चिप किया, गेंद हमें में, फील्डर गेंद तक पहुंच चुके हैं और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है. स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को उछालना चाहता, नॉट क्वाइट मिडविकेट एट द लास्ट मोमेंट, और गेंद कवर पॉइंट पर, ऐसा कहना पड़ेगा एक्स्ट्रा कवर पर से फील्डर दौड़कर आए और काफी तेजी के साथ गेंद पर लप के इससे पहले कि गेंद जमीन पर गिरे. और इस बेहतर कैच की बदौलत अभिलाष की पारी समाप्त हो चुकी है. 6वां विकेट यहां पर गिर चुका है. इट्स 20 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स. And 5th over in progress in their innings. Enough match. 20 for the loss of 6 wicket. So over number 5th in progress in fact. और करना एक और प्रमुख बल्लेबाज गोरी यंग बॉयज की ओर से इस वक्त क्रीज पर मौजूद. दर्शक जो कि मैदान पर इस वक्त देखिए, मैदान के चारों ओर अगर नजर फिराए तो दर्शक इस वक्त दिखाई देते हुए मैदान पर खचाखच इस वक्त भरे हुए हैं. एब्सोल्युटली जैम पैक स्टेडियम. और इस बीच एक बेहतरीन मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ स्नेहा मलेमार और गोरी यंग बॉयज के बीच. और गेंदबाज इस वक्त तैयार, गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए रंजीत दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार. ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर. 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 21 रनों के ऊपर. इट्स 21 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस. एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज रंजीत. और बल्लेबाज को इस वक्त कोई रूम या विड्थ प्रदान नहीं कर रहे हैं कि बल्लेबाज खुलकर स्ट्रोक्स खेल सके. और सामना करते हुए इस वक्त बल्लेबाज त्यागराज. ये गेंद इस बार ड्राइव किया त्यागराज ने स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर. 5वां ओवर समाप्त हो चुका है. 5 overs completed, 22 runs on the board. 4 runs came from this over. One more good over in Sneha Malemar's point of view came to an end. Just 4 runs came from Ranjit's over. And 5 overs after completion of 5 overs, still Gori Young was searching for the right track. It's 22 for the loss of 6 wickets. सो ब्राइट सनशाइनी आफ्टरनून. और बिल्कुल गर्मी की तीव्रता बढ़ती हुई इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ, और जहां तक सवाल है क्रिकेट श्रृंखला का, तो एक प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट, प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए सौहार्दा ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है शाकिर और हकीम ने. निश्चित रूप से ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करते हुए 6वां ओवर शुरू होता हुआ ग्रुप ऑफ BMR एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज दिलीप. और 6वां ओवर शुरू होता. निस्संदेह गोरी यंग बॉयज को कुछ चौके और छक्कों की इस वक्त सख्त जरूरत. पहली गेंद त्यागराज के लिए, चूंकि गेंद बेहतर थी, लगभग जमीन के सहारे आई थी और गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने के प्रयास में चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. एक बार फिर से गेंदबाज की ओर की गेंद, ये गेंद त्यागराज के लिए उछाला, गेंद पहुंची इस वक्त वाइड स्लॉन्ग ऑन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल. और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर. 23 फॉर द लॉस ऑफ
6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। फील्डिंग में जमावट इस वक्त विकेट कीपर प्रताप करते हुए, और इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए तैयार करना। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, इसमें ये दिलीप की गेंद करना के लिए रिवर्स शॉट। That is an absolutely brilliant attempt made by the short third man fielder। और जीतोड़ कोशिश वहां पर की थी, जो फील्डर मौजूद थे वहां पर अश्विन जो फील्डर मौजूद थे, निस्संदेह बेहतरीन प्रयत्न उन्होंने किया, लेकिन अंतिम कार गेंद तक वो पहुंच नहीं पाए। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। करना एक बार फिर से सामना करते हुए, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई बेहतर गेंद थी, नॉट सो मिसिंग 2 पर साथ ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट एंड collected by wicketkeeper behind the stumps and there is no possibility of any run। और फिर से एक बार दिलीप गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद फुल टॉस, just a change of pace at the last moment, up goes the finger from umpire and that is the wicket number 7 for Goryang boys। करना गेंद कौन साइड पर उछालना चाहते थे, धीमी गति की गेंद थी, इस गेंद के धीमेपन को समझ नहीं पाए, गेंद उनके पैर पर टकरा, उनका पैर बिल्कुल स्टंप्स के सामने रहा और अंपायर रोलैंड पिंटो को कोई दिक्कत यहां पर महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। तो 7वां विकेट यहां पर गिर चुका है 25 रनों के योग पर, जबकि 6वां ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। सो द प्रॉब्लम्स आर स्टिल कंटिन्यूइंग फॉर द बैट्समैन ऑफ गोरियंग बॉयज नाउ। फयाज द न्यू मैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और इस बीच गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दिलीप एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए, अगली गेंद, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई और शॉर्ट थर्ड मैन पर, और इस बार निशाना टकरा चुका है, एक और विकेट गिर चुका है। जस्ट गॉन फॉर अननेसेसरी सिंगल एंड बिकॉज ऑफ दैट ही लॉस्ट हिज विकेट इन द फेस ऑफ रन आउट। तो यहां पर विकेट गिर चुका है और इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा समस्याएं और बढ़ चुकी है। द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर गोरियंग बॉयज। ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಜಮಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಹಾಗೂ ಡೆಡ್ಲಿ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಜಮನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಹಾಗೂ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು, ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. So back to this game, it's 26 for the loss of 8 wickets और गेंदबाज दिलीप की गेंद स्वीप किया इस वक्त, not quite middling it at the last moment by number 10 batsman, but he gets in a single for that stroke और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर 6 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुके हैं. 6 overs completed, 27 runs on the board, exactly 4.5 runs per over. The present run rate is now progressing here for them and last over remaining in their innings. So last over starts in their innings और गेंदबाज रिजवान इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट, पहली गेंद, इस बार गेंद को चिप किया, गेंद पहुंची सीले मैदान पर, रन नहीं मिलेंगे. एक और विकेट यहां पर गिर चुका है. जहां पर रन नहीं था वहां पर रन चुराने का प्रयास किया अंसार ने और यहां पर भुगतान उन्हें करना पड़ा अपना विकेट गंवाने के बाद रन आउट के रूप में. 27 for 9 and we are just waiting for the number 11 and the last batsman of Goryang boys. So last batsman is now comes out to the middle. साहिल इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में और त्यागराज इस वक्त नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद है. 5 गेंदें बाकी हैं और जहां तक गोरियंग बॉयज का सवाल है, उन्हें इस वक्त इन बचे हुए 5 गेंदों को
खेलना होगा अपने अंतिम विकेट की मदद से, और जितने भी रन हो बन सके इन 5 गेंदों पर बटोरना होगा अंतिम विकेट की मदद से। तो त्यागराज इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, और देखते हैं त्यागराज अगली गेंद पर क्या करते हैं। रिजवान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। 1 more run added to the total in the face of extras is 28 for the loss of 9 wickets. 5 balls now left in overall calculation in their innings. और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर। दाहिने हाथ के बल्लेबाज त्यागराज जिस वक्त सामना करते हुए, इस बीच रिजवान की ओर की अगली गेंद। यह गेंद त्यागराज के लिए ड्राइव किया मिड ऑन पर, मिसफील्ड, और इस बीच एक रन मिलेगा। एक ही रन मिला त्यागराज को और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस एक रन के साथ 29 रनों पर। 29 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। त्यागराज इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर पहुंच चुके हैं 11 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए। ही इज बैटिंग ऑन 11 त्यागराज, और इस बीच 4 गेंदे बाकी रिजवान के ओवर के, और अंतिम बल्लेबाज साहिल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और रिजवान गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो बढ़ता विकेट, बेहतर गेंद थी, विकेट कीपर चूके, प्रताप चूके, और एक रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। 30 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। और अब कुल मिलाकर उनकी पारी में गेंदें बाकी हैं 3। सो जस्ट 3 balls now left in their innings. त्यागराज 11 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए, त्यागराज बैटिंग ऑन 11 फेसिंग रिजवान। तो इस वक्त अंपायर ने इशारा किया कि स्टिपुलेटेड टाइम, निगदित समय जो कि समाप्त हो चुका है, और एक खिलाड़ी को 20 गज के अंदर बुला लिया गया है। केवल 4 मात्र क्षेत्र रक्षक इस वक्त 20 गज के दायरे के बाहर तैनात पेनल्टी के तौर पर। और इस बीच इस बार ड्राइव किया त्यागराज ने, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। 31 नाउ। मंजुनाथ फील्डर थे लॉन्ग ऑन पर जिन्होंने गेंद को फील्ड किया, और स्कोर 31 रनों पर बढ़ चुका है 9 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रिजवान। गुड वन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन। गेंद बल्लेबाज के पैर के बीच से निकली, रिवर्स शॉट खेलना चाहता चूके, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। 31 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। द स्कोरबोर्ड स्टेज एट द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। साहिल सामना करने के लिए तैयार। रिजवान की गेंद का अंतिम गेंद रिजवान लेकर तैयार। अंतिम बल्लेबाज साहिल के लिए ये गेंद चूके, स्टंप आउट, दैट्स इट। गोरी यंग बॉयज innings is up. They were bowled out for 31 in their stipulated exactly 7 overs, and now they set a victory target of 32 for Sneha Malemar. So fantastic piece of bowling shown by the bowlers of Sneha Malemar, and because of that they are restricted the strong batting lineup of Gory Young Boys for just 31 runs, and now their target is 32 for Sneha Malemar, and 32 the target. And as far as the required run rate is concerned, just over 4.5 runs for what they have to score for victory. That means 32 they have to score in the stipulated 7 overs with the help of 10 wickets. The present equation shows for them, and their inning starts now within a just short while. तो जहाँ तक इस वक्त सवाल है, तो बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन गीतेश ने दिया। 2 ओवर में सिर्फ 6 रन प्रदान करते हुए 4 विकेट उन्होंने प्रदान किए। गीतेश bowled superbly, conceded 6 runs and captured 4 wickets in their stipulated 2 overs quota, and well supported by Dilip who grabbed 3 wickets for conceding just 8 runs in his 2 overs quota. So 32 the target, and their innings now going to start within just a while, and we are taking a short break, and we're back right after the short break with my friend Satish in English when the innings of Sneha Malemar will going to commence. Thank you. Dhanyavad.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಗೋಪಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಲಿಯಾಕತ್ ಆಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಲಿಯಾಕತ್ ಆಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ Souhardha Trophy 2023, and warm welcome on behalf of Souhardha friends for this prestigious cricket tournament. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ 32 ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ಟೀಮ್ Sneh Malamar. That means Sneh Malamar bowlers really did a great job to restrict the opposition. A strong batting department of Goryang boys for just 31 runs and set a target of 32 to be this match. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಜಮಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಉಳಿದಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂದಿನ 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಜಮಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಹಾಗೂ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಉಳಿದಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. So opening batters for team Sneh Malamar, the Ravi Salian Padayuru is in strikers end, and in the non-strikers end Manjunath, two very good striker of the ball. The destructive, the opening batters came into middle for team Sneh Malamar, and Goryang boys, they need to defend the small total, and wait to see how well they will go into defense this small total. First ball. Right above the wicket, outside edge of the bat, ball running down to short third man region. Abhilash, the fieldsman there in the short third man, fields the ball, and there is no question of any run. Fayaz wanted to get a good start if Goryang boys wanted to back into this game. They not only wanted to get one good overs, but sometime the wicket taking the overs was much required for Goryang boys. They wanted to back into this game. Of course, Goryang boys got the record of defending some small totals, especially in the USG cricket ground. Fayaz. Salian, draw lofty that one, down to deep cow point with the direction of the wind. What a shot that from Ravi. This is a Ravi for you, and have a look at that one. More than the stroke which is takes that ball into the fence. Along with that, I think wind really helping that stroke to get the distance. Unbelievable stucks. While the time of the batsman Ravi hits the ball, that same time the wind which is passing towards the direction of that stroke, and ball travels out of the boundary line into the spectator gallery for a huge six without loss of any wicket. Fayaz. Balls to Ravi. Ravi this time tried to cut that one, but not quite getting that one from middle of the bat, and a short third man fielder fields the ball, and there is no chance at all for any run. Of course, it's a friendly condition as far as in this Souhardha Trophy is concerned. This condition, the wind condition, always favoring the batters to get the distance. Again, going for the off drive, well within the reach of the batsman. Good comeback here by Fayaz. Quickly learning from his mistakes. Not to bowl the off volleys. This time, of course, width is offered, but along the carpet and along some extra pace in that ball defeats the bat of Ravi. Fayaz again. Right above the wicket. Helicopter shot comes into play. Ravi, the master of playing that shot. Wrist work. Using his strong wrist quite nicely down to deep long on region for a single. With that single scored numbers on to 7 on the board without loss of any wicket. Sometimes it's very disappointing to watch Goryang boys. Some great players fails to perform. This time Manjunath wanted to get that one into backward point region by playing the switch it, but missed it completely. Good comeback here by Fayaz. Excluding that 6, he considered only single run.
But Ravi is really made the difference in that first over by hitting one glorious extra cover drive. And 7 without loss of any wicket, chasing 32 to win this match. Sneha Malamar. I request the two teams captain please be reported here. I request the captain of Zaman Boys Kalladka please be reported here for the toss. Zaman Boys Kalladka ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮೆಗಾಗಿ. ಜಮಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ತಮಗಾಗಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Ansar brought in attack. So good young boys coming back to the performance, especially when they're performing in this usage kick ground. This particular season is not really good for Gori young boys, especially the performance is concerned in the last 3-4 prestigious tournaments. The performance which is not really up to the mark. Ansar brought in attack from the BMR end. Right arm over the wicket to Ravi. Ravi this time tried to force that one. Incoming delivery. The Ravi's favorite shot, of course, the mid wicket and long on. One of his strongest scoring zone. This time Ansar bowled a pretty good delivery which is coming into the batsman. And Ravi mistimed that one. This time across the line, swinging that one down to this leg boundary for 4 runs. One bounce into the fence. Too clever, isn't it? Ravi is very clever, seeing that the direction of the wind is good enough for him. If he got enough bat onto that, ball will go into travel with the direction of the wind. Even though he didn't control that slog safe shot, but the wind which is really helping that strokes to get that into the fence. One bounce. So 11 without loss of any wicket. Ansar again. This time again, reverse stroke comes into play. Long chase here for Abhilash. They're turning out for the third, and Unnikrishnan returns the ball, and Ravi completes the third run. Excellent running between the wicket there from these two batters. Manjunath is very tall enough. For tall players, it's very easy to run between the wicket. 14 without loss of any wicket. Manjunath will go into face Ansar. Manjunath is on strike now. Ansar bowls. That time Manjunath going for the expansive drive on the offside region. Misses the line completely. Then wicketkeeper behind the Samuni Krishnan off stops the ball, and the score remains on 14 without loss of any wicket. Ansar. Ball day. Oh my goodness, I thought he's got the wicket here, but ball is hitting the leg of Unnikrishnan. Very close to the leg stump, isn't it? By call by umpire. That ball just missed the stump by a whisker. Absolutely fantastic stump. Fantastic stuff there from Ansar. Lucky for Manjunath is the bowler just misses the stumps. 15 without loss of any wicket. This time Ravi went for the big shot. Ball landed safely between short cover point and backward point. Captain of the side, Gori young boys, Karna fields the ball, and no problem whatsoever. Even Ansar is not giving any trouble for the batters of opening batters of Sneha Malamar. They're cruising towards a victory. 16 without loss of any wicket. Half of the job which is completed in just 2 hours, and they need to complete another half of the job in remaining 5 overs. 5 overs, 16 runs required for the victory. 30 balls, 16 runs required for the victory. It's a difficult condition here for Gori young boys. Unless they're not able to get the wicket, unless they're not able to get some economical over, it's very difficult for Gori young boys to save this match. It's not a performance which you are expecting from Gori young boys after they're becoming the champion last few days back at Krishnapura. Might be sometime when you are in coming to the winning track,
The expectation is very high from the fans of the teams. But this kind of performance will going to disappoint. The first ball, slower one there from Naufal, negotiated very well by batsman Ravi, and is quickly realizing that Naufal bowling a slower one. He sprays it quite nicely down to square leg region for a single. With that single, score moves on to 17 on the board without loss of any wicket. Naufal again, away from us. This time, Flum in front of wicket. Fantastic delivery there from Naufal. And Manjunath thought that it might be a off cutter, so he's wanted to play that one in the onside region, long square leg region, against the line. But ball pitched in a line, slight leg cutter, pitched in a leg stamp, and going to hit the midland off stump. And the right call from umpire Mohan Ayadi. It's 17 for the loss of 1 wicket. Sneha Malemar chasing 32 to win this match. So new batsman in is one more fantastic all-rounder as far as present cricket is concerned. If you want to pick some all-rounders, this man will definitely going to get the place in the top 5. As far as the all-rounder is concerned, Gitesh is the name. Is always cricket lovers loves because of its fashion towards the cricket, and more than anything else, he's been a very cool and calm customer. Gitesh will going to face Naufal. And Gitesh is responsible for the dismantling the batting department of Gori Young Boys. Picked up a 4 wicket this time, waiting for the turn of the delivery. Nicely turns that one down to square leg region. And Riaz, before he's moving to his right to field the ball, Gitesh got his first run. It's 18 for the loss of 1 wicket. Ravi, one more batsman, is in a tremendous form. Went for the reverse stroke, quicker one, the faster one, beaten by the pace. One more dotted delivery. Good bowling there from Naufal compared to the previous 2 overs. It's a much better over. Just a couple of runs conceded. Lovely delivery, beautiful delivery, slower one, and perfect delivery to ball to that caliber of the batsman like Ravi, who really loves the ball coming to the bat. When the bowler bowls a slower one, stroke maker always struggles for the slow balls. This time he lofted that one down to Irish long on. There is a fielder in the deep, Deepak there in the deep long on. Good over there from Naufal, and just the 3 runs conceded, and he picked up 1 valuable wicket. So 3 gone, chasing 32 to win this match. Sneha Malemar still are looking in a commanding position. It's 19 for the loss of 1 wicket. Tyagaraja brought into attack to ball from the far end. 13 more runs required for the victory. Tyagaraja starts with the delivery, which is a warm-up delivery of the afternoon. White call by umpire. 20 on the board. 12 more runs required for the victory. Tyagaraja. Short run off round the wicket. Again that wide outside the line of off stamp, 2 consecutive wide deliveries. You can't do that mistake because now run required 11 for Sneha Malemar against Gori Young Boys. Tyagaraja. This time helicopter shot, ball is in there. Oh, ball is landed safely. And ball landed safely between mid-off and deep long off. And Ravi completed single. 22 on the board for the loss of 1 wicket.
This time Gitesh went for the blind stroke. Rarely we are saying that Gitesh is trying for such kind of cricketing stroke. But he missed it completely and there is no chance at all for any run. Gitesh facing Tyagaraj. Ball him, clean him up. Tyagaraj strikes. Gitesh back into pavilion. Man who scored 90 plus runs in the KPL yesterday and becomes the best batsman is back into pavilion. Might be wanted to finish it off things quickly. Just 11 to get, so that he wanted to get a big shot. By doing that, he misses the line completely, but Tyagaraj strikes. It's 22 for the loss of 2 wickets. Now, new batsman coming through the middle, one who got a best bowler award. And in that KPL, he's made a fantastic record of picking off 5 wickets in 5 deliveries. Not only he's got a double hat-trick, but after that, he got 1 more wicket. 5 deliveries and 5 wickets for Pratap. And first wicket is taken, the wicket of Arshad Bajal. And then he picked up 4 wickets in 4 consecutive deliveries. And 5 wickets in 5 consecutive deliveries. One of the record which is recorded in Underarm cricket and Kulai Premier League. 23 for the loss of 2 wickets. Tyagaraj. Right arm round the wicket. One more single has been taken there by the batsman, Ravi. And scoreboard moves on to 24 for the loss of 2 wickets. Bharat, delivery correction, Pratap. His team has become a runner-up yesterday. Nicely flicks that one off his legs down to a square leg region for a single. The wicket single, good over there from Tyagaraj. The wicket taking over, 4 completed, chasing 32 to win this match. Still Sneha Malamar is looking in a commanding position there in a driving seat. 25 for the loss of 2 wickets. So coming back that over which is bowled there by Pratap in the yesterday, not yesterday, it is a Saturday, day number 1 of KPL. First ball he bowled a single run taken by the batsman. After that, remaining 5 deliveries, he picked up 5 wickets. It's a rare record. If you see in international cricket, only Gary Sobers has got a record of getting 5 wickets in 5 deliveries, consecutive deliveries in 1964. And Pratap, he picked up 5 wickets in the 5 consecutive deliveries. Oh, beautifully bowled there by Naufal. Naufal looks like he's bowling the same bowling action where he was bowling in the 30-over format of the games. He's going for the drive. Picked up a single there by Pratap. With that single, scored moves on to 26 on the board for the loss of 2 wickets. Just one big shot is required. 6 runs which is required for the victory. Edging it down the third man region, boundary for 4 runs. Pretty ordinary effort there from the fielder at short of fine leg. Couldn't manage to move to this right. Down to deep third man boundary for 4 runs. This time ball is gone into the fence, 1 bounce. That's it. The match which is finished in a style. Ravi finished the match. And a comprehensive victory here for Sneha Malamar, defeating very formidable Gori Young Boys by 8 wickets. And by 2 over 1 deliveries to spare. And a comprehensive victory. So that congratulations Sneha Malamar for their outstanding performance, defeating Gori Young Boys. Hard luck Gori Young Boys. They need to correct the mistakes what they did in this particular match. And a little bit disappointment, dismissal here for Gori Young Boys. Expectation is very, very high, but Sneha Malamar defeating in all the format, batting, bowling, and the fielding department, and deserves the victory. Now it's the time to announce the man of the match award.
So time to announce the man of the match, and man of the match which is goes to man who responsible for dismantling the batting department of Gori Young Boys. It's one and only Geetesh of first name Malamar, who judged as the man of the match for his 4 wickets. And may I request Geetesh to collect your man of the match from our chief guest in our main stage. Four big wickets for Geetesh, and his bowling figure is 2 overs, no maiden, 6 runs, and picked up 4 valuable wickets. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡದ ಸಂತೋಷ್ ಜಪ್ಪು ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ಜಪ್ಪು ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಗೀತೇಶ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗೀತೇಶ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಜಮನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಹಾಗೂ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈ 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಬೀಗದ ಕೀ ಒಂದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದೊಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಆಕ್ಸಿಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಕೀ ಒಂದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದೊಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
तो यहाँ पर मैच शुरू होने जा रहा है। एक और बेहतर मैच डेडली क्रिकेटर्स कंकनाडी और जमन बॉयज का लड़का के बीच। और जमन बॉयज का लड़का ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। गेंदबाज दाईनाथ ओवर द विकेट। दाईनाथ के बल्लेबाज के लिए पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के स्टंप के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो असगर और लतीफ आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी पर उतर चुके हैं। असगर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाईनाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी। दाईनाथ ओवर द विकेट। ये गेंद एक बार फिर से लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। कुल मिलाकर पहला ओवर उनके पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। दाईनाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाईनाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। ये गेंद इस बार चिप किया गेंद को वाइड स्लॉग ऑन पर गेंद जाते हुए और जब तक वहां पर गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। इट्स 1 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर फॉर डेडली बॉयज कंकनाडी इन द और बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त गेंदबाज करते हुए और लतीफ जो कि बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। नौफल गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज लतीफ के लिए। नौफल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार ड्राइव किया जगह बनाते हुए नॉट क्वाइट मिड विकेट। इनफैक्ट दे गॉन थ्रू फॉर अ क्विक सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। इट्स 4 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। निस्संदेह जहाँ तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है डेडली बॉयज कंकनाडी के लिए एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त सख्त ज़रूरत। और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई पैरों पर टकराई स्क्वायर की दिशा में गेंद पहुंची। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर। धीरे धीरे अपनी सही लय रिदम को प्राप्त करते हुए इस वक्त गेंदबाज नौफल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। लगभग मैदान के चारों ओर दर्शक इस वक्त दिखाई देते हुए और इस बीच नौफल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाएं हाथ राउंड विकेट। ये गेंद चिप किया खूबसूरती के साथ स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए। Absolutely perfect struck. His hit that was straight down the ground in a flatter manner and he's got the distance as well. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 2 अंकों पर यानी 11 रन बिना किसी नुकसान के। बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर लगता हुआ बल्लेबाज लतीफ के बल्ले से। और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी। एब्सोल्युटली गुड वन। लिटिल बिट वाज स्लोअर डिलीवरी कंपेयरिंग टू द प्रीवियस वन और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद डेडली बॉयज कंकनाडी टॉस हारने के बाद जमन बॉयज का लड़का के खिलाफ 1 बॉल लेफ्ट इन द प्रीवियस ओवर। तो 11 रन बिना किसी नुकसान के यहां पर बन चुके हैं। First 2 wides, then 1 single, next 1 single, 1 leg by, and a 6 and a dot.
So still one ball left इन दिस ओवर। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज नो फॉर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। तो इस बीच दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन came along the carpet and went into the short fielding fielder's hand. Over number first has been came to an end. 11 without loss after completion of first over scored by डेडली बॉयज का कनाडी। 11 रन पहले ओवर में बन चुके हैं और एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर डेडली बॉयज का कनाडी कर चुका है। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी पर उतरा था वह जमन बॉयज कल लड़का के खिलाफ। तो 6 रन इस वक्त जुड़ चुका है, 17 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। और इस छक्के के साथ स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर। तो अगली गेंद का इंतजार है इस वक्त और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। इमरान इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फुल टॉस, इस बार गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ वाइड लॉन्ग आउट की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 18 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और इस बीच बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार लतीफ और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ऑफ द टॉस गेंद को इस वक्त मोड़ दिया स्क्वायर लेग की दिशा में। इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, दे कांट गॉट एनी सेकंड रन फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 19 रनों पर। इट्स 19 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। इमरान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और इस वक्त कुछ हद तक शंकास्पद बॉलिंग शैली के लिए इस वक्त अंपायर कुछ कहते हुए अंपायर गेंदबाज को शायद सस्पिशियस बॉलिंग एक्शन और इस वक्त चेतावनी जो कि देते हुए। और जहां तक सवाल है बल्लेबाजी का, तो इस वक्त बल्लेबाजी आगे बढ़ाते हुए असगर दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाज इमरान गेंदबाजी करते हुए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार दिस इज गॉन मेनी माइल्स, यस इट डज, इट्स अ ह्यूज वन, just connected that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style। छक्का इस वक्त जुड़ चुका है और इस छक्के के साथ स्कोरबोर्ड छलांग लगाकर पहुंच चुका है 25 रनों पर। 25 6 नंबर 3 came from the bat of असगर इस वक्त छक्का नंबर असगर तीसरा छक्का इस वक्त लगाते हुए और ये गेंद अगेन दिस टाइम आई थिंक इट्स क्लियर डिफेंस। 6 नंबर 4 केम फ्रॉम द बैट ऑफ असगर और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है अब 31 रनों पर। इट्स 31 विदाउट लॉस, जस्ट अ सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। और इस वक्त डेडली बॉयज कंकनाडी एक बेहतरीन शुरुआत कर चुका है। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा 6 गेंदों में 20 रन बनाने के बाद इस वक्त असगर बल्लेबाजी करते हुए
इस बीच दाहिने हाथ ओवर द विकेट, फुल टॉस, इस बार फॉलो थ्रू में कैच, मुश्किल सा मौका जरूर, और गेंद को गंवा चुके हैं इस वक्त, कैच को गंवा चुके हैं कहना पड़ेगा। और इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति, 31 रन, 31 विदाउट लॉस, 2 overs completed, exactly 15.5 runs per over. The present run rate is now progressing here for them. Next match, one more big match is now coming up. NM Manglore will takes over Torpedoskana. And because of that, I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ NM ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಟೋರ್ಪೆಡೋಸ್ಕಾನ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So 2 overs completed, it's 31 without loss, and still in overall calculation it's going to be 5 overs remaining in their innings. So third over starts in the innings. तीसरा ओवर शुरू होता हुआ कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से, और इस बीच गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए गेंदबाज 22 नंबर जर्सी पहने हुए गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए नई ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार गेंद को खेला, इस वक्त गेंद पहुंची मिड ऑन पर, 1 रन का इजाफा, 32 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर इनफैक्ट। और एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करता हुआ डेडली बॉयज कंकनाडी, और इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज दाहिने हाथ के बल्लेबाज असगर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। निस्संदेह एक विस्फोटक बल्लेबाजी इस वक्त तो दिखाते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, जी जस्ट लीनिंग फॉर दैट एट द लास्ट मोमेंट। जब तक फील्डर गेंद तक पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। डीप कवर पर जो फील्डर खड़े हुए थे, एक बार पहले सोचा कि गेंद तक पहुंचा जाए, लेकिन अंतिम क्षण में अपने निर्धार को बदला और अपने कदम को, अपने दौड़ को रोक लिया और गेंद के पहले टिप्पे का फर्स्ट बाउंस का इंतजार किया, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 33 रन पर 33 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज तौफीक गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, लतीफ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और ये गेंद इस वक्त लेग स्टंप से बाहर and wide declared by umpire, and with that wide run the scoreboard moving up to 34 without loss in the over number 3 in progress. What a fantastic progressing year now for डेडली बॉयज कंकनाडी। और फिर से एक बार गेंदबाज की ओर की गेंद लेग स्टंप से बाहर, गेंद को उछालना चाहा और 1 रन का इजाफा, फॉरवर्ड शॉट लेग पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और लेग बाय का इशारा, और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रन बिना किसी नुकसान के। निस्संदेह एक चिंता का विषय ज़रूर बन चुका है जमन बॉयज़ का लड़का के कप्तान के लिए कि डेडली कंकनाडी के रनों के बहाव को किस तरह रोका जाए, खासकर असगर जो कि अब तक छक्कों की बौछार यहाँ पर कर रहे हैं। ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा और आखिरकार ही जस्ट गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन। एट लास्ट दे गॉट द ब्रेक थ्रू और असगर की बेहतरीन पारी पर पर्दा गिर चुका है। He just gone for a wide swing at the last moment. He's got a gap between his bat and pad, and the ball passed that in that gap and struck to his mid-net of stump. Bills are disturbed, and that is the wicket number 1. 35 for 1, and just a third over in progress in their innings. तो यहाँ पर असगर का आउट होने के बाद नए बल्लेबाज गिरी इस वक्त नंबर 3 बल्लेबाज की हैसियत से क्रीज पर मौजूद है। जहाँ तक गिरी का सवाल है, इस टूर्नामेंट में हैट्रिक चौका लगाने का श्रेय वो प्राप्त कर चुके हैं और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद
फेंकने के लिए तैयार तौफीक, दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज गिरी के लिए ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ इम्प्रोवाइजेशन न करते हुए गेंद को खेला शॉर्ट थर्ड मैन पर, लेकिन नॉट मोर देना सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 36 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर सिर्फ उनकी पारी का प्रगति पर। बाएं हाथ के बल्लेबाज लतीफ़ जो कि एक छक्का अब तक झड़ चुके हैं 9 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए, और अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार तौफीक अपनी ओर की अगली गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर, लेकिन कुछ ज़्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, हालांकि गेंद थोड़ी सी बाहर की ओर निकली थी। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति, 3 overs completed, 36 runs on the board, 1 wicket lost, and 4 overs left in overall calculation in the innings. Next match, I request once again all the players of NM Manglore and Torpedoes Khana please to be reported here to make a sign in the official chart. NM Mangalore ಹಾಗೂ ಟೋರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So 3 overs completed, they are looking in a commanding situation for Diddley Boys Kankanadi. 36 runs they managed to score after their completion of 3 overs. और 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी, और एंड का जहां तक का सवाल है, BMR एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार चौथा ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त चलती हुई, काफी दूर दूर तक का फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त लॉन्ग ऑफ डीप कवर पॉइंट मौजूद, और अपने ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार माजिद। ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज गिरी इस वक्त सामना करते हुए, ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद स्वीप किया इस वक्त, नो गेंद पहुंची इस वक्त स्ट्रेट वर्षन पर, रन के लिए दौड़ पड़े, स्पीड नजदीकी मामला हो सकता है, और इस बार अंपायर ने तृतीय अंपायर की मांग की है। तो यहां पर देखते हैं जब विकेट चटकाए गए थे तब बल्लेबाज अपना बल्ला बैट क्रीज पर लैंड कर चुके थे या नहीं, तो तृतीय अंपायर के लिए इस वक्त काम आ पड़ा है। He's gone. He is backing to pavilion. Giri the man dismissed, and it's 36 for the loss of 2 wicket. He just gone for an unnecessary single, और इससे पहले कि गिरी नॉन स्ट्राइक रन पर पहुंचे, सीधा थ्रो पहुंचता हुआ स्लिम ऑन फीडर का गेंदबाज के हाथों में, हालांकि थ्रो थोड़ा सा ऊंचा जरूर आया था, लेकिन ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद को उन्होंने कलेक्ट कर लिया, तेजी के साथ विकेट चटका दिया, और बल्लेबाज का बल्ला बैट हवे में रहा, और इसी के साथ ये 36 रनों पर दूसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है। तो चौथा ओवर यहाँ पर प्रारंभ हो चुका। 4th ओवर स्टार्टेड, जस्ट शॉट 1 लेगो, और अंपायर इस वक्त कुछ कहते हुए नए बल्लेबाज जो कि इस वक्त मैदान पर उतरते हुए तैफ, और स्ट्राइकर एंड की ओर नॉन स्ट्राइक इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड की ओर कदम बढ़ाते हुए सामना इस वक्त करने के लिए तैयार लतीफ। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई, लॉन्ग ऑफ इस वक्त मौजूद, लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट, कोई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग नहीं, स्क्वायर लेग पर एक फील्डर मौजूद, और कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। ओवर की अगली गेंद
माजिद गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए लतीफ़ के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद लतीफ़ के लिए ड्राइव किया इस वक्त गेंद को मिड ऑफ पर जब तक फील्ड किया जाता सिली मिड ऑफ पर 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 37 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 37 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इन फैक्ट। और नए बल्लेबाज तैफ इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं सामना करते हुए माजिद की गेंदों का। और माजिद इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार जस्ट कॉल फॉर अ माइटी हीव दिस टाइम नॉट सक्सीडेड द लास्ट मोमेंट। प्रीटी गुड वन फ्रॉम द बॉलर जस्ट लिफ्ट ऑफ स्लो डिलीवरी बॉल बाय द बॉलर इन दिस डिलीवरी और इस धीमेपन पर चकमा खा गए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। फिर से एक बार गेंदबाज की ओर की अगली गेंद दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप। द बैट्समैन जस्ट वांटेड टू हिट द बॉल बीट हो गई गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है माजिद का जिसमें सिर्फ यहाँ पर 1 रन प्रदान कर चुके हैं दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार चिप किया गेंद को जस्ट ओवर द मिड ऑफ फील्डर सेट इन फैक्ट एंड कलेक्टेड एट लॉन्ग ऑफ एंड बिकॉज ऑफ दैट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। 1 रन मिला इस वक्त हल्के से चेक किया था अंतिम क्षण में अपने स्ट्रोक को। जहाँ तक सवाल है रनों का तो रन मिले सिर्फ 38 रन 38 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर सिर्फ 2 रन इस ओवर में माजिद प्रदान कर चुके। एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार माजिद दाहिने हाथ राउंड द विकेट लतीफ के लिए। ये गेंद इस बार नॉट क्वाइट मिडली गेट बट ही फाइंड्स द गैप। 1 bounce collected by the fielder. It might is long off in fact. Oh, slight bit of misunderstanding. This time this could be in trouble. Yes, it does. The man dismissed at last. After being completing a single, one of them come back for the second run. No response came from the other end, and because of that, before he reaching to his crease, back and the straight throw came from the wideish long off fielder into the hands of bowler, and bowler after receiving the throw just throwing the ball into the hands of wicket keeper, and wicket keeper just flicking the wickets very quickly, and that is the wicket number 3. तीसरा विकेट गिर चुका है 29 रन बन चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 overs completed 39 on the board 3 wicket lost 3 overs left in overall calculation in the next meantime I once again have to call upon the players of NM Manglore and Torpedoes Corner please to be reported here to make a sign in the official chart. This is the last call for all the players of these 2 teams. So 4 overs completed 39 on the board 3 wickets down 3 overs left और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनकी पारी में क्या होता है। और इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंग्रेजी में सतीश को आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए। आइए सतीश धन्यवाद थैंक यू। So thank you very much, Gopi. It's a 39 for the loss. There. Oh, what a shot! What a shot! Stand and delivered. The magnificent struck. What a powerful striker of the ball. He is looking so confident, so easy for him to deliver the 6. Latif is for you. Second 6 came from the bat of Latif. He's from our neighboring state, Kerala, and he's got 2 sixes already. And 2 sixes with some mighty strokes. Again, right arm. This time one more. This time one more. Absolutely into the square region. What a magnificent striker of the ball, Latif. Just like I mentioned, so easy for him to deliver the 6. There might be, I 100% sure that this is a 7th player. The 7th player was always loves to hit the balls very straight, and he is the one hitting the ball quite brilliantly, and definitely will going to get he will going to win the heart of cricket lovers here in UCG ground. The 50 comes up 50 comes up here for Deadly Boys Kankanadi. Again this time outside the run flag stump.
The bowler quickly realizing that you can't ball on the slot of the batsman. He will going to hit the ball out of the park. So he's bowled outside the line of leg stump. 51 for the loss of 3 wicket. Over number 5 is in progress. Rauf bowling right arm over the wicket. This time going for the big shot, caught and bowled. At last Rauf got the wicket here. He's celebrating his own way, but he's not happy with that wicket, because after hitting 2 sixes, then he got the wicket. That's what he's not happy with himself. But it's a part of cricket. Rauf has got a very good tournament in the last 2 tournament which is played in this UCG cricket ground. Rauf is on the heart of cricket lovers by his fantastic leg spin bowling display. But in this particular match, Latif going after Rauf, quite understandable, because the leg spin ball always easy for the left-hand batsman, because ball almost coming into his bat. When the ball is coming into the bat of the batters, he always loves, and that's why Latif is so easy to deliver. He's a very good striker of the ball, good timer, and gets a lot of power behind the strokes. So 51 for the loss of 4 wicket. One more left-hand batsman came into middle. The man of the match of the previous match, Shamshid. One more player belongs to Kasaragod district. This time nicely driven down to mid whitish long on region for a single. And Shamshid Paivilike is one of the popular name as far as the left-hand batsman is concerned. He's a very good all-rounder. It's 52 for the loss of 4 wicket. Again, a nicely driven down to deep long of region. The speciality of the players in Kasaragod district, every player has got their nickname. Nickname in the sense they're getting their name of their native place. But our friend Mr. Arshad Bajal is in our commentary box doing a different job. And he is in operation as an online scorer. He's a multi-talented. And can I know, Arshad Bajal, what is the name of nickname of yours? Someone is saying that it's a Mickey Mouse. Because yesterday at Kulai Premier League, there is entertainment. The Mickey Mouse getting some entertainment in each and every boundaries and sixes. That time Arshad Bajal is enjoying a lot the dance of Mickey Mouse. 53 for the loss of 4 wicket. Now last but one. 6th over is in progress. Starts with the Spectre White. Big White, right arm over the wicket and a white signal umpire. 54 for the loss of 4 wicket. Over number 6 is in progress. Now fall from the far end. Pass umpire Arish Padil. Balls. The batsman again wanted to get that one into his bat, but again that ball is going away from the right-hander batsman. Consecutive 2 wide deliveries. It is not a good start there from Naufal in the 2nd over. 2 wide balls to start with. 55 for the loss of 4 wicket. Mubarish. Nice driven down to deep cow point region. The protection has been given. Majid, the fieldsman there in the deep cow point region, returns the ball. Samshid wanted a second, but his partner Mubarish not interested, rightly so. Just a single. 56 for the loss of 4 wicket. So that brings Shamshid into strike now. Zaman Boys becomes becomes the runner-up, and that is I think the Tuckers Trophy. Tuckers Kudroli organized cricket tournament. Zaman Boys Kaladka, the first time they are enter the finals in the UCG cricket ground. Straight to the hands of fielder and a soft dismissal. And Samshid wanted to get that one, wanted to play that inside-out cricketing stroke. By doing that, is last moment taking the stroke, and ball went straight to the hands of Imran at short extra cover. He's making no mistake at all. So
Wicket number 4 is back into pavilion. It's 5 is back into pavilion. It's 56 for the loss of 5 wicket. Now falls strikes in his second over. Nizam is the new batsman in. This time improvising that one by playing the switch it down to third man region for a single. With that single score number on to 57 for the loss of 5 wicket in the over number 6 is in progress. So very good score on the board for team Deadly Boys Kankanadi. They really, after got a victory in their first match, defeating their strong opponent, Red Wings, Kunjatbal. Lovely swept shot down to deep square leg region for a couple of runs. Mubarish, once he lost his balance while coming back for the second run, but he's recovered very quickly and he completed a couple of runs. With that couple of runs, scored almost on to 59 for the loss of 5 wickets. Very good crowd watching the game of cricket. Again, nicely bowled there by the bowler Naufal. So even though it's a working day, day number 1 of the week, the Monday, but still we can see that fantastic crowd here. And a very good crowd out here in this UCI cricket ground enjoying the game of cricket. Again, outside the leg stump, punishable from umpire. So that white call by umpire. So I think the strategy from Deadly Boys Kankanadi is that they wanted to get runs as much as possible because they knows that they go playing against Zaman Boys Kaladka. Any runs might be a little bit short against the batting department of Zaman Boys Kaladka. This time I think it's going to be a caught. It's a caught at the short fine leg region because it's a top edge. And batsman, without waiting for the umpire decision, is walking towards the pavilion. And Rashid Baba, one more very cool and calm customer as far as the cricket is concerned. He's taken the catch down at short fine leg region. Is 60 for the loss of 6 wicket and over number 6 which is completed. The last over remaining in their innings. I request the batsman to please occupy the crease as quick as possible. Asif, the wicketkeeper batsman of Deadly Boys Kankanadi, walks towards the middle. And he will be the partner for Nizam. Umpire just showing the times that its fielding team exceeds the time. So stipulated time which is exceeds, so that they have to bring one fielder. They have to bring one fielder inside the ring as far as penalty is concerned. The cover point fielder coming inside the ring. The 5 fielders inside the ring now. Only 4 fielders outside the ring. The first ball, nicely swept that one, but protection is there in the deep square leg. Majid, then the deep square leg division fields the ball. And meantime, Nizam completed a single. With that single, Skopan was on 61 for the loss of 6 wicket. Asif, being the captain of the side of Deadly Boys Kankanadi, is facing his first delivery. Full toss delivery, looking for the sweep shot. They're going for the quick single. Wicketkeeper behind the stump. Azim trying for the run out, but misses the stumps. The batsman toss off for a single. With that single, Skopan was on to 62 for the loss of 6 wicket in the over number last is in progress. Last 4 deliveries remaining. Appeal for leg before wicket. Umpire says yes, absolutely, that ball is going to miss the off stump. Because angle, what you can see that the bowler bowling around the wicket. So ball is angling almost going to miss the off stump.
And 63 for the loss of 6 wicket. The last over is in progress, and this time switch it is comes into play. Plays it just over the top of the infield. Ball running down to deep third man boundary for 4 runs. Quick outfield. Good execution there from Asif, the captain of the side, and scoreboard now moves on to 67 for the loss of 6 wicket. This is one of the highest total score of this tournament, scored by Deadly Boys Kankanadi, and altogether 18 boundaries, 15 sixes which is scored in this tournament. Again, full toss delivery, but batsman bending a lot. Asif, rightly so, and stump out. Asif walking towards the pavilion. Asif is looking for the scoop shot. Ball is just missing the stumps, isn't it? A little bit confusion out here on the kind of decision, and whether it's a no ball or not. So umpire just clarifying. It's a fair delivery because Asif might be is bending a lot. Might be is looking for a scoop shot. That's why umpire Harish Patel rightly so. Because the ball is not too far away from the stumps. Just over the stumps that ball is landed. And that's why umpire Harish Patel not interested to call that no ball. Because whenever you are try to going for the scoop shot on the onside region, and the batsman need to bend a little bit. This time Asif also trying for that, so that the bowler bowled that delivery quite deliberately. So final delivery of the innings is coming up by Imtiaz. Oh, this time absolutely no ball. This time absolutely no ball, and rightly so. Umpire called it no ball, and it's going to be a free hit delivery. 68 for the loss of 7 wickets. This time went for the off drive, missed it completely. That's it. Deadly Boys Kankanadi finished their innings with a fantastic total of 69 for the loss of 7 wicket, and set a target of 72 in this match. Just like I mentioned, today we are having some fantastic crowds here in UCG cricket ground, but ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಯೂಸೇಜ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೈದಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ದಯಮಾಡಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಾರುವವರು ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸೈಕಲನ್ನು ಹೊರಗೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಕಡಲೆ ಇವರು ಕಡಲೆ ಮಾರಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ, ಆದಷ್ಟು ಕಡಲೆಯನ್ನು ಅವರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
match will going to start here, and I request all cricket lovers, please don't leave your place. Enjoy the game of cricket. ಅಲ್ಲಿ ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಹಾಗೂ NM ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಹಾಗೂ ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಕಾನು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಸೊ ಓವರ್ ಟು ಗೋಪಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಕಡಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವೃತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಉರ್ವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಡಲೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಡ್ಲೆ ಸಿದ್ದಿಕ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಫಾಲೋವರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಬೈ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿದ್ದಿಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. धन्यवाद सतीश। तो यहाँ पर बढ़ते हैं। इस वक्त एक लंबा सा लक्ष्य 70 द टारगेट फॉर जमन बॉयज़ का लड़का, और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए इम्तियाज़। तो आरंभिक बल्लेबाज आज़ीम और रशीद बाबा मौजूद है। और जहाँ तक सवाल है, पहली गेंद लेकर इस वक्त इम्तियाज़ गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट। ये इस बार बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, बट लकीली द बॉल डज वेंट जस्ट वाइड ऑफ द स्टंप्स एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर। तो जहाँ तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, तो इम्तियाज़ इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, काफ़ी तेज़ हवा मैदान की दाईं से बाईं और इस वक्त उठती हुई। और इस बार इम्तियाज़ एक बार फिर से गेंदबाजी करते हुए उछाला, स्क्वायर ऑफ द विकेट। फील्डर वहां पर कोई भी नहीं है और गेंद इस वक्त वाइडिश लॉन्ग ऑफ की ओर बढ़ रही है। और जब तक लॉन्ग ऑफ से फील्डर दौड़कर जाकर वाइडिश लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। और इन 2 रनों के 7 रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। इट्स 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। जहां तक 70 रनों के लंबे से लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, इस वक्त एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट, विस्फोटक शुरुआत की जरूरत है यहां पर जमन बॉयज़ का लड़का को। इस बार जब किया स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड, exquisite timings and a straight hit into the wall of commentator box, and absolutely effortless। और इस स्ट्रोक को आपने देखा होगा, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, एंड ही जस्ट प्लेड दैट वन विद अ हेलीकॉप्टर शॉट, exquisite timings, and he's got that one right from the middle of the bat। छक्का इस वक्त लग चुका है और ऐसे ही बल्लेबाजी की इस वक्त जरूरत है। जमन बॉयज़ का लड़का को ड्राइव किया इस बार, एक बार फिर से करारा प्रहार, गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में जाती हुई दूसरे रन के लिए जमन बाबा बच चुके हैं इस वक्त, वरना निश्चित रूप से यहाँ पर ड्रॉबैक साबित हो सकता था जमन बॉयज़ का लड़का का अगर उनका विकेट गिरता है। यहाँ पर 2 रन 10 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, और 70 रनों के लक्ष्य तक जहाँ तक पहुँचने का सवाल है, तो जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका ऐसे ही बल्लेबाजी की इस वक्त ज़रूरत है जमन बॉयज़ का लड़का को, विस्फोटक शुरुआत। और जहाँ तक सवाल है अगली गेंद का, तो गेंदबाज अजीम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा। 1+1 2 रन एडेड टू द टोटल, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 12 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, और अब सामना करेंगे रशीद बाबा, और सामना इस वक्त करेंगे इम्तियाज़ की गेंदों का। ये गेंद इस बार रशीद बाबा के लिए उछालना चाहा, अंतिम क्षण में गेंद उनके बल्ले पर नहीं आई और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के। रशीद बाबा एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार, और इम्तियाज़ इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे
बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडली गेंद, बेहतर 2 गेंदें इम्तियाज फेंक चुके हैं और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 70 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जमन बॉयज का लड़का पहले पावर प्ले ओवर खत्म होने पर 12 रन जोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के। 58 रन 36 गेंदे 36 balls left, 58 more runs now they have to score for victory। और जहां तक अगले मैच का सवाल है, just talking about the next match, one more good match is now coming up right after this match। Manglore will take over Torpedoes Khana, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart। तो इस बीच यहाँ पर गेंदबाजी शुरू होती हुई हमसे दूर वाले छोर से BMR एंड की ओर से, और शमशीद गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार सामना करते हुए इस वक्त अजीम, जो कि पहले ओवर में एक छक्का झड़ चुके हैं और दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। फील्डिंग में जमावट चलते हुए फाइन लेग, शॉर्ट फाइन लेग, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, मिड ऑन, नेक्स्ट कवर इस वक्त मौजूद। शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर 20 गज के दायरे के अंदर इस वक्त तैनात और केवल 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात और कवर पॉइंट भी इस वक्त मौजूद। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइडर दाहिने हाथ के बल्लेबाज अजीम के लिए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया मिड ऑन की दिशा में, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट एट द लास्ट मोमेंट और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है 12 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है तो अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद बेहतर गेंद थी, एक बार नहीं ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर की ओर निकल रही थी और अंपायर ने इसे वाइड घोषित किया और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 13 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 13 विदाउट लॉस। तो बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज इस बार अगेन बिग वन, इट्स गॉन many a miles, 6 runs और दूसरा छक्का इस वक्त आजिम के बल्ले से लग चुका है। जैसे ही गेंद बल्ले से टकराई मैंने अंदाजा लगा लिया कि गेंद सीधे सीमा रेखा को पार करेगी, सीमा रेखा के काफी बाहर गेंद जा गिरी है 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 18-19 रनों पर बिना किसी नुकसान के। अजीम डेंजर रहते हैं। अजीम इस वक्त काफी आक्रामक बल्लेबाज रशीद बाबा की ही तरह बल्लेबाजी वो करते हैं और यहाँ पर बाबा खामोश हैं लेकिन अजीम का बल्ला इस वक्त बोलता हुआ और इस बीच गेंदबाज तैयार शमशीद गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला खूबसूरती के साथ इम्प्रोवाइजेशन करते हुए गेंद जाती हुई बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरा रन भी मिलेगा। इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 21 रनों पर, 21 विदाउट लॉस। गुड प्रोग्रेसिंग हियर फॉर जमन बॉयज का लड़का। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो शमशीद इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त तैयार। यह गेंद इस बार उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट दिस टाइम, नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 21 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर, अपनी अगली गेंद लेकर शमशीद इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस। 6 number 3 for Azim, this time 2 squarer and he's just got the distance now और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 27 रनों पर बिना किसी नुकसान के। तो निस्संदेह एफर्टलेसली प्लेड स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त खेला था एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के के लिए आसिम ने और इस छक्के के साथ स्कोरबोर्ड इस वक्त छलांग लगाकर पहुंच चुका है 27 रनों पर, 27 विदाउट लॉस। जबकि दूसरा ओवर सिर्फ उनकी पारी का यहाँ पर फेंका जाता हुआ शमशीद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद इस बार पैरों पर गेंद टकराई, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, बेहतर गेंद थी गेंदबाज की। ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति 27 रन बिना किसी नुकसान के। दे आर लुकिंग इन ए कमांडिंग सिचुएशन, 27 विदाउट लॉस आफ्टर 2 overs।
ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಟೋರ್ಪಿಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ರೂಫ್ ಟೆಕ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ನಕೀಸ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮೈದಾನದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರೂಫ್ ಟೆಕ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ನಕೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇವರಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ 2023 ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗಿದು ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತಗಳು ಸರ್. So third over starts in their innings. 27. Let's straight away coming back to the equation. 70 minus 27. 43 more runs now they have to score for victory. And now 5 overs left in their innings. 43 runs they have to score in remaining 30 deliveries. This is going to be a high scoring match at this situation. और तीसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ. गेंदबाज तैयार, पहली गेंद रशीद बाबा के लिए ऑन साइड पर स्विंग किया इनटू द गैप एज वेल. गेंद जाती हुई इस वक्त मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच काफी लंबा अंतर है. उस अंतर से गेंद को इस वक्त निकाला रशीद बाबा. हालांकि पावर प्ले पूर्ण हो चुका है लेकिन उसके बाद रशीद बाबा का बल्ला इस वक्त बोलना शुरू हो चुका है और गेंद को इस वक्त चुनते हुए गैप चुनते हुए खेला लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच 4 रनों के लिए. इस बार बिगर वन. दिस टाइम रशीद बाबा फायर्स. हर यहाँ पर रनों की छक्कों की बौछार लगाते हुए अजीम और राशिद बाबा. जहाँ तक 70 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है यहाँ पर विस्फोटक शुरुआत की उन्हें जरूरत है जैसा कि मैंने पहले कहा था और विस्फोटक शुरुआत यहाँ पर दे चुके हैं ये दोनों आरंभिक बल्लेबाज. 31 रन बिना किसी नुकसान के. तीसरा ओवर सिर्फ उनकी पारी का यहाँ पर शुरू हो चुका है और तो पहली विकेट की पार्टनरशिप यहां पर हो चुकी है इस श्रृंखला में. अत्यधिक रन की पहली विकेट की पार्टनरशिप. इस बार गेंद को खेल दिया वाइड स्लॉग ऑन पर. एक रन मिलेगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर. 38 विदाउट लॉस. व्हाट अ फैंटास्टिक ओपनिंग पार्टनरशिप इज नाउ बिल्डिंग अप हियर फॉर जमन बॉयज का लड़का. और एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा. गेंद उनके पैरों के बीच से निकलकर सीधे स्टंप शॉट से कुछ दूरी पर निकलती हुई और इस बीच रन से बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर रुक चुका है. तो यहाँ पर 2 गेंदें इस ओवर में बाकी और जहां तक सवाल है अगली गेंद का ऑफ स्टंप से काफी बाहर वाइड का इशारा. वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर. 39 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. तो 35 रन असगर और लतीफ ने बनाए थे इस मैच में डेडली कंकनाडी की ओर से और 39 रनों की सांसदारी अब विजित हो चुकी है. अब सांसदारी टूट चुकी है और टॉप एज पर गेंद टकराए. विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और बेहतरीन पारी का अंत हो चुका है यहां पर अजीम का. 39 for 1. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸವಾಜ್ ರೂಫ್ ಟೆಕ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ನಕೀಸ್ ರೂಫ್ ಟೆಕ್ ಮಾಲಕರು, ಅದೇ ರೀತಿ F3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸಜ್ಜದ್, ಈ ಮೂವರು ಅತಿಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಕೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ರೂಫ್ ಟೆಕ್ ನಕೀಸ್ ರೂಫ್ ಟೆಕ್ ಇವರಿಗೆ ಜಮಾಲ್ ಪುಂಚಮೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶವಾಜ್ ಇವರಿಗೆ ಶಿಫಾಜ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂವರು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗಿದು ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತಗಳು ಸರ್. ಈಗಾಗಲೇ ಮೂವರು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. तो यहाँ पर स्कोर इस वक्त 40 रन, 40 for the loss of 1 wicket. Just a third over completed. In fact, 3 overs came to an end, 40 runs on the board, 1 wicket lost. They are looking in a commanding situation. 30 runs required in remaining 24 balls. Required run rate exactly 7.5 runs per over. और ऐसा कहना पड़ेगा एक घातक गेंदबाजी की जरूरत है इस वक्त डेडली बॉयज कंकनाड़ी के गेंदबाजों को यहाँ पर कम बैक करने के लिए. फिलहाल तख्ता जमन बॉयज का लड़का का भारी लगता हुआ और गेंदबाज जो कि गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए हमसे दूर वाले छोर से निज़ाम और चौथा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ जमन बॉयज का लड़का की पारी में सामना इस वक्त करते हुए नए बल्लेबाज इमरान का आगमन हो चुका है. रशीद बाबा नॉन स्ट्राइक पर मौजूद है. एक बेहतर पारी आजिम के समाप्त हो चुके. 24 रन उन्होंने बनाए 12 गेंदों पर. आजिम ने 200 स्ट्राइक रेट की मदद से और यहाँ पर 200 स्ट्राइक रेट की औसत से 24 रन बनाए 12 गेंदों पर आजिम ने. और एक बेहतर पारी खेलने के बाद अपने पेविलियन वापस वो लौट चुके हैं. तो चौथा ओवर शुरू होता हुआ निज़ाम ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. इमरान इस वक्त सामना करते हुए तैनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट लेकिन आफ्टर फर्स्ट पॉइंट कलेक्टेड बाय द फील्डर एट कवर पॉइंट. जस्ट अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है. कुल मिलाकर 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 41 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर. इन फैक्ट और निज़ाम फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए. रशीद बाबा इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार. 11 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त रशीद बाबा. और इस बीच निज़ाम गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई. वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 42 रनों पर. इट्स 42 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. 28 more runs. Now they have to score for victory. गेंदबाज की गेंद इस बार effortless. This is gone all the way. Absolutely effortless. और गेंद को जिस तरीके से भेजा जैसे ऐसा कहना पड़ेगा कमान से जो कि तीर निकलता है उस तरह. देखिए किस तरीके से यहाँ पर have a look at this in the replay. Effortless. Just stand and delivered. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 48 रनों पर. एक बार फिर से इस बार जमीन के सहारे गेंद को खेला. गेंद पहुंची डीप मिड विकेट पर. एकमात्र रन मिलेगा इस वक्त. 49 now. 21 runs now they have to score for victory in remaining 21 deliveries. The equation seems to be a much easier now for Zaman Boys का लड़का. और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार उछालना चाहा इमरान ने. रशीद बाबा दौड़ आए. इमरान के लिए खतरा हो सकता है. थ्रो उनकी ओर पहुंचता नॉन स्ट्राइक रन की ओर और इस बार दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े. 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं. The 50 comes up for Zaman Boys का लड़का. 51 now for the loss of 1 wicket. Just 19 to get in 2.2 overs. 3.2 overs in fact. 20 balls left. 19 more runs now they have to score for victory. और गेंदबाज निज़ाम इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट. ये गेंद बेहतर गेंद थे. इनसाइड एज जस्ट ड्रैग डाउन टू द स्टंप्सों पर गेंद को खींच लिया. और इसी के साथ इमरान की पारी पर पर्दा गिर चुका है और दूसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है. और इमरान आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए. देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था. ऑफ स्टंप पर आई हुई गेंद थी. इस बार बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद स्टंप्स ऑफ स्टंप पर टकराई. गिल्लियां बेस्ट डिस्टर्ब होते हुए और कुल मिलाकर 51 रनों के ऊपर दूसरा विकेट गिर चुका है. 51 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. और यहाँ पर नए बल्लेबाज का इंतजार है. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬದಿಗೆ ಸರಿಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸಜ್ಜದ್ F3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸಜ್ಜದ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿಫಾಜ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಜ್ಜದ್ ಇವರಿಗೆ ಶಿಫಾಜ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. So single run added, 52 now, and 4 overs completed. They are looking in a commanding situation. 18 to get in remaining 3 overs. That means in 18 balls, and the situation equation seems to be much easier for them. देखते हैं क्या होता है, लेकिन तख्ता जरूर भारी लग रहा है. और यहाँ पर 5वां ओवर शुरू हो रहा है, और 5वां ओवर इससे पहले कि शुरू हो माइक्रोफोन पर आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए अंग्रेजी में मैं अपने काबिल दोस्त सतीश को बुलाना चाहूँगा आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए. धन्यवाद. थैंक यू. ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Thank you very much, Gopi. So, what a batting display from Zaman Boys Color Ka. They're knowing for the batting display, and even 70 runs are really becomes very easy for them. But job which is not yet over. I have to get 18 runs in remaining 18 balls. Shafiq. Right arm balls. Went for the drive. Outside edge of the bat. They're going for the single. Overthrow comes into play. They're coming back for the second. Everything is going in favor of Zaman Boys Kalarka. But quite disappointed to see Delhi Boys Kankanade after getting a huge total, one of the highest total of this tournament, 69, but still it becomes a very small total for Zaman Boys Kalarka. Shafiq. This time a half-hearted chip, opportunity for the fielder, but he drops the catch. Just a single there. With that single, Skopana moves on to 55 for the loss of 2 wicket. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಕೂಡಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. One more single has been taken. Rashid Baba looking so good in this match. But I think more than Rashid Baba, Azim is the man who really changing the complexion of this match, as always. What a player. Nicely driven down to mid-wicket region for a single. The batsman Tasleil is so good off his legs and plays it beautifully down to mid-wicket for a single. 57 for the loss of 2 wickets. Zaman Boys Kalarka is looks like it's once it's in I'm talking about the team of Sri Lanka, the international cricket, when Kaluvitarana and Jayasuriya, the two destructive opening batters, destroying the bowling act of every opposition. And here is a wicket back into pavilion. Rashid Baba is back into pavilion. It's 57 for the loss of 3 wickets. And one more wicket is back into pavilion. Wicket number 3 is back into pavilion. But very interesting statistics in this fall of wicket is that every 5th ball of the over, they lost the wicket. Every 5th ball of the over, they lost the wicket. And here also, in the 5th ball of this over, Shafiq got the wicket of Rashid Baba. But a very good innings comes in and then from Baba. It's a typical Baba for the spectators. 17 runs in just 9 deliveries. But Azim is the one who scored 24 valuable runs in just 12 balls. One of the most dangerous team, Zaman Boys Kalarka. I'm just mentioned about in the World Cup when Sanath Jayasuriya and Kaluvitarana is taking advantage of the fielding restriction in the power play overs. The similar kind of batting performance
from Azim and Rashid Baba. Nicely driven down to deep long on region. And one more single. It's a good over compared to the previous last 5 overs. This is a better over. And compared to 4 overs, this is a better over. 58 for the loss of 3 wicket. 12 runs required for the victory in 12 balls. After this match, one more big match is coming up. So we already witnessing some chief guests for this prestigious Souhardha trophy. Sawaz of Rooftech, the Nakis of Rooftech and Sajjad of F3 Sports already they arrived here. They enjoying the game of cricket because they wanted to witness the next match. It's one of the biggest match of this tournament. Torpedoes Khana versus NM Cricketers Mangalore. The toss which is completed, Torpedoes Khana won the toss and a nice one rocketing towards the fence. What a shot! All the players of Zaman Boys Color Cup, so easy for them to dispatching the ball to the boundary. Effortlessly played and placement is so good in that occasion. And the ball running down to deep long on boundary for 4 runs. 62 for the loss of 3 wicket. 8 more runs required for the victory in 11 balls. Nizam balls wide outside the non-back stump and wide single umpire Rajesh Padil. 63 for the loss of 3 wicket. Absolutely entertainment day for cricket, for the cricket lovers. Witnessing some outstanding batting performance, some unbelievable catching performance, some very good saves. Again the wide plus 1 run. Quite a disappointment, disaster for Deadly Boys Kankanadi. 65 for the loss of 3 wicket. Definitely it's going to be a disappointment because they scored a valuable 69 runs. But still they are not, looks like not enough. Again the wide ball. And again the extra runs. 66 for the loss of 3 wicket. One of the highest total score of this tournament which is scored by Deadly Boys Kankanadi. But they fails to depend at one of the highest total of this tournament. This time going for the drive. Taslim. Luckily that ball just misses the off stump. Just 4 runs required for the victory for Zaman Boys Kaladka. This time again went for the big shot. Again there is opportunity of run there, but Taslim is not interested. He wanted to finish it off the things quickly, but by doing that he couldn't manage to get the right technique to get the ball to his bat. Again outside of off stump and going to be a one more dotted delivery. Good comeback here by the bowler. Nizam. 4 more runs required for the victory. Over number 6 is in progress. This time drives that one down to deep long on region for a single. So with that single score moves on to 67. 3 runs required from 7 balls. Taufik back on strike. This time Taufik drives that one down to mid-wicket region. They're running hard. They completed a couple of runs. The scores are leveled. Can they come back for the third? No, not interested. They have to wait for the next over to get the victory run. So 6 completed. After completion of 6, scores are leveled. Zaman Boys Kaladka are 69 for the loss of 3 wicket. Now Asif, the captain of the side, always not gets a chance to bowl, but here is only 1 run to get the victory, and just the number of Asif is 1, and against him wanted 1 run in 1 over. So 1 over, 1 run required, and just the number 1 Asif is bowling the leg spin delivery and a finish of the things in a style. Taslil lofted that one out of the park. And a comprehensive victory here for mighty Zaman Boys Kaladka. Absolutely mighty.
69 runs to 70 to chase this run in 7 hours, but they finished the things in 6.1 deliveries by 7 wickets to spare. Disappointment finish for Deadly Boys Kankanadi. Batted very well, but bowler not giving any support, and disappointment finish. But it's all up to that batsmen of Zaman Boys Kaladka, knowing for the hard hittings, and leading from the front Azim, who starts very well as always, scored 24 valuable runs in just 12 deliveries. Then Rashid Baba, as always, is contributed from the bat. Then Tasleel and the another batsman complete the formalities of getting the winning runs. Now it's a time for a short break. After a short break, we are straight away coming to the big match, Torpedoes Kana versus NM Cricketers Manglore. Man of the match of this match award go to ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಜಮನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲರ್ಕ ತಂಡದ ಆಸಿಮ್ರವರು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ತೆರಳಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಜ್ಜದ್ F3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಜ್ಜದ್ ಇವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಜಮನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ ಕಲ್ಲರ್ಕ ತಂಡದ ಆಜೀಬ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ತೆರಳಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಜ್ಜದ್ ಇವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए बल्लेबाज आरंभिक बल्लेबाज आसिफ और आजीम इस वक्त, जबकि गेंदबाज शरण इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और बिल्कुल दर्शकों से खचाखच जो कि मैदान भर चुका है। एब्सोल्युटली जाम पैक स्टेडियम। देखिए मैदान की चारों ओर अगर नजर फिराए तो दर्शक ही दर्शक यहाँ पर नजर आते हुए और निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा फेस्टिवल ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का त्योहार यहाँ पर मनाया जा रहा है। फेस्टिवल एटमॉस्फेयर, क्रिकेट का वातावरण, त्योहार का वातावरण यहाँ पर छा चुका है और एक बेहतरीन मैच इस वक्त शुरू होने जा रहा है एनएम मैंगलोर और टॉर्पेडोस काला के बीच में। और इस बीच टॉर्पेडोस काना ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है और इस तरीके से पहली गेंद मैच की आसिफ अड्डूर सामना करते हुए शरण की गेंदों का। पहली गेंद दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची पॉइंट की दिशा में, एक रन मिलेगा, वहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस एक रन के 7 रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका। एक रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर। शरण इस वक्त फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए और अपनी अगली गेंद फेंकने को इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ड्राइव किया, इस वक्त बेहतर फील्डिंग और अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए इस वक्त गेंद को उन्होंने फील्ड कर लिया शरण ने बेहतरीन तरीके से। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर रुक चुका है 1 रन बिना किसी नुकसान के। आसिफ हड्डूर ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं। अजीम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ड्राइव किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद जाते हुए, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, स्वीपर डीप एक्स्ट्रा कवर पर जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। बेहतरीन स्ट्रोक, स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को पंच किया था खूबसूरती के साथ और 2 रन यहाँ पर बटोरने में सफल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 3 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। शरण एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अजीम सामना करने के लिए तैयार रहता है ना। तो ओवर द विकेट ये गेंद शरण की इस बार इन द एयर, दिस कुड बी अ चांस, इन फैक्ट ही ड्रॉप दैट वन, he dropped that one। सिनान वहां पर फील्डर थे, जीतोड़ कोशिश उन्होंने जरूर की लेकिन यहाँ पर गेंद को लपकने में असफल, लेकिन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एफर्ट मेड बाय सिनान। दूसरे खिलाड़ी ने उनका अभिवादन किया और इस बीच 2 रन उनके और टीम के खाते में जुड़ता हुआ और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर। एक बार फिर से गेंदबाज शरण गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज आसिम के लिए ये गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। इस बार रन्स नहीं मिलेंगे, स्कोर रुक चुका है 5 रनों पर। आजिम का जहां तक सवाल है तो पिछले मैच में यंग फ्रेंड्स उर्वा के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया था। 34 रन उन्होंने बनाए थे 18 गेंदों में और यहां भी उसी तरीके की बल्लेबाजी का पुनरावर्तन करने की कोशिश में। दाहिने हाथ ओवर द विकेट शरण इस वक्त तैयार, ये गेंद स्वीप करना चाहा, बाउल्ड आउट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन फ्रॉम शरण। He just caught the read of the batsman Azim and a first wicket loss from गेंद थे बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ। Have a look at this in the replay, किस तरीके से आई देखिए, लगभग जमीन के साथ है, गेंद को ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा and but the ball passed below of his bat and stuck to his mid leg stump. Bills are disturbed। बेहतरीन गेंदबाजी और पहला विकेट यहां पर प्राप्त कर चुके हैं शरण और पहला विकेट खो चुका है अजीम के रूप में इन मैंगलोर। इट्स 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द फर्स्ट ओवर। मैच नंबर 6 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट सौहार्दा ट्रॉफी 2023 इज नाउ गोइंग ऑन अंडर द ग्रेट लीडरशिप ऑफ मिस्टर शाकिर एंड मिस्टर हकीम। निश्चित रूप से ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति करती हुई 12 प्रतिष्ठित टीमें 12 प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस टूर्नामेंट और इस श्रृंखला का 7वां मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ और 6th मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट, 6ठा मैच यहाँ पर खेला जाता है। 6th मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट इज नाउ progressing here between NM Mangalore versus Torpedoes Kana। Number 3 बैट्समैन मंसूर इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और जहाँ तक सवाल है इस वक्त मंसूर का तो इस वक्त स्ट्राइक रेंज पर मौजूद और पहले ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 5 रन्स ऑन द बोर्ड, 1 विकेट लॉस्ट। सेकेंड ओवर स्टार्ट्स और गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए रिलवान, एक और बेहतर गेंदबाज टॉर्पेडोस काना की ओर से। इस मैच के बाद अगला मैच खेला जाएगा
Team Matrix will takes over Roof Tech Katipalla, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. Team Matrix ಹಾಗೂ Roof Tech Katipalla ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तो इस बीच अगली गेंद, पहली गेंद इस वक्त लेकर तैयार रिलवान, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज आसिफ अड्डूर सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद बेहतर गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में रन से नहीं मिलेगा और इस बीच डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ. तो देखिए एक बार फिर से मैदान के चारों ओर नजर फिराए तो दर्शक इस वक्त मैदान पर खचाखच इस वक्त भर चुके हैं. एब्सोल्युटली जाम पैक स्टेडियम, और ये बात ये दर्शाता है कि अंडर आर्म क्रिकेट मंगलूर में खासकर यूसीजी इस लॉर्ड्स ऑफ अंडर आर्म क्रिकेट में कितनी जनप्रियता रखता है, पॉपुलैरिटी रखता है. तो यहाँ पर अगली गेंद लेकर तैयार रिलवान गेंदबाजी करते हुए आसिफ के लिए ऑफ स्टंप से काफी बाहर. ओह मिसअंडरस्टैंडिंग, ओह ही मिसेस. अगेन इट्स गोइंग टू बी मोर रन एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री. 1+4 1+4 5 runs added to the total in fact. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त थ्रो किया था नॉन स्ट्राइकर पर, लेकिन काफी वाइड थ्रो. तो देखना यह है कि रन से कितने मिलेंगे यहाँ पर. तो अंपायर इस वक्त बातचीत करते हुए और तो इस वक्त देखते हैं कि अंपायर यहाँ पर क्या निर्धार देते हैं. तो बातचीत करते हुए अंपायर, और इस वक्त बातचीत जारी है. हालांकि गेंद वाइड थी, बल्लेबाज रन के लिए दौड़े थे, ओवर थ्रो हुआ था, कोई बैकअप नहीं और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी थी. तो 6 रन यहाँ पर घोषित, 6 रन स्कोर्ड. अगर वाइड नहीं होता तो 5 रन मिल सकते थे, लेकिन वाइड होने की वजह से 1 रन ज्यादा मिला, 6 रन उनके खाते में जुड़ता हुआ और 6 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रन. दोनों मौकों में यहाँ पर दोनों बल्लेबाज बच चुके हैं. मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन इस मिसअंडरस्टैंडिंग की बदौलत 5 रन ज्यादा बल्लेबाज ने प्राप्त किए तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में. और रिलवान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए मंसूर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद, 2 फील्डर 20 गज के दायरे के बाहर तैनात और मंसूर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. गेंदबाज रिलवान अपनी ओर की अगली गेंद, दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त उछालना चाहता, चूंकि एक बार फिर से दिशाहीन गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन विकेट कीपर के हाथ में. 1 रन मिला और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 13 रनों पर. 12 रनों पर, माफ कीजिए, 1 विकेट के नुकसान पर. 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. ये गेंद इस बार गेंद स्टंप्स पर टकरा चुकी है. जस्ट गॉन फॉर अ माइटी, नॉट सक्सीडेड. आई थिंक इज ड्रैग्ड डाउन टू द स्टंप्स एट द लास्ट मोमेंट. बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद इस वक्त गेंद टकराई स्टंप्सों पर और मंसूर का विकेट यहाँ पर गिर चुका है. और यहाँ पर बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन देते हुए रिलवान, हालांकि 2 लगातार वाइड उन्होंने फेंके थे जरूर, लेकिन उसके बाद कमबैक करते हुए यहाँ पर विकेट प्राप्त करने में सफल मंसूर का. 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर. तो नए बल्लेबाज आज के दौर के अंडर आर्म क्रिकेट के बेहतर खिलाड़ियों में से एक माने जाने वाले बल्लेबाज रियाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ और इन दिनों में काफ़ी बेहतर फॉर्म में नजर आते हुए और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार यहाँ पर गेंदबाज रिलवान की ओर की अगली गेंद का. तो रिलवान फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार रियाज के लिए. और रियाज एक बार पूरी तरह फील्डिंग का मुआयना उन्होंने किया और इस बीच सामना करने के लिए तैयार
रिलवान की गेंदों का। रिलवान दाहिने हाथों बढ़ता विकेट गेंदबाजी करते हुए रियाज के लिए हल्के से गेंद को इस वक्त पंच कर दिया। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद पहुंचे एक्स्ट्रा कवर पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 13 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और इस बीच एक बार फिर से रिलवान अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए सामना करने के लिए तैयार। आसिफ अड्डू, जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, एनएम मैंगलोर को कम से कम 50 का आंकड़ा यहां पर पार करना होगा 7 ओवर में, निर्धारित 7 ओवर में। और इस बीच एक पहली गेंद, इस बार अगली गेंद को ड्राइव किया मिड विकेट की दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े। 1 रन मिलेगा जरूर जब तक गेंद को वहां पर फील्ड करते फील्डर कुछ मिस फील्ड के बाद 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। तनवीर के हाथों से मिसफील्ड हुई थी और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और फिर से एक बार रिलवान गेंदबाजी करते हुए इस वक्त रियाज के लिए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद एक बार फिर से वाइड का इशारा, अपनी सही लेंथ और लाइन को तराशते हुए इस वक्त गेंदबाज काफी वाइड इस ओवर में फेंक चुके हैं। और इस वक्त आसिफ अड्डू जो नॉन स्ट्राइक रन पर थे उन्होंने कुछ कहा कि भैया यहाँ पर वाइड हो चुका है, गेंद पहुंच चुकी है शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों में, तो आप क्यों जल्दबाजी यहाँ पर दिखा रहे हैं रन लेने की। तो यहाँ पर कुछ उन्होंने कहा इस वक्त आकर रियाज से, और रियाज एक बार फिर से कुछ कहा सुनी के बाद अपने स्थान पर लौट चुके हैं और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिना तो बढ़ता विकेट गेंदबाजी करते हुए स्विंग किया, इस बार मिड विकेट पर, कोई फील्डर वहां पर नहीं और गेंद इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। He just leaning for that at the last moment. गेंद तक पहुंचते हुए गेंद को इस वक्त स्वीप किया था, देखिए किस तरीके से। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। हालांकि गेंद टॉप एज पर जरूर टकराई थी लेकिन इतने गेंद में इतना पर्याप्त दम था कि वो सीमा रेखा को पार कर सके और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाज रिलवान, काफी लंबा ओवर इस वक्त उनका प्रगति पर, दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट, इस बार गेंद जाती हुई कवर पॉइंट सीमा रेखा की और लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को जब तक वहां पर फील्ड करे, फील्डर थ्रो पहुंचा। इस वक्त तीसरे रन के लिए बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं यहां पर रन। 3 रन मिल चुके हैं। इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को रिवर्स शॉट उछाला था रियाज ने कवर पॉइंट फील्डर के सिर के ऊपर से और 3 रन बल्लेबाज प्राप्त करते हुए 2 ओवर की समाप्ति। कुल मिलाकर इस ओवर में 18 रन बने, 18 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर एंड बिकॉज ऑफ दिस ओवर एनएम मैंगलोर आर बैक इन द मैच। दे स्टार्टेड वेरी वेल, they progressed very well after being a slower start in the first over. 18 runs scored from the last over. Meantime, once again I would like to call upon the players of team Metrics and Roof Tech Katipalla, please to be reported here, all the players to make a sign in the official chart. तो 2 ओवर की समाप्ति, 23 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर और अश्विन इस वक्त टॉर्पेडोज खाना के प्रमुख गेंदबाज इस वक्त मोर्चे पर लगा दिए गए हैं और वो इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार रियाज। तो ओवर की पहली गेंद, दाहिने तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद, ओह ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, परफेक्ट लेग कटर एंड ही जस्ट गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन रियाज खुद समझ नहीं पाए कि गेंद उनको वंचित करती हुई सीधे किस तरीके से निकली लेग कटर के रूप में। एब्सोल्युटली परफेक्ट लेग कटर। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, एब्सोल्युटली अनप्लेएबल डिलीवरी और इस बार गेंद सीधे मिडल ऑफ स्टंप को बिखेर कर निकल गई और इस बेहतरीन परफेक्ट लेग कटर के जरिए और रियाज का विकेट प्राप्त कर चुके हैं। एक क्षण रियाज इस वक्त दंग रह गए कि किस तरीके से ये गेंद गिरी है, वो समझ नहीं पाए किस तरीके से गेंद तेज रफ्तार के साथ थोड़ी सी डिवेट होकर निकली थी। तो जहां तक सवाल है इस वक्त रियाज का, तो रियाज का विकेट गिरने के बाद तीसरा विकेट गिर चुका है। 23 for 3 एंड दिस इज द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस।
तो नए बल्लेबाज आतिफ जो कि कप्तान है एनएम मैंगलोर के इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। इस वक्त चाहिए एनएम मैंगलोर को एक साझेदार यानी पार्टनरशिप, और इनफॉर्म बैट्समैन रियाज का विकेट गिर चुका है। एक बेहतरीन गेंद के जरिए अश्विन ने उनका विकेट उखाड़ा बोल्ड आउट के रूप में, और इस बीच वो इस वक्त अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। आतिफ के लिए ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को डिफेक्ट किया, आसिफ के लिए खतरा हो, लेकिन इस बार इम्तियाज का फेंका गया थ्रो आतिफ के पीठ पर टकराता हुआ, और आसिफ जो कि नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज थे काफी आगे निकल आए। यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था, गेंद गई थी इस वक्त शॉर्ट फील्ड लेग फील्डर इम्तियाज के हाथ में, हालांकि आधे पिच तक चले आए थे, थ्रो फेंका गया, लेकिन अगर थ्रो आतिफ के पीठ पर नहीं टकराता तो निश्चित रूप से स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर पर आसिफ अड्डूर के लिए खतरा पैदा हो सकता था, लेकिन सब कुछ सुरक्षित। अगली गेंद इस बार कुछ एक्स्ट्रा बाउंस, और इस बार एक बार फिर से खतरा, इस बार ओवर थ्रो, और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। बार बार भाग्य यहां पर साथ देता हुआ आसिफ का, तो यहां पर 2 रन प्राप्त कर चुके हैं बल्लेबाज, और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। एक बेहतरीन मैच यहां पर प्रगति पर टोरपेडोस खाना और एनएम मैंगलोर के बीच में। इस बीच अश्विन ने ये गेंद हल्की सी लेग कटर गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती स्टंप्स को कवर किया, बल्ले के मुंह को खोलते हुए गेंद को हल्के से मोड़ दिया, इस वक्त फ्लिक कर दिया था ऑफ द टोस शॉट स्कोर लेग पर 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 26 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। अश्विन अगली गेंद, ये गेंद अच्छी गेंद, एक बार फिर से लेग कटर गेंद, गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर जहां पर इम्तियाज थे, 2 कदम जरूर आसिफ ने आगे बढ़ाए, लेकिन ऐन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिया। देखा कि गेंद फील्ड करके इम्तियाज थ्रो कर रहे हैं स्ट्राइकर एंड पर, और इस वजह से कोई क्षति नहीं। एक बेहतर ओवर अब तक अश्विन का साबित हो चुका है, अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट, इनफैक्ट ही फाइंड्स द गैप एज वेल। गेंद जाते हुए कवर पॉइंट पर, डीप कवर पॉइंट पर, मेरे ख्याल से अक्रम जो फील्डर है वो जब तक गेंद को फील्ड करके गेंद को लौटाए, विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 28 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एंड 3 ओवर्स completed. 5 runs came in this over. Good one in Torpedo's corner's point of view, comparing to the second over which conceded 15 runs by Rilwan, और 3 ओवर के बाद 28 रन बच चुके हैं। पहले ओवर में शरण ने 5 रन प्रदान किए थे, रिलवान ने दूसरे ओवर में काफी महंगे रहे थे, 18 रन उन्होंने प्रदान किए। तीसरा ओवर जो अभी अभी समाप्त हुआ है अश्विन तमन का, जिसमें 5 रन उन्होंने प्रदान किए, और कुल मिलाकर 3 ओवर के बाद 28 रन। प्रेजेंट रन रेट exactly 9.33 runs per over is now progressing here for them. Still in overall calculation it's going to be 4 overs remaining in the innings. 4 ओवर का खेल बाकी, और हमसे दूर वाले छोर से, यानी ऐसा कहना पड़ेगा BMR एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज मुबीर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और चौथा ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त एनएम मैंगलोर की पारी में। फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई काफी दूर दूर तक का फैला हुआ क्षेत्र क्षण में यहाँ पर दिखाई देता हुआ। लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडर तैनात इस वक्त, लॉन्ग ऑन भी थोड़ा सा वाइडर, और डीप मिड विकेट पर एक फील्डर जाते हुए, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक फील्डर तैनात। आतिफ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर इस वक्त जाते हुए ठीक सीमा रेखा के पास, और ओवर की पहली गेंद लेकर मुबीर तैयार। दर्शक मैदान पर भर चुके इस वक्त, खामोशी के साथ मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए, और यहाँ पर यह मैच एक दिलचस्प मोड़ की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ। दाहिने हाथों पर तब विकेट मुबीर अपनी ओर की पहली गेंद लेकर तैयार, और यहाँ पर सामना करते हुए आतिफ दाहिने हाथों पर तब विकेट, पहली गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई, गेंद को इस वक्त रिवर्स शॉट खेलना चाहता, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को छोड़ना चाहता, लेकिन तब तक वक्त गुजर चुका था और गेंद सीधे पहुँच चुकी थी उनके बल्ले को वंचित करते हुए। विकेट कीपर के हाथ में रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एक बार फिर से गेंदबाज मुबीर गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज आतिफ के लिए ये गेंद इस वक्त गेंद को पैनल स्वीप कर दिया, गेंद जाते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल, थोड़ी सी मिस फील्ड वहाँ पर, शायद हर्षित थे फील्डर, तो 1 रन के साथ इस वक्त स्कोर अब बढ़कर पहुँच चुका है 29 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 29 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 in progress. Meantime, I once again would like to call upon the players, Team Metrics and Rooftech Katipalla, please to be reported here to make a sign in the official chart. So, तो यहाँ पर
फील्डिंग में जमावट कुछ हद तक करने के बाद मुबीर गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए आसिफ अड्डूर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और मुबीर ये गेंद आसिफ के लिए पैरों पर गिर टकराई, प्लम्ब इन फ्रंट, और इसी के साथ आसिफ अड्डूर की पारी की समाप्ति हो चुकी है। सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, गेंद लाइन पर टिप्पा गए, मिडल स्टंप को कंसंट्रेट केंद्रीकृत कर कराते हुए हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। देखिए किस तरीके से हुआ था, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ सफल हो चुके थे और उनका पैर बिल्कुल स्टंप्स के सामने था और अंपायर को कोई दिक्कत यहां पर महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। 4 विकेटें गिर चुके हैं और आसिफ की पारी इस वक्त समाप्त हो चुकी है। 4 रन सिर्फ बना, स्ट्रगल्ड इनिंग्स कुछ हद तक कहना पड़ेगा और चौथा विकेट खो चुका है एनएम मैंगलोर यहां पर 29 रनों के योग पर। इट्स 29 for 4। नए बल्लेबाज, एक और बेहतर बल्लेबाज एनएम मैंगलोर की ओर से रिवर्स शॉट स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं अजहर इस वक्त क्रीज पर मौजूद और यहां पर सामना करने के लिए तैयार। मुबीर की गेंद का हल्के से गेंद को स्वीप करना चाहा, पैरों पर टकराई, नॉट सेकंड पर खतरा, थ्रो पहुंचा लेकिन थ्रो इस वक्त स्टंप्स पर नहीं टकराया और बल्लेबाज यहां पर बाल बाल बच चुके हैं। तो पहली गेंद पर अजहर इस वक्त बच चुके हैं और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 30 for the loss of 4 wicket in the over number 4 in progress. Still the equal battle is now on और यहां पर सामना इस वक्त करेंगे एनएम के कप्तान आतिफ और गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए मुबीर। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के अपने अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ, इंप्रोवाइजेशन करते हुए फाइन लेग की दिशा में गेंद बढ़ती हुई इस वक्त और गेंद इस वक्त डीप फाइन लेग सीमा रेखा के अंदर गेंद थोड़ी सी दौड़ लगाने के बाद यहां पर रोकी जाए। बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का, तो यहां पर चौका घोषित करते हुए अंपायर सीमा रेखा पर को गेंद प्राप्त कर चुकी थी। मैं देखना चाहूंगा टीवी मॉनिटर पर एक्चुअली व्हाट वाज हैपेंड। गेंद पहुंची थी वहां पर, गेंद को काफी लंबे दौड़ के बाद रोकना चाहता लेकिन रोके जरूर, लेकिन आखिरकार गेंद उनको वंचित करते उनके पैरों पर टकरा कर सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है और इस बीच 4 रनों का इशारा हो चुका है। बेहतरीन स्ट्रोक, इंप्रोवाइजेशन बेहतर, आतिफ का 4 रन प्राप्त कर चुके हैं। 34 for the loss of 4 विकेट। मुबीर अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज आतिफ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को मोड़ दिया और आखिरकार स्क्वायर लेग पर खुद विकेट कीपर जब तक जाकर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 35 for the loss of 4 विकेट। 4 overs completed, 3 overs remaining in the innings और इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को। सतीश, द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन। अगर दूसरे ओवर में 18 रन बने नहीं होते तो शायद यहां पर टोरपेडोस काना के गेंदबाज अपना कब्जा जमाए होते, लेकिन 18 रन दूसरे ओवर में बना और 35 रन बन चुका है। 8.75 प्रेजेंट रन रेट नाउ। दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक प्रोग्रेसिंग हियर फॉर एनएम मैंगलोर और मैं समझता हूं टोरपेडोस काना को कमबैक करना है तो निस्संदेह कुछ हद तक बेहतर गेंदबाजी यहां पर करनी होगी। बचे हुए 3 ओवर में 50 रनों के आंकड़े के अंदर अगर एनएम मैंगलोर के बल्लेबाजों को रोक कर रखते तो निश्चित रूप से उन्हें मौका इस मैच में विजय दर्ज करने का। 50 का आंकड़ा एनएम मैंगलोर पार करता है तो कुछ हद तक का मुश्किलें पैदा हो सकते हैं टोरपेडोस खाना के बल्लेबाज के लिए जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे। Hello. Absolutely, Gopi. And just mentioning about that second over is going to be very expensive for Torpedoes Kana. Because of that, NM cricketers of Mangalore are looking in a commanding position. And 35, it's absolutely a good score here after completion of over number 4. Now, first delivery of the over number 5, Ashwin brought into attack. And straight away, Atif picked up a single. Scoreboard numbers down to 36 for the loss of 4 wicket in the over number 50 is in progress. Ashwin right arm balls absolutely back wide, spectra wide. Maybe Ashwin is trying for the quicker delivery. That's the main problem that for Ashwin because Azhar is very unorthodox kind of cricketing batsman. It's very difficult to pick what kind of stroke he will going to implement. This time lovely delivery. This is quite interesting to watch these two players playing against each other because the same players are playing for the same team at one time. And maybe that Ashwin is thinking about that tournament which is held at that we are talking about
the Netravati Trophy 2023. At that time, Azhar hitting him 1-6 and a boundary. So that he's just wanted to wanted to rectify, and he wanted to learn from the mistake what he did in that tournament. So he wanted to keep Azhar quiet in this particular match. This time again, reverse stroke comes into play. Misfield dive by the fielder. Ball running down to deep back point field region, and before Arshit from the deep cover point region to cut it off. Ample time for the batter to complete it. A couple of runs. Pretty ordinary effort there from the fielder at inside the ring, because when you're playing against a team like NM Cricketers Mangalore, the little margin for error, all our mistake will be going to be counted, and each and every run going to be very crucial. Ashwin again bowls a beautiful leg cutter. This is a master class. This is a master class of Ashwin, because once he gets his rhythm, always is a very, very useful bowler. Now he's just checking the direction of the wind, saying that what kind of delivery is suitable for the batsman Azhar. Azhar once again not given up, still is trying for the switch hit. Still Ashwin is not settling the batsman for that. This is a outstanding contest between these two, Azhar versus Ashwin. And again 40 for the loss of 4 wicket. Again Ashwin back to his bowling mark. Right arm over the wicket, bounce to Arish. This ball out a shot. He's not given up, and he is not given up because he knows that I am a specialist of the switch hit. I am not going to give up. I am not going to give up. And this time I think Ashwin is did the wrong thing, is that he's bowled a full toss delivery. Absolutely juicy full toss, just like a left-hand batsman hitting the ball. So easy for the batsman like Azhar, because the way that he is holding his grip, it was a left-hand grip. It's not a right-hand grip. So that it's so easy for him, Azhar. It's just like a left-hand batsman hitting the 6, and score jumped into 46 for the loss of 4 wicket. Meanwhile, I request all the players of Rooptek Katipalla to report here immediately to sign the official chart. The contest which is comes in between Ashwin and Azhar with the 6. And have a look at the crowd here. Absolutely jam-packed stadium out here in this UCG cricket ground, witnessing this great contest between these two very good teams. Mubir to continue from the far end. Right arm over the wicket, balls to Atif. Atif, that's when wanted to slap the ball. Good change of line there by Mubir, seeing the intention of the batsman Atif, that is going for the sweep shot, slog sweep shot. He bowled a slower one, change of pace, and he won the change of line. Clever thinking. 46 for the loss of 4 wicket. Mubir again from the BMR end, bowling right arm over the wicket to Atif. Atif is improvising that one by playing the switch hit, one of his favorite. Quite useful cricketing stroke there from Atif. Got that one over the top of the infield, down to deep cover point region. Azhar wanted a third. Atif already settled for the second. It's 48 for the loss of 4 wicket. And quite understandable. Azhar knows that any score which is not a big for teams like Torpedoes Khana, they got some good players in the side. So they wanted to get as much run as possible. Chance of run out, directed, definitely will go into curtain the innings of Atif, but ball misses the stumps. Rilwan is standing at short mid-off region, trying for the run out, misses the stumps. Atif completed a run. One shot of 50, 49 for the loss of 4 wicket. After seeing the Zaman boys Karnataka chase down the 70 runs, all runs which seems to be very small. And that's why NM Cricketers Mangalore trying their level best, and they wanted to get as much runs as possible. Again going for the drive, inside edge of the bat. Luckily that ball didn't dispatch into the stumps. And before Imtiaz came into the picture, they completed a single. 50 comes up. 50 comes up here for NM Cricketers Mangalore. 50 for the loss of 4 wicket. The over number 6 is in progress. Mubir balls, beautifully bowled. Appeal for something. Off-hearted shout for the caught behind. Now, they're saying that the batsman has got a bat onto that. Now Atif leaving the field. Absolutely magnificent. This is a true spirit of cricket. Absolutely. The big round of applause required for Atif. He's going back.
and caught behind the wicket. Maybe Atif just clarifies whether the wicketkeeper is taken that catch neatly or not. Something which is hard, isn't it? Something which is hard, but sometimes it's very difficult for the umpire to hear the sound. And Atif, after that, getting some. So 50 for the loss of 5 wicket. Atif departs has shown a very good sportsman spirit in that dismissal. After that, seeing that everyone is very confident, then he's just getting clarification from umpire Mohan Egyadi. Then he's got back into the pavilion. The 21 runs of partnership comes to an end. 14 deliveries they taken for that 21 run partnership. For the wicket number 5, fifth wicket. 50 for the loss of 5 wicket. Improvisation again by playing the widget. Very useful cricketing strokes in the present cricket. Couple of runs taken there by Zaid. One more very useful cricketer for the side of NM Cricketers Mangalore, especially in the middle order. 52 for the loss of 5 wicket. Over number 6 completed. Last over remaining of the innings of NM Cricketers Mangalore. And they're really looking towards the good score in the last over. Now I think Torpedoes Khana exceeds the time, so that penalty will be given by umpires, maybe asking the fielding team to bring one fielder, extra fielder inside the ring, not more than 4 outside the ring. That means 5 fielders need to be there inside the ring and not more than 4 outside the ring. It's 52 for the loss of 5 wicket. Now very interesting to see the field set. Mid wicket is there, long on is there, long off, it's wideish, deep extra cover. Inside the ring, short fine leg, square leg behind the square, short mid wicket, short mid off, short cover point. Sharan brought it back, starts with the spectra wide. And direct hit, Imtiaz, and they're looking for the second. Oh my goodness. This is a disaster, absolutely disaster. Wide plus 2, 3 wides. 55 on the board, 55 for the loss of 5 wicket. Sharan in the first over is so accurate. He bowled first over in the power play, only conceded 5 runs. Now 3 runs without conceding a delivery. Again, nicely bowled. That was a good thinking there by the bowler. Absolutely perfect one, just inside the line. Azhar a little bit surprised why the umpire not given a wide, but the umpire, it's a right call from Harish Padil. Drives, beautiful shot down to cover point region. Bashit to run back towards his backward point region, deep cover point region in fact, and a couple of runs is taken there by Azhar. So with that couple of runs, Koban Namuzan to 57 for the loss of 5 wicket. Fantastic batting performance continues here from NM Cricketers Mangalore. Again, Sharan away from us. Balls went for the reverse way, Papil for leg before wicket. Again, might be the impact of the line, outside the line of off stump, so that umpire rightly so not interested. One more single, it's 58 for the loss of 5 wicket. Last 3 deliveries remaining in their innings. And wait and see how NM Cricketers Mangalore will going to get the runs. I think it's a big total. And just considering the fact that the NM Cricketers Mangalore has got a excellent bowling department, so that it's going to be a danger sign for Torpedoes Khana. This time Zahid, quite interesting kind of cricketing stroke is implemented, but unfortunately the Sharan is on his follow through, picks the ball and hits the stumps and made the run out.
So 58 for the loss of 6 wicket, and over number 7 is in progress. Last is in progress, and 2 deliveries remaining. Have a look at the crowd here. This is a speciality of usage cricket ground. Whenever there is a big tournament, whenever there is a well-organized cricket tournament, the crowd is always backing up the match, backing up that tournaments. And usage cricket ground here, getting a lot of crowds today. Nicely one side to the hands of enough chance of run out, and direct it is gone. Fantastic work there for Mubir. This is what Tarbarus Khan wanted to do in the final over, because already there was a dangerous bell which is ranked by the NM Cricketers Mangalore after getting a huge total on the board. But any score which is scored in this final over is going to be a bonus run for NM Cricketers Mangalore. So if the Torpedoes started to believe that they wanted to win this match, these kind of efforts is so important. In the last 2 particular deliveries, one which is came from the hands of Sharan on his follow through to make the run out. The second one is Mubir hitting the stumps in the non-striker's end. And very important that not only the wicket which is fallen, but one dotted delivery which is bowled in that over. 58 for the loss of 7 wicket. Sharan. Away from us to Ayaz. Ayaz looking for the improvisation, but not quite able to defeat Rilwan from the short fine leg region. That's it. Over number 7, which is comes to an end. 59, which is the total score. Exactly the 60, the target for Torpedoes Khana to qualify for the next round of this prestigious Souhardha Trophy 2023. Have a look at that effort of the bowlers, and of course 60 runs now required for the victory in 42 deliveries. The highest individual score, Atif as well as Azhar scored 11 runs respectively. Then Asif in the top of the order scored 10 valuable runs. Altogether some extras which is helping the total score. Extras which is 16 extras which is considered by Torpedoes Khana. That is absolutely a huge one. That was the big one, the big extras which is considered 16 runs. So meanwhile, now it's a time for announcement of some attractive prizes, especially for the previous matches, and the highest run chasing in this tournament by team Zaman Boys Kalladka. And first of all, I would like to invite Rashid Baba. Rashid Baba has got a cash prize 1,000 rupees from Niyaz Suraj. Niyaz Suraj donated 1,000 rupees for Rashid Baba. I request Mr. Riaz of Team Matrix. Riaz of Team Matrix, please present this 1,000 rupees for Rashid Baba. ದಯಮಾಡಿ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ 1,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ rupees 1,000 from Riaz of Team Matrix for his wonderful performance. Congratulations. Next one, the man who really opened the gate for Zaman Boys Kalladka, outstanding explosive knock, Azim of Zaman Boys Kalladka will going to get 1,000 rupees from Mansoor Suraj. He's donated this 1,000 rupees. I request one of the top Hindi commentator and our close friend Mr. Star Nawaz, please present this 1,000 rupees for Azim for his wonderful performance. Absolutely fantastic batting display. 24 runs in just 12 deliveries with 3 mighty sixes he scored. And congratulations Azim. And last and but the least, it's Tawfiq, the one more hard hitter of the ball. And Harris KK is donated rupees 1,000. I may request Shailesh of KCCR Kadri to present this 1,000 rupees for Tawfiq for his wonderful innings. So, and at the same time, it's the best wishes coming from all around the world, not only from the India, from some best wishes coming from the Gulf countries as well. Now it's just now we have received best wishes from Nawaz Lefty. He is now is working in Gulf country. He is sending best wishes for the success Souhardha Trophy 2023. Nawaz, one of the fantastic left-hand batter of KFC Kodikal.
And now it's time for chasing. 62 in this match, and Gopi straight away the pressure for Torpedoes Ghana, because the amount of runs they wanted to get, is 60, and the delivery which is remaining is 42. The gap between the run and ball is exactly the 18, and that might be the big problem for Torpedoes Ghana. But Gopi was watching the batting display of Torpedoes, batting display of batting display of Zaman Boys Color ka. Even 70s becomes a small total in this particular cricket ground and cricket tournament as well. But I think Gopi, that's a different story, because two different teams taking part. But here is two top teams, and everybody knows that NM Cricketers Mangalore, they got one of the top bowling department what they got. So that a lot of hard work which is required for Torpedoes Ghana. Just like in a simple word, of course the target is going to be a little bit tougher, but not impossible. And especially having such a good batting department what Torpedoes Ghana has got, especially the Tanvir, the man, he's got a lot of runs from the bat in the particular season. If he able to talk his with bat with Ashraf and some players, this match is going to be very interesting for lovely cricket crowds here in UCG cricket ground. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, इस वक्त 60 रनों का लक्ष्य है, तो यहाँ पर 70 रनों का लक्ष्य भी पीछा किया गया है, जो कि पिछले मैच में जो कि जमन बॉयज का लड़का ने 70 रनों का लक्ष्य का पीछा किया था, तो यहाँ पर 71 रनों के लक्ष्य का पीछा किया। तो यहाँ पर टॉर्पेडोज गाना के पास भी सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप है, लेकिन उन्हें इस वक्त बल्लेबाजी करनी है अगेंस्ट द स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप ऑफ एनएम मैंगलोर। तो देखते हैं क्या होता है। पहली गेंद, इस बार गेंद को उछाला, लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट और गेंद पहुंची इस वक्त सिली डाउन क्षेत्र पर, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। दोनों आरंभिक बल्लेबाज अशरफ और तनवीर इस वक्त मौजूद। मुजीब जो कि गेंदबाजी यहाँ पर शुरू कर चुके हैं, और निस्संदेह यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा, जहां तक 60 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, टॉर्पेडोज गाना को एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त जरूरत है। तो दोनों बल्लेबाज अशरफ और तनवीर जो कि काफी प्रतिभाशाली, उनके पास वो क्षमता, एबिलिटी है कि वो इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर देखना यह है कि पहले 2 पावर प्ले ओवर जो है, उन 2 पावर प्ले ओवर का लाभ वो किस तरह से यहाँ पर उठाते हैं। तो गेंदबाज मुजीब इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो बढ़ता विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई शॉट, थर्ड मैन पर गेंद पहुंची, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड की रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 2 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। कुल मिलाकर पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर, और फिर से एक बार गेंदबाज मुजीब इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, तनवीर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद मुजीब की इस वक्त रिवर्स शॉट, टॉप है, जब मौका हो सकता है फील्डर के लिए, गेंद तक पहुंचा, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कैच टेकन बाय द कवर पॉइंट फील्डर दिस टाइम, एंड बिकॉज ऑफ दैट a fantastic catch from Azhar, and the Tanvir, the man is now dismissed. I want to look at in the replay, absolutely fantastic one. देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था. Have a look at this in the replay, and just running to his backside to grab the ball with one hand at the last moment, and this is an absolutely fantastic catch. Athletic work made by Azhar in this delivery. तो सतीश, absolutely fantastic catch जो अजहर ने लिया है. What a great catch, Gopi. One of the best catch of this tournament. Have a look at it on a replay once again. Switch comes into play, and fielder, have a look at Azhar. Where he was standing, Gopi, he was almost standing the edge of the circle, and where he finished the catch. This is outstanding running catch. Running back and taking the catch is very difficult, Gopi. When you are compare that running catch in front of you and you are try to take the catch in front of the fielder, it's a very easy one when you compare to that when you are running back and taking the catch. And at the same time, Gopi, it's always that ball is almost traveling out of the reach of Azhar. And last moment he just extending his hand, isn't it? Then ball is went into his hand and he got a blinder, absolutely blinder, Gopi. Exactly, Satish. बिल्कुल, absolutely blinder. अगली गेंद इस बार cracks it away through the offside, just wide of Mansoor. और गेंद पहुंची इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर पर, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन यहाँ पर दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं, और बेहतरीन रनिंग between the wicket. Absolutely fantastic. Just smashed that one square of the wicket, and he's got a couple of runs for that stroke. और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है. तो
2 ರನ್ इस बीच मिले 4 ರನ್ एक ವಿಕೆಟ್ ಗೆ ನುಕ್ಸಾನ್ पर ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರೂಫ್ ಟೆಕ್ ಕಾಟಿಪಾಳ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ದಾಖಲಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ऑफिशियल हाಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ विनंती ದಯವಿಟ್ಟು तो बैक टू दिस गेम और इस बीच गेंदबाज इस वक्त यार मुजीब गेंदबाजी करते हुए दाइनात ओवर द विकेट दाइनात के बल्लेबाज के लिए गेंद बेहतर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन केम along the carpet and went into the hands of wicket keeper after beating the batsman and there is no possibility of any run imtiaz the number 3 batsman is now comes out to the middle for torpedoes खाना और इस बीच मुजीब अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाइनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी थोड़ी सी एक्स्ट्रा कवर फील्डर के ऊंचाई से निकली एक्स्ट्रा कवर मंसूर ने डाइविंग लगाई इस बीच 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका है अंतिम क्षण में अपने स्ट्रोक को चेक कर लिया था इस वक्त और मंसूर जो फील्डर खड़े हुए थे अपनी जीत और कोशिश उन्होंने जरूर की अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद तक लपकने की गेंद को लपकने की लेकिन गेंद को वो लपक नहीं पाए और गेंद का उनके पहुंच से बाहर और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता एक्स्ट्रा कवर पर 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट फिर से एक बार गेंदबाज मुजीब गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार बेहतर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन एक्स्ट्रा क्विकर एंड फैंटास्टिक ओवर came to an end from मुजीब 6 runs just he conceded in this over and he just got the wicket of Tanveer. It was an absolutely blinder taken by Azhar, just running towards to his backside at the last bit to grab the ball with his one hand, and because of that, first wicket loss for torpedoes खाना in the very first over. तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद इस वक्त 6 रन बन चुके हैं. अब देखिए यहाँ पर एब्सोल्युटली जंप पैक स्टेडियम टीवी मॉनिटर पर इस वक्त दिखाया जा रहा है किस तरीके से दर्शक इस वक्त खड़े हुए. हालांकि आज वर्किंग डे सोमवार होने के बावजूद दर्शकों से मैदान खचाखच भर चुका है. तो यह बात यह दर्शाता है कि अंडरआर्म क्रिकेट खासकर मंगलूर में खासकर यूसीजी उर्वा क्रिकेट मैदान जो कि लॉर्ड्स ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना जाता है यहाँ पर कितनी जनप्रियता रखता है. तो यहाँ पर दर्शकों को आप देख सकते हैं मॉनिटर पर जो दिखाया जा रहा है बेद्रा मीडिया द्वारा. और यहाँ पर जहाँ तक सवाल है ऐसा कहना पड़ेगा त्योहार भरा माहौल यहाँ पर छा चुका है. फेस्टिवल एटमॉस्फेयर जिसे कहते हैं और यहाँ पर एक बेहतरीन प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस क्रिकेट श्रृंखला का शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई. ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त रियाज तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद पहली गेंद इस बार ड्राइव हुई है गेंद को जगह बनाते हुए गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ की दिशा में नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है. कुल मिलाकर 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ दिस सेकंड ओवर. दूसरा पावर प्ले ओवर यहाँ पर प्रगति पर केवल 2 मात्र फील्डर इस वक्त 20 गज के दायरे के बाहर तैनात. वाइड इज लॉन्ग ऑन और वाइड इज लॉन्ग ऑफ. तो 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद हर गेंद के साथ फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए. और इस वक्त अगली गेंद लेकर तैयार रियाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इम्तियाज के लिए ये गेंद इस वक्त इम्प्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को इस वक्त स्कूप किया लेकिन गेंद पहुंची स्क्वायर लेग पर विकेट फील्डर की पहुंच से कुछ बाहर और आखिरकार रन्स मिला. हालांकि ये गेंद कुछ देर तक हवा में जरूर रही थी लेकिन स्क्वायर लेग फील्डर के पहुंच से बाहर और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका. 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त रियाज तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज यहाँ पर सामना करने के लिए तैयार अशरफ. तो जहाँ तक अशरफ का सवाल है एक बेहतर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं टॉर्पेडोस खाना की ओर से और यहाँ पर वो सामना करने के लिए तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद लेग पर आते हुए एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी गेंद को छोड़ दिया अंतिम क्षण में. शायद गेंद यहाँ पर विकेट कीपर आसिफ के गर्दन पर टकराई उनके हाथों पर टकराने के बाद और आखिरकार वाइड के रूप में रन मिल चुका है उनके खाते में. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. रियाज एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त जगह बनाते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर. दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर बराबर का संघर्ष यहाँ पर जारी. द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर. और जहां तक सवाल है अगली गेंद का तो रियाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इम्तियाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. और इस बीच रियाज की ओर की अगली गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी गेंद को उछालना चाहा और बल्लेबाज ने एक्सपेक्टेशन पूर्वानुमान नहीं लगाया था कि गेंद इतनी धीमी तरीके से आएगी. लगभग बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया. 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस. और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो रियाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए
और इस बीच अशरफ सामना करने के लिए तैयार। एकमात्र विकेट तनवीर के रूप में गिर चुका है इस वक्त उनके लिए। तैनात ऊपर द विकेट रियाज की गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, बल्ले का भीतरी किनारा, मिसफील्डर इस बीच विकेट फाटा उठाकर बल्लेबाज एक रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। जोखिम भरा रन साबित हो सकता था अगर थ्रो थोड़ा एक्यूरेट रहता, लेकिन थ्रो थोड़ा वाइड निकला और इस वजह से बल्लेबाज एक रन के साथ अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। स्कोर बोर्ड एक रन के साथ बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 12 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर, और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो रियाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रन अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए टॉर्पेडोज काना के लिए तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार स्विंग किया, एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट, दिस इज गॉन ओवर द फेंस एट डीप मिड विकेट फॉर अ बाउंड्री। और यहां पर फुल टॉस गेंद को कबूल किया था बाखूबी इस वक्त इम्तियाज ने। और देखिए यहां पर रिप्ले में इस वक्त दिखाया जा रहा है किस तरीके से गेंद को उन्होंने लिया था अपने बल्ले पर। हैव अ लुक एट दिस, एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट, ही जस्ट स्कूप दैट वन, जस्ट क्लियरिंग द इनफील्ड इनटू द वेकेंट एरिया एंड ही गॉट अ बाउंड्री फॉर दैट। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर। 16 रन एक विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एक बेहतर रिप्लाई यहां पर देता हुआ टॉर्पेडोज काना, 16 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 2 ಓವರ್ಸ್। ಅಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೊರಗಜ್ಜರ ಕಟ್ಟೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಾಹನಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ಮಾಲಕರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಾಹನದ ಮಾಲಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। So 16 for the loss of 1 wicket. Straight away coming back to the equation, 10 runs scored in the last over and 44 more runs now they have to score for victory. 30 balls remaining, exactly 8.80 the required run rate for them। और तीसरा ओवर यहाँ पर प्रारंभ होता है और इस बीच तीसरा ओवर शुरू करते हुए आतिफ गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। तैनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैनात के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। अशरफ 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर पे समाप्त हो चुका है और इस वक्त फील्डर मैदान पर छा चुके हैं। अगली गेंद के लिए तैयार, ये गेंद इस बार दिस इज अ क्लीन हिट, आई थिंक सो इट्स कैन बी गॉन दिस टाइम, इट टेकन सरप्राइजिंगली। The ball lost its speed at the last moment. जैसे ही गेंद बल्ले पर टकराई ऐसा लगा कि गेंद सीमा रेखा को पार करेगी, लेकिन यहाँ पर काफी ऊंचा उछाला था गेंद को और अंतिम क्षण में गेंद अपनी रफ्तार को खोते हुए लपक ली गेंद लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों में और इसी के साथ यहाँ पर यह विकेट गिर चुका है अशरफ का। तो 16 रनों के ऊपर दूसरा विकेट गिर चुका है और अशरफ यहाँ पर आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और यहाँ पर इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा फॉर द फर्स्ट time in this match Torpedoes Kana are now looking little bit of in trouble। 29 balls to go, 44 more runs now they have to score for victory and absolutely a fantastic battle is now continuing here between Torpedoes Kana and NM Mangalore in the match number 6 of Souhardha Trophy 2023। And now, after the departure of Ashraf, one more good striker of the ball is now comes out to the middle. बासित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और इस बीच बासित सामना करेंगे आतिफ की गेंदों का। तैनात ओवर द विकेट आतिफ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस वक्त गेंद को हल्के से स्टीयर कर दिया, खूबसूरती के साथ गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, एक रन मिलेगा इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाए। एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 17 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 17 for the loss of 2 wicket and in the over number 3 in progress। और जहां तक सवाल है 17 नंबर के जर्सी इस वक्त बासित पहने हुए और उनकी पारी की टीम के 17वां रन भी उन्होंने बनाया। यह गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद, एक वक्त ऐसा लगा गेंद शमशों पर टकराई है लेकिन नहीं, गेंद हालांकि धीमी गेंद थी परिवर्तन के तौर पर और आखिरकार गेंद को रिवर्स शॉट खेलने में चूके बाल बाल इस गेंद पर बचते हुए इम्तियाज। गेंद और
तो निस्संदेह गेंद थोड़ी सी आउटसाइड द लाइन ऑफ द ऑफ स्टंप थी। आखिरी मौके पर ठीक तरह से परखने के बाद इसे नॉट आउट घोषित किया यहाँ पर अंपायर ने। तो काफी नजदीकी मामला था। तो इस बीच बल्लेबाज इम्तियाज इस वक्त बच चुके हैं और दाहिना तो ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद इम्तियाज के लिए, ये गेंद हल्के से गेंद को स्टीयर कर दिया आतिफ की गेंद को। गेंद पहुंची इस वक्त गली दिशा में। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। स्टिल 2 बॉल्स लेफ्ट इन दिस ओवर। बेहतर ओवर अब तक आतिफ का साबित हो चुका है और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज बासित इस वक्त सामना करते हुए। यह गेंद ड्राइव किया बासित ने लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन वहां पर फील्डर थोड़े से पीछे थे शायद। यहां पर जिस तरीके से आतिफ और दूसरे फील्डर उन्हें इस वक्त कोस रहे हैं, उससे ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद कैच की संभावना वहां पर थी। मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है, देखिए किस तरीके से यहां पर इस वक्त उन्होंने प्रयत्न नहीं किया था शायद, और आफ्टर 1 बाउंस गेंद पहुंची थी सीधे लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों में। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। आतिफ एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इम्तियाज के लिए। गेंद इम्प्रोवाइजेशन करना चाहता, रिवर्स शॉट खेलना चाहता, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। ओवर की समाप्ति बेहतरीन ओवर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ओवर केम स्टूडेंट फ्रॉम आतिफ। जस्ट 3 runs he conceded and he got the wicket of Ashraf in this over. So 3 overs gone, 19 runs on the board. Struggling time a little bit continuing here for the batsmen of Torpedoes Ghana. 41 they have to score in remaining 24 balls, and the required run rate is now gone up to exactly 10.25 runs per over. तो यहां पर चौथा ओवर प्रारंभ होता हुआ और गेंदबाज है मुजीब इस वक्त चौथा ओवर प्रारंभ करते हैं। पहली गेंद लेकर तैयार दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग, नॉट सक्सीडेड। डॉट गेंद, हर डॉट गेंद इस वक्त टॉरपेडोस गाना के बल्लेबाजों पर दबाव इस वक्त बढ़ाता हुआ और एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए एनएम मैंगलोर के गेंदबाज। और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए मुजीब अब तक बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन वो दे चुके हैं। अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज बासित के लिए। ये गेंद बासित ने गेंद को ड्राइव किया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद जाती हुई लंबोल की दिशा में 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। सिर्फ 1 रन उनके खाते में जोड़ा जाएगा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 in progress. Still a long way to go for Torpedoes Ghana, and 40 runs more now they have to score for victory. और मुजीब एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, चूंकि गेंद इस वक्त थोड़े आगे की ओर आती हुई विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन अब तक प्रदान कर चुके हैं मुजीब। एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार इम्प्रोवाइजेशन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड द बॉल गॉन ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री। एब्सोल्युटली परफेक्ट इम्प्रोवाइजेशन। और इम्तियाज ने पहले ही भाप लिया था कि थर्ड मैन पर जो फील्डर तैनात है थोड़े से स्क्वायर। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, किस तरीके से गेंद को मच स्ट्रेटर वे पर इस वक्त खेला और 4 रन यहां पर प्राप्त करते हुए और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर। 24 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। स्टिल कपल ऑफ बॉल्स लेफ्ट इन दिस ओवर और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिनात के बल्लेबाज के लिए। यह गेंद एक्स्ट्रा क्विकर गेंद को खेल दिया मिड ऑफ की दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना चूक चुका है और दूसरे रन के लिए बल्लेबाज यहां पर दौड़ पड़े और इस बार थ्रो पहुंचा, लेकिन दूसरा रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। तो दोनों मौकों में दोनों बल्लेबाज यहां पर बच चुके हैं और आखिरकार स्कोर 2 रनों के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर। तो 7 रन इस ओवर में अब तक बन चुके हैं और अब 34 रन और चाहिए
विजय के लिए, जबकि 19 गेंदें और बाकी 34 रन्स ना मोर दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमाइनिंग 19 डिलीवरीज. What a fantastic match is now progressing here. और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, और अंपायर जो कि इस वक्त विकेट को सही करते हुए इम्तियाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. मुजीब की गेंदों का दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, पैरों पर टकराई, गेंद पहुंची शॉट, थर्ड मैन पर 1 रन मिलेगा. इस बीच बेहतर गेंदबाजी और इसी के साथ चौथे ओवर की समाप्ति हो चुकी है. इसको बैट ऑफ दैट एट द लास्ट मोमेंट. 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 27 रन 2 विकेट के नक्शा पर. 4 overs completed, 27 runs on the board, 2 wicket lost, 33 required in remaining 3 overs. That means in remaining 18 balls and required run rate is now gone up to exactly 11 runs per over. तो सतीश आइए आपको माइक्रोफोन पर बुलाते हैं अंतिम 3 ओवर का आंखों देखा सुनाने के लिए. तो सिचुएशन इस वक्त कुछ हद तक एनएम के पक्ष में लगता हुआ, उनका तख्ता इस वक्त भारी लगता हुआ, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है इस वक्त टॉर्पेडोज काना के लिए. और अगले 2 ओवर में कम से कम 20 से 25 रन अगर टॉर्पेडोज काना बटोरते हैं तो निस्संदेह इस मैच में वापसी अपनी कर सकते हैं. Thank you very much, Gopi. And just like you mentioned about, of course, it's a difficult condition now for Torpedoes Kana because they have to get another 33 runs to win this match in remaining 3 overs. Uh, 27 for the loss of 2 wickets. Now another 33 more runs required for the victory. And Gopi, especially coming back to these 2 pairs, Imtiaz as well as Bashid is always a dangerous pair because Bashid has got a fantastic tournament from the bat for Torpedoes Kana in this particular season, and especially in the Trishul Trophy which is organized at Kumble, and he is the one is responsible for the success of Torpedoes Kana in that particular tournament. So that having Bashit in the middle, Imtiaz in the middle, definitely Torpedoes Kana, the fans definitely get last hope of winning this match. But question raising here in this particular match is that Gopi, against the formidable bowling department of NM Cricketers Mangalore is always going to be the big ask, but not impossible in cricket. 27 for the loss of 2 wickets, 33 more runs required for the victory. Each and every dot ball will going to create the problem for Torpedoes Kana. 17 balls remaining. Right above the wicket bounce. This time tries that one Imtiaz down to deep long on region, but not more than a single, just like I mentioned about. But in this particular matches, I think the lack of boundaries, lack of sixes. This is what Torpedoes Kana is need to find immediately. Without getting a boundary, without getting a 6, then very difficult to bring the difference. It is a very big difference in this particular condition for Torpedoes Kana. They have to get 1 big over if they wanted to win the match. Riaz again, right above the wicket. Bashir drives that one down to deep long on region. 1 bounce collected by Azhar, and batsmen have to settle for the single. Of course, both the batsmen are trying their level best to get 1 big shot in the over, but against the bowling of Riaz and against the bowling of Atif and Mujib, all the specialist bowlers, especially in the limited over matches, very difficult to hit the big shot. 29 for the loss of 2 wickets. This time Imtiaz, what a fantastic stroke, and what a good piece of fielding there by the captain of the side. Atif is now standing in the deep in the third man region. Already Imtiaz got 1 boundary, they're playing the similar kind of switch it, and this time excellent piece of fielding there by Atif. One-handed pick up and throw straight to the hands of wicket keeper, and they completed a single. 30 for the loss of 2 wickets. Half of the job completed, yet to complete another half of the job, but delivery which is remaining is definitely going to be a difficult task, but not impossible. 14 deliveries remaining. This time Bashir drives that one down to short mid wicket region. The fielder there in the short mid wicket region misfielded, and batsman got opportunity to complete the single. 31 for the loss of 2 wickets. Raiman, the fielder there in the short mid wicket, has got opportunity to represent for NM Cricketers Mangalore in this particular tournament. Another 29 more runs required for the victory. Coming down the track, using his feet, a good change of line there by Riaz. Seeing that batsman coming down the track, following the batsman, and the ball around the legs of the batsman. 1 more good over completed by NM Cricketers Mangalore. Struggle time continues here from Torpedoes Kana.
chasing 60 to win this match. It's a 32 for the loss of 2 wicket after completion of 5 overs. 2 overs remaining, and they have to get another 28 runs to win this match at the required run rate of exactly 15 runs per over. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಕಲಾ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಇವರು ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ, ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒನ್ ಆಫ್ the biggest supporter of cricket and more than 50 years of experience in the field of manufacturing the bat. It's been outstanding journey for Lakshmi Narayan Kamath and is just enjoying the game of cricket here in our commentary box. So 28 required from 2 bowlers. First ball outside the non-flex stamp, going to be a punishable from umpire. White call by umpire. With that white, Skoban moves on to 33 for the loss of 2 wicket. 33 and 27 more runs required for the victory. This time Imtiaz going for the mighty stroke, misfielded by Atif on his follow through, and Rahman is doing a fantastic job at in short mid wicket region, even though he's not a regular player for NM Cricketers Mangalore, but he's just grabbing the opportunity, the chance which is given for him, and that's what is really required, isn't it? Putting 100% into the game is so important. And now 26 more runs required for the victory for Torpedoes Khana. Atif, the Bashit once again went for the mighty stroke again. Very difficult to get the ball to into the middle of the bat. Bashit is everybody knows his ability. He's a game changer, and he's a game changer, no doubt at all. But just like I mentioned earlier, against NM Cricketers Mangalore, the bowling department, it's not so easy. And both the batsmen trying hard but not getting success. 25 required from 10 balls. Atif, this time Imtiaz drives better nicely down to deep long, and again the fielder is situated for the every strokes. Very difficult for the batters to get the boundaries there. Only single will not going to help Torpedoes Khana to win this match. 36, 24 required from 9 balls. 1 or 2 big shot badly required. This time, 1 or 2 big shot badly required, and 1 stroke which just came from the bat of Bashit. Just like I mentioned, he's a finisher. He's a finisher. He's got a fantastic season from the bat. And what a shot that one. Absolutely glorious lofted on drive. This is a huge 6 came from the bat of Bashit, and that 6 will going to open the gate for Torpedoes Khana. 18 required from 8 balls. He wanted to repeat that one. Good comeback here by Atif in the delegation. But behind the stump, Asif misses the ball. By call by umpire. 17 required from 7 ball. This is a crucial delivery for Torpedoes Khana. If Imtiaz will be able to get 1 more big shot in this ball, the complexion of the match will going to change here. Coming down the track, using his feet, drives that one down deep long on, but not more than a single. Bashit, absence of mind. Absolutely absence of mind. This is a terrible, absolutely terrible. Have a look at that one. No chance of second run. But I think Bashit thought that Imtiaz will going to remain there in the non-strikers end until Bashit going towards the non-strikers end. But Imtiaz left the crease, and Bashit finding himself short of his crease. This is what you call the mind, and very good presence of mind there from Atif. Now 16 required from 6 ball. Bashit back into pavilion. Have a look at Bashit, the disappointment. Why not? Because he's the one who's got ability of hitting a big shots. In a crucial juncture, it can be the very handy. Imtiaz, everybody knows his caliber. He's also a very good striker of the ball. But Bashit, there might be the batsman who is badly required in the slog overs. And last over, 16 required for the victory. Still match is evenly balanced.
as far as the success in this particular season is concerned. Every team has got some very good titles. NM cricketers, only the KFC Codical is not having trophies behind them. But otherwise, all teams which is sharing the titles. NM cricketers Mangalore, 3 winners, 1 runner-up. Torpedoes Khan also winning 2 very big titles. Gori Young Boys won the 2 titles. Sneha Malamar also won 1 title. KCCR Kadri also got a title. So altogether this season have got a very good competition. This is really very interesting, isn't it? That what crowds want to see. They doesn't want to see the one team will going to dominate every time. And here is the first ball, which is a dotted delivery. 26 required. Again going for the sweep shot. One more dotted delivery. They're going for the single. Direct it. Imtiaz is gone. I request the 2 teams captain please be reported for the toss. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನನ್ನ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ರೂಫ್ ಟೆಕ್ ಕಾಟಿಬಲ್ಲ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ನನ್ನ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು. Now, the danger man walking towards the middle, especially one of the hunting ground for this man, is known as the finisher, Akram. Can he able to get the big shots here? 26 required, 4 balls remaining, 16 required, correction, 16 required from 4 balls. Drives down to short, deep long on region for a single. And Akram is out of the strike now. 15 required, 3 balls remaining. Now umpire saying that NM cricketers Mangalore there exceeds the time limit, so that one fielder have to bring inside the ring. The benefits chasing team. Can this man is going to able to take the benefit of that? Wait and see. Sinan, one more very good striker of the ball. Decider delivery for Torpedoes Kana. 15 to get. Drives, not more than a single. Single will not going to help them because 2 deliveries, 14 runs required for the victory. Even 2 sixes will not going to help Torpedoes Kana to win this match. NM cricketers Mangalore absolutely dominated from the bat, from the ball. Even absolutely fantastic fielding. And Azhar is responsible for the one of the best catch. Damn appeal for leg before wicket. Umpire not interested. Rightly so. The impact of the line is outside the line of off stump. So 1 ball 14 required. Just a 4 minutes left in this game. ರೂಫ್ ಟೆಕ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಇದು ಅಂತಿಮ ಕರೆ. ನಾಯಕನಿಗೆ ನನ್ನ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಬಟ್ ದ ಫೀಲ್ಡರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಡೀಪ್ along and takes the catch. Riyaz, the wicket for the last ball, and a comprehensive victory. 13 runs victory for NM cricketers Mangalore. Defeated Torpedoes Kana by 13 runs, and they qualify for the next round of this prestigious Souhardha Trophy 2023. We'll take a short break here. After the short break, we'll back the match between Roof Deck versus Team Matrix. Thank you.
So team metrics after won the toss, they elected to field first, and the match number 7 of this tournament is now coming up live exclusively right in front of you within just short while. Thank you. ಅಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರಿಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಮುಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
तो इस तरह से मैच इस वक्त शुरू होने जा रहा है। टीम मैट्रिक्स रूफटेक कृष्णापुर, वन मोर गुड मैच रूफटेक काटीपल्ली, इनफैक्ट वन मोर गुड मैच इज नॉट कमिंग अप। और टीम मैट्रिक्स के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है, और इसकी वजह से दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त रूफटेक के मौजूद, और तस्लीम जो कि गेंदबाज हैं इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए। अल्ताफ और सिद्दीक, अल्ताफ वालपाड़ी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और टीम मैट्रिक्स की ओर से गेंदबाजी का कार्यभार इस वक्त आरंभ करते हुए तस्लीम ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, तैनात ओवर द विकेट गेंदबाजी इस वक्त करते हुए तस्लीम ओवर की पहली गेंद, ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, कवर पॉइंट सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ती हुई, और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। Absolutely fantastic struck came from the bat of the batsman अल्ताफ वालपाड़ी। थोड़ा सा विड था और इस विड को कबूल करते हुए गेंद को इस वक्त स्कूप कर दिया अल्ताफ वालपाड़ी ने। कवर पॉइंट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए, और इस चौके के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए तस्लीम अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, तैनात ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैनात के बल्लेबाज अल्ताफ वालपाड़ी के लिए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ड्राइव किया गेंद को, लेकिन नॉट क्वाइट मिडली गेट एट द लास्ट मोमेंट, और गेंद सीधे पहुंची मिड ऑफ क्षेत्र पर, और वहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन से स्पीच बल्लेबाज को नहीं मिला, और स्कोर रुक चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। मैच नंबर 7 सौहार्दा ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत यहां पर शुरू हो चुका है, और तस्लीम इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार ब्रिलियंट एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन फ्रॉम द बॉलर, और अंदर की ओर आती हुई बड़ी मुश्किल के साथ इसे अवॉइड इस वक्त किया अल्ताफ वालपाड़ी ने, और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 5 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज सिद्दीक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, डीप मिड विकेट इस वक्त ठीक सीमा रेखा के पास मौजूद है, और जहां तक सवाल है इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर के फील्डिंग के नजरिए का, तो 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, और तस्लीम इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज सिद्दीक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, बाउंड ऑफ हिज लेग्स, और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। सिद्दीक की पारी समाप्त, ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहता इस वक्त, बिल्कुल जमीन के सहारे आई। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, किस तरीके से गेंद आई थी देखिए, गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहता, चूंकि बाउंड ऑफ हिज लेग्स, और इसी के साथ पहला विकेट खो चुका है रूफटेक काटीपल्ला यहां पर 5 रनों के ऊपर। बेहतरीन गेंद इस वक्त तस्लीम की। इट्स 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द फर्स्ट ओवर। तो नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद अजहर जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है, और तस्लीम फील्डिंग में इस वक्त थोड़ी सी जमावट यहां पर करते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज अजहर के लिए, और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिना तो ऊपर द विकेट ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त खेलना चाहता लेकिन खेल नहीं पाए, और गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, और सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा। एक बार फिर से तस्लीम अपने गेंदबाजी के मार्क पर तैयार, अपने ओवर की अगली गेंद लेकर बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए तस्लीम की गेंदों का।
ये गेंद बेहतर गेंद थी, अंदर की ओर आती हुई बेहतरीन गेंदबाजी इस वक्त जारी रखते हुए गेंदबाज तस्लीम यहाँ पर अपना पहला बेहतर ओवर समाप्त कर चुके हैं। हालांकि पहली गेंद पर उन्होंने चौका जरूर प्रदान किया था, अल्ताफ वाडपाड़ी ने कवर पॉइंट पर गेंद को उछाला था 4 रनों के लिए, लेकिन उसके बाद एक बेहतर कमबैक करते हुए बाद के 5 गेंदों में बल्लेबाजों पर नियंत्रण प्राप्त करने में सफल और एक विकेट भी उन्होंने यहाँ पर प्राप्त किया सिद्दीक का बोल्ड आउट के रूप में। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद इस वक्त मिश्रण भरी शुरुआत, मिक्स स्टार्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इस वक्त कर चुका है रूफ टेक का काटी पल्ला, 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगला मैच, वन मोर गुड मैच इज नाउ कमिंग अप right after this match. Sneha Malemar will takes over KFC Kodikal in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಹಾಗೂ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज अनिल और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार अल्ताफ वालपाड़ी। और जहाँ तक अनिल का सवाल है, पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब उन्होंने अर्जित किया था अपने ऑलराउंडिंग प्रदर्शन की वजह से, और यहाँ पर अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद इस वक्त खेला शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। और जहाँ तक सवाल है अगली गेंद का, तो फील्डिंग में इस वक्त जमावट चलती हुई और लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन इस वक्त मौजूद, और गेंदबाज अनिल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए इस वक्त सिद्दीक, और ये गेंद अनिल की, इस बार हल्के से गेंद को खेलना चाहा बैक टू द बॉलर की दिशा में, और इसके साथ सिद्दीक का विकेट यहां पर गिर चुका है। और डबल माइंडेड स्ट्रोक, पहले सोचा कि गेंद को मोड़ा जाए, अंतिम क्षण में सोचा कि गेंद को सीधे खेला जाए, देखिए किस तरीके से खेला था, और गेंद सीधे बैक टू द बॉलर की दिशा में पहुंची आसानी के साथ। और यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा दुविधा में पड़ गए थे, और दुविधा में इस स्ट्रोक को उन्होंने खेला था और अपना विकेट यहां पर गवा बैठे हैं। 6 रनों पर दूसरा विकेट गिर चुका है रूफ टेक काटी पल्ला, it's 6 for the loss of 2 wickets. तो इस वक्त गेंदबाज तैयार, नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। ये गेंद, इस बार गेंद को उछालना चाहा था, गेंद लगभग विकेट कीपर कार्तिक के हाथों से इस वक्त फिसली, वहां पर बेल्स जरूर गिरे थे लेकिन स्टंप्सों पर गेंद इस वक्त टकराई थी, शायद कार्तिक के हाथों पर टकराने के बाद, और इस बीच कोई क्षति नहीं बल्लेबाज के लिए। मोटे कद के बल्लेबाज नकीज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, मोटे कद के बल्लेबाज, और इस बीच बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद, इस बार दिस इज गॉन ऑल द वे, आई थिंक सो, एंड इट क्लियर डिफेंस फॉर अ ह्यूज वन। तो यहां पर नकीस का स्ट्रोक एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट, हालांकि देखिए किस तरीके से स्टेप आउट करते हुए गेंद को उछाला था, और हार्ड एंड हाई, और गेंद को लॉन्ग ऑन पर फील्डर लपकने का प्रयास उन्होंने किया, लेकिन गेंद उनके हाथों से टकराकर सीधे सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन स्ट्रोक नकीस के बल्ले से लगता हुआ, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस छक्के के साथ 12 रनों पर। एक बार फिर से गेंदबाज की गेंद, एक बार फिर से हवा में, फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे, 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 13 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, अल्ताफ वालपाड़ी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज अनिल इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद अल्ताफ के लिए उछाला, एनफील्ड क्लियर करते हैं, जी नहीं, तस्लीम गेंद तक नहीं पहुंच पाए। यहां पर जी तोड़ कोशिश
उन्होंने ज़रूर की थी वहाँ पर। तस्लीम नहीं, शायद दूसरे फील्डर थे जिन्होंने कोशिश की थी इस वक्त। और जहाँ तक सवाल है गेंद उनके पहुंच से बाहर, और एक टिप्पे के बाद जब तक वो गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति। 15 for 2 आफ्टर 2 overs। थर्ड ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स और गेंदबाज कमेंटेटर बॉक्स की ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए तस्लीम अपना दूसरा ओवर शुरू करते हुए, और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अल्ताफ वालपाड़ी। 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहां पर हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और इस वक्त फील्डर जो कि मैदान पर छाते हुए। और जहाँ तक तस्लीम का सवाल है, अपने पहले ओवर में 6 रन उन्होंने प्रदान किए थे और इस बीच केवल 4 मात्र फील्डर 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। तस्लीम एक बार फिर से फील्डर्स को गिनने के बाद अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। डीप मिड विकेट फील्डर को थोड़ा सा पीछे इस वक्त तैनात किया गया है। अल्ताफ वालपाड़ी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार तस्लीम की गेंदों का। दाहिना तो ऊपर द विकेट तस्लीम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर कट करना चाहा कार्तिक के हाथों में गेंद, रन्स नहीं मिलेंगे और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 15 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। एक प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट जिसे कहते हैं सौहार्दा ट्रॉफी 2023 के नाम पर यहाँ पर आगे बढ़ती हुई इस वक्त शाकिर और हकीम इनके सारथ्य में ये श्रृंखला इस वक्त बेहतरीन प्रगति करती हुई ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद को इस वक्त खेलना चाहता चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया विकेट कीपर कार्तिक ने। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार गेंदबाज तस्लीम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट अपनी ओर की अगली गेंद। अल्ताफ वालपाड़ी सामना करते हुए इस वक्त ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन। दिस इज एन आउटस्टैंडिंग डिलीवरी, मच स्ट्रेटर लाइन, जस्ट वांटेड टू स्विंग्स इट अवे ऑन द ऑन साइड आफ्टर शफलिंग अक्रॉस द लाइन। और गेंद लगभग ऑफ स्टंप से कुछ दूरी पर निकली, बेहतरीन तरीके से विकेट जरूर उड़ाए इस वक्त विकेट कीपर ने, लेकिन बल्लेबाज का बैकफुट जो कि क्रीज पर था इस वजह से बिल्कुल सुरक्षित हो और यहाँ पर इस गेंद पर बच चुके हैं अल्ताफ वालपाड़ी। स्कोर रुक चुका है 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। तस्लीम एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। तो अल्ताफ सामना करते हुए इस वक्त ओवर की अगली गेंद तस्लीम इस वक्त फेंकते हुए ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम आउट हिज बैट एट द लास्ट मोमेंट, ड्रिवन दैट वन परफेक्टली जस्ट वाइड ऑफ द मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर इन फैक्ट एंड ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 16 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और नकीज जो कि एक छक्का पिछले ओवर में झड़ चुके हैं अब तस्लीम की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। और इस बीच दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं तस्लीम जो कि रूफ टेक के मालिक भी है, ओनर भी हैं, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद ड्राइव किया ऑफ द टॉस खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। कुछ हंसी मजाक इस वक्त तस्लीम और यहाँ पर नकीज करते हुए। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो तस्लीम गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए इस ओवर में अंतिम बार बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन अब तक दिया है उन्होंने। सिर्फ 7 रन प्रदान किए हैं अपने 1.5 ओवर में। अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार अंदर की ओर आती हुई एक बार फिर से अल्ताफ वालपाड़ी ने बल्ले गेंद का आने का इंतजार किया। अंतिम क्षण में बैकफुट पर जाने के बाद गेंद को बल्ले से दिशा दी। इस वक्त गेंदबाज की बाईं ओर से गेंद निकलती हुई मिड ऑफ पर जब तक फील्ड हो 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 18 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 3 overs had been bowled and still in overall calculation 3 overs left in the innings। 6 overs per side to be play। 6 ओवर प्रति पारी जो कि यहाँ पर खेले जाएंगे।
और 3 ओवर के बाद 18 रन बन चुके, 2 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर में अब बचे हुए 3 ओवर में उनकी पारी में क्या क्या होता है ये अब आपको अंग्रेजी में जानकारी देंगे मेरे काबिल दोस्त सतीश आगे के 3 ओवर के लिए। माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सतीश को। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। I request, thank you, Gopi. 18 for the loss of 2 wicket. Meanwhile, before going towards 6 overs match, 6 overs side to be played. Already the organizer has informed to the two teams captain that is 6 overs match before the toss. So even the start of the match also, even commentators are told that it's a 6 overs game. So I requested to carry on if it's a 7 hours, if they are not agreed. Not agreed. Okay, it's okay. 7 hours means 7 hours. Okay, so let's carry on. 18 for the loss of 2 wicket, 3 overs completed, 4 overs remaining, and the bowler brought in the attack from the far end. It's Dhanush brought in the attack from the far end, and Altaf Walpadi. Altaf Walpadi, little precaution. Yes, Altaf Walpadi is on strike. Dhanush is on attack. Oh, this is a Walpadi for you. This is a Walpadi for you. He's been outstanding. So easy for him to delivering the 6. Effortlessly played. This is a danger batsman. And look at the flow of the bat. Absolutely amazing. The phenomenal cricketer, Altaf Walpadi, and 6 number 25 comes up in this tournament. It's a 24 for the loss of 2 wicket. Dhanush balls and Altaf cuts that one nicely down to cover point region. They're running hard and they made it quite easily. In the end, a couple of runs has been taken. The very good innings from Altaf Walpadi so far. He scored a valuable 19 runs in just 13 deliveries. Again now plays it down to short cover point region for not for run. Good comeback here by Dhanush, quickly realizing that he can't bowl around the midland leg stump of Dhanush for Altaf. Again outside line of off stump, and Karthik fails to collect the ball. They're going for the quick single. It's a very good running between the wicket, and the impressive part of this partnership between these two is that Nakis, even is having a little bit heavy body weight, but he's very good in the running between the wicket. As running between the wicket is concerned, he runs very quickly between the wicket. It's a 27 for the loss of 2 wicket. Dhanush balls this time. Nakis wanted to get that one in the mid wicket region, but couldn't manage to get that one from his bat. So
last time in this over. Dhanush balls coming down the track. Wicket keeper behind the stump. Karthik missed it. Over number 4 completed. It's 27 for the loss of 2 wicket. Roof Tech Katipalla against Team Matrix. Meanwhile, the previous match, man of the match, which is goes to Atif of NM Cricketers Mangalore. And I request Jamal Panchame to present this. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾದ ಜಮಾಲ್ ಪುಂಚಮೆ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಮಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. The next match will be of 6 overs. Please note, the captains, all matches will be paid out of 6 overs. And please note, and it's information given for all the teams. The next all matches will be played of 6 overs. 6 hours side to be played. And Anil bowls and Altaf drives that one. Not quite able to get the placement right, but the single is taken there. 29 for the loss of 2 wicket. NM Cricketers Mangalore ತಂಡದ ಆತಿಫ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Coming down the track, now is just sacrificing his wicket, but Karthik is in removes his bills. He doesn't want to send Nakis back into pavilion. Coming down the track, he's using his feet and misses his ball completely. Karthik may be interested with the wicket of Altaf Walpadi rather than the wicket of Nakis, but Nakis played a good innings actually, including 1-6. He scored 8 valuable runs. So it's 29 for the loss of 2 wicket. Anil picked up his second wicket. In the previous over, his first over, Nakis hit 1-6, so that he's taken a revenge in this over. Pramod is a new batsman in with the jersey number 16. Short fine leg, square leg, deep square leg, deep long on, long off, deep extra cover. Anil again. Left arm round the wicket. Balls within the reach of the batsman. Pramod wanted to get that one very fine. Misses the line completely. Then there is no chance at all for any. 29 for the loss of 2 wicket. Anil balls. Going for the drive. Karthik missed it completely from his hand. Frustration for the bowler. One more single added to total. It's 30 for the loss of 3 wicket in the over number 5 is in progress. Anil bowling away from us. Left arm round the wicket. Nicely plays it down to mid wicket region. Running hard. Altaf already definitely coming back for the second. Excellent running bit in the wicket. Good placement there from Altaf. A couple of runs been added to total. 32 for the loss of 3 wicket. Great innings coming from the bat of Altaf Alfadi. It's a 32 for the loss of 2 wicket. Final time in this over. Altaf Alfadi. Matches 1, runs 20, 16 deliveries. 1 boundary, 1 sixes. And that is the speciality of Bedra Media. Just like in international cricket, they're having the updates of the batsmen, especially in the particular matches updates. And the one match is 21 runs, balls face 17. No 50s, no 100s. Strike rate is 123.53. Is a typical Altaf Walpadi for you. Always gets the runs more than the ball. And this is a Roof Tech Katipalla playing 11 in front of you. Altaf Walpadi, Siddiq, Tawfiq, San, Azhar, Izam, Pramod, Rajesh, Nakis, Sharan and Sharat. The playing 11 of team Roof Tech. Team Matrix, Ismail, Mustafa Nasir, Sadiq, Rizwan Safwan, Karthik, Taslim, Hakim, Dhanush and Anil. So this is a playing 11 of Team Matrix. So 2 overs remaining.
Dhanush to continue from the far end. A very young, talented bowler, Dhanush. Full toss drives that one down to wideish long off. Coming back for the second, in comes the throw, but the batsman is so quick between the wicket, especially the Pramod is running towards the danger end. Completes that couple of runs and scored that couple of runs. Coburn was on to 35 for the loss of 3 wicket. Altaf Alabadi is batting on 23 now. Just 2 runs required to complete his 25. This time, top edge, opportunity for Anil to take the catch, and he completes the catch. The very good innings comes handy of Altaf Alabadi. Scored a 23 valuable runs in 19 deliveries. Have a look at it one. Looking for the mighty blow against the spin of Dhanush. Pays the penalty for that. Anil completes the catch. Wicket number 4 back into pavilion. It's 35 for the loss of 4 wicket. So next match number 8 will be played between Sneha Malamar versus KFC Kodikal. So that I request all the teams players complete the formalities of signatures. At the same time, I request you to complete the formalities of tossing ceremony. And already I informed, after this all matches will be played of 6 overs. 6 overs side to be played after this match. Please note all the captains. So Dhanush to continue from the far end. Isam is a new batsman going for the big swing of the bat. This time directed umpire. Definitely going to go into refer for the third umpire because it's a very close one. Whenever there is a direct hit, umpire definitely wanted to get the help from third umpire, and it's very close. The Karthik looks like he is very confident. The fieldsman hitting the stumps directly. Of course, the batsman Pramod dragging the bat into the crease, but we need to wait and see whether the batsman is safe or not. Always going to be very crucial when there is a direct hit. Not out, which is a call from umpire. The batsman is safe from other. That's what I'm talking about. The dragging the bat. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಲ್ ಪುಂಚಮೆ ಅವರು ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಆತಿಫ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಆತಿಫ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ. This time it's go! What a save! What a save there from the fielder. Absolutely saving up 4 runs for his team. Fielder in the mid-wicket region. Of team matrix, outstanding save there from the fielder, jersey number 44. Drives that one down deep long on region for a single. With that singles cover numbers on to 39 for the loss of 4 wicket. In the over number 6 is in progress. Dhanush again back to his bowling mark. There's some drives that one nicely down to deep square leg region. They're looking for the second. Very difficult to get. Good throw coming from the fielder. Excellent throw to finish the over. It's number 6. It's a 44. The loss of 4 wicket. Last over remaining in their innings.
Last over going to start from the committee box, and this time went for the reverse sweep. But ball went straight to the hands of short fine aggression. Isam is very good in that reverse sweep, but this time he didn't got enough pattern to that. Just a single. 41 for the loss of 4 wicket. Mustafa bowling away Pramaz. Right arm over the wicket, balls to Pramod this time left the ball, rightly so. Wide call by umpire. 1+1, 2 more to the total. With that, a couple of runs, Koban Namuzan to 43 for the loss of 4 wicket. Team Matrix need to be very careful by conceding some extras, especially in the last overs. Is always going to be asking for trouble because under condition and the evening condition, it's not so easy to chase the total, which is a +50+. This time, lovely shot. Isam looks like ball just landed inside the boundary line and one bounce into the fence for 4 runs. That's just like I mentioned earlier, he's a very good reverse sweeper of the ball. Have a look at that one, switch it. Magnificently played, and ball just landing just landing inside the boundary line, I think so. And one bounce into the fence for 4. 47 for the loss of 3 wicket. Mustafa, third time in this over. Isam tries, beautiful shot down to wideish long off. One is looking for the second, but absolutely sacrifice. And one more wicket is back into pavilion. It's 47 for the loss of 4 wicket. Good work done by the fielder. And the 5th wicket in the form of run out is back into pavilion of Roof Tech. After a small cameo there from Isam, he's out for 8 after facing 5 deliveries. It's a very good contribution in the end from Isam. It's 48 for the loss of 4 wicket. Last 3 deliveries remaining in the innings. So lights are on of Urwa cricket ground. Time is exactly 5 in the evening. Mustafa bowling away from us to Taufik. Nicely driven that one down to long on region. 2 is the call. In comes the throw. Athletic work there from Karthik for the run out, but not quite enough to get the result. A couple of runs has been taken. And with that couple of runs, 50 comes up. 50 comes up here for Rope Tech. 50 for the loss of 5 wicket. And have a look at it on the replay. Now umpire signaling that the fielding team exceeds the time limits. So that for 2 balls, there is a punishment of bringing one fielder inside the ring. Only for the 2 deliveries. 1, 2, 3, 4, 5 fielders inside the ring. And here is Mustafa. 5th time is over. Right arm over the wicket balls to Taufik. Taufik went for the drive. Karthik misses it. Frustration for the bowler. By call by umpire. Every run going to be very crucial. 51 for the loss of 5 wicket. Last ball of their innings is coming off of Roof Tech Kadipala. Roof Tech Kadipala also got a very good season. In the last season also they got into the semi-final in one big tournament. Roof Tech Kadipala. And now they are performing very well against Team Matrix. Lofted at one, right in the vacant area. No, there is a fielder in the mid-wicket waiting for the catch. So last delivery of their innings. Wicket number 6 is back into pavilion. They completed their 7 overs quota and they scored 51 valuable runs at a rate of 7.46 runs per over. And they set a target of 52 to win the match for Team Matrix. And it's going to be a very good total on the board. And leading from the front, Altaf Walpadi scored 23 valuable runs in 19 deliveries. But unless there is all single digits, we can see
But pick up the wickets here. 2 wickets for Anil once again for 16 runs. But I think it's a very good over from Taslim as far as economical over is concerned. Is leading from the front. Bowled 2 very good overs for just 8 runs. So match summary 52 which is required from remaining 42 deliveries. In the 46 little bit correction, yes, 52 required from 42 deliveries. And before the innings will going to start off team matrix, we would like to change the commentary box here. In commentary box, I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone. Thank you. Dhanyavad Satish. So the target is 52 for team metrics. In 7 overs they have to score with the required run rate of just under 7.5 runs per over. And their innings now going to start. The first ball of their innings is now coming up. Openers is now at the crease for team metrics. And the first ball of their innings is now coming up. The bowler starts the proceedings from the commentator box end. The first ball of their innings is now coming up. और गेंदबाज इस वक्त तैयार और दोनों आरंभिक बल्लेबाज भी इस वक्त तैयार. पहला पावर प्ले ओवर टीम मैट्रिक्स की पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ और फ्लड लाइट्स की बत्तियाँ इस वक्त जल चुकी है. यहाँ पर शाम के 6:15 बज चुके हैं और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ और रन से नहीं मिलेंगे. अगले मैच से हर मैच 6 ओवर का खेला जाएगा. राइट फ्रॉम नेक्स्ट मैच एवरी मैच विल बी ऑफ 6 ओवर्स टू बी प्ले. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैनात ओवर द विकेट. इस वक्त गेंदबाजी करते हुए सलमान जबकि सिद्दीक इस वक्त सामना करते हुए. यह गेंद इस बार अच्छी गेंद थी. बल्ले का भीतरी किनारा शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर इस वक्त रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है. 1 रन बिना किसी नुकसान के और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार रिजवान जबकि फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई.
7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए फील्डिंग में जमावट करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर सलमान इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार चिप किया इन द एयर एंड स्ट्राइक टू फील्डर एट कवर पॉइंट। He just reaching for that delivery at the last moment, but not quite get that one right from the middle of the bat. Have a look at this in the replay. देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था, गेंद तक पहुंचे थे लेकिन गेंद को मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करने में असफल और कंफर्टेबली गेंद को लपक लिया गया इस वक्त कवर पॉइंट फील्डर द्वारा 20 गज के दायरे के अंदर। इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है टीम मैट्रिक्स का 1 रनों के योग पर। इट्स 1 for the loss of 1 wicket in the first over. तो इस वक्त नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है और सफवान नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद है और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार सलमान दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो जहां तक का सवाल है अगली गेंद का, तो सलमान इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन फ्रॉम द बॉलर मच स्ट्रेट लाइन। गेंद को इस वक्त ड्राइव करना चाहा, चूंकि बाई का इशारा अंपायर का और बाई के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रन 1 विकेट नुकसान पर। एक बेहतर रन लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाज सलमान गेंदबाजी करते हुए रूफ टेके और गेंदबाज सलमान अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर तो विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार स्विंग किया खूबसूरती के साथ, लेकिन फील्डर मौजूद वहां पर डीप मिड विकेट पर प्रोटेक्शन मौजूद। एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा, 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति हो चुकी है। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 3 रन्स ऑन द बोर्ड, 1 विकेट लॉस and slower start for team matrix. 49 more runs now they have to score for victory in remaining 36 balls, and the required run rate is now gone up to exactly 8.17 16.66 runs per over at this situation. और जहाँ तक का सवाल है गेंदबाजी का, तो देखते हैं इस वक्त BMR एंड की ओर से गेंदबाजी कौन से गेंदबाज शुरू करते हैं। और BMR एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए नंबर 10 जर्सी पहने हुए गेंदबाज शरण कब इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और गेंदबाजी शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद इस वक्त सामना जो कि करने के लिए तैयार बल्लेबाज सादिक और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। इस बार दिस इज अ क्लीन हिट आई थिंक सो एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस। 6 रन्स सादिक के बल्ले से यह छक्का लग चुका है और जरूरतमंद छक्का इस वक्त सादिक लगा चुके हैं। देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और सादिक आमतौर पर ऐसे आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, खासकर पावर प्ले ओवर्स का फायदा उठाने में वो माहिर हैं और यहाँ पर वो छक्का इस वक्त उछाल चुके हैं और इस बीच अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज इस वक्त शरण गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया इनटू द गैप एज वेल। 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े मिस फील्ड और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए।
गेंद तक पहुंच गए थे लेकिन गेंद अंतिम क्षण में थोड़ा सा मिस जजमेंट, देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था। गेंद पहुंची थी इस वक्त वाइडिश लॉन्ग ऑन पर, गेंद तक पहुंचे थे फील्डर लेकिन इस बार गेंद उनके हाथों से छूटी और सीमा रेखा के दीवार पर जा टकरा चुकी है। 4 रनों के और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 13 रनों पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। और इस वक्त उस फील्डर को वहां से हटाकर इस वक्त पॉइंट पर तैनात किया जा रहा है। पॉइंट के फील्डर इस वक्त जाते हुए वाइडिश लगॉन पर और गेंदबाज इस वक्त तैयार। गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए सादिक के लिए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप। वन मोर बाउंड्री दिस ओवर, 6, 4 and a 4 and team metrics are now right back into this match. 17 for the loss of 1 wicket. Second over in progress. और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से गेंद सीमा रेखा के सीढ़ियों पर टकराती हुई और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। और इस बीच कुछ गेंदबाज को समझाते हुए टीम रूफटेक के काटीपल्ला के अन्य खिलाड़ी की किस सही लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त उन्हें गेंदबाजी करनी चाहिए, खासकर पावर प्ले ओवर्स में। और यहाँ पर सादिक जो कि भरपूर पावर प्ले ओवर्स का फायदा यहाँ पर उठा चुके हैं। इस ओवर में 3 गेंदों में वो 14 रन यहाँ पर बटोर चुके हैं और अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार चिप किया, इस बार ऑफ साइड पर, स्कोर ऑफ द विकेट। एक्स्ट्रा कवर पर 4 रनों के लिए। Absolutely fantastic piece of batting performance continuing here from Sadiq. इस बार ऑफसाइड पर देखिए, have a look at this in the replay, just clearing the infield and he finds the gap very well. 6, 4, 4 and a 4. Already 18 runs scored in this over और स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 21 रनों पर। 21 for 1. They are looking in a commanding situation for team metrics. Just a second over in progress in their innings. और फिर से एक बार the bowler is now under pressure. शरण गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली गुड वन। और गेंद कुछ ज्यादा तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और इस ओवर में अंतिम बार शरण गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, रन नहीं मिलेगा। डॉट गेंद पल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद गेंद फॉरवर्ड शॉट लेग पर पहुंची जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। 2 ओवर की समाप्ति बेहतर स्थिति में नजर आता हुआ टीम मैट्रिक्स 21 रन जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। 30 गेंदें बाकी हैं, 31 रन चाहिए विजय के लिए। ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ನಜೀರ್ ಈಡನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಇರ್ಫಾನ್ ಈಡನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ 2023 ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಬೋತ್ ಸರ್. और जहाँ तक इस वक्त सवाल है गेंदबाजी का, मॉनिटर पर आप देख रहे हैं, देखिए जनाब नज़ीर और जनाब इरफान इस वक्त मौजूद हैं जो कि ईडन कृष्णापुरा के मशहूर हस्ती जो कि संगठक हकीम के साथ इस वक्त वो इस वक्त खड़े हुए हैं वहाँ पर। और यहाँ पर जहाँ तक सवाल है इस मैच का, तो इस मैच में इस वक्त तख्ता भारी लगता हुआ टीम मैट्रिक्स का। 18 रन पिछले ओवर में बने और 18 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाज इस वक्त नया ओवर प्रारंभ करते हुए सलमान। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ऑफ स्टंप से बाहर इस बार स्टीयर किया। बैकफुट पर जाने के बाद गेंद पहुंची इस वक्त गली पर, नॉट मोर देन अ सिंगल एंड इन फैक्ट द स्कोर बोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर इन फैक्ट। और 29 balls remaining, 30 runs more now they have to score for victory. अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद तक पहुंचना चाहा, वाइड मिसिंग 2 फॉर सादी ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट। रिसेक रन के साथ रिक्वायर्ड रन और बचे हुए गेंद दोनों बराबर हो चुके हैं। 29 29। और अपनी अगली गेंद लेकर सलमान इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को चिप किया, क्लियरिंग द जस्ट इनफील्ड डाउन टू एक्स्ट्रा कवर। इन फैक्ट ही फाइंड्स द गैप एज वेल, ही गेट्स अ कपल रन फॉर दैट स्ट्रोक। और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका
चुका है। कुल मिलाकर 25 रन एक विकेट के नुकसान पर, 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक प्रोग्रेस हियर नाउ फॉर टीम मैट्रिक्स इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। और इस बार रक्षात्मक तरीके का खेल, 1 रन का इजाफा, 26। .3 overs gone, 26 runs on the board. इस बार straight into the hands of fielder and that is the end of the batsman. 2 wickets lost for 26. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಿನ್ಮಯ್ ಇವರಿಗೆ ಹಬೀಬ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಿನ್ಮಯ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಬೀಬ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವು ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಿನ್ಮಯ್ ಇವರ ಭವಿಷ್ಯ उज्ज्वलವಾಗಿರಲೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. तो यहाँ पर कुछ बातचीत हम पार करते हुए और जहाँ तक सवाल है कुछ खिलाड़ी वहाँ पर कुछ प्रेक्षक कहना पड़ेगा यहाँ पर सीमा रेखा के अंदर दाखिल हो चुके हैं, तो अंपायर रोलैंड पिंटो ने कहा कि उनको बाहर भेज दिया जाए और खेल एक बार फिर से पुनरारंभ यहाँ पर होता हुआ। और जहाँ तक सवाल है सलमान का, तो सलमान इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट वन, जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। और अपनी अगली गेंद लेकर सलमान गेंदबाजी करते हुए ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुए एक बार फिर से वाइड का इशारा, रन्स नहीं मिले, रन्स मिलेंगे एक वाइड के रूप में और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 27 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉट फाइन लेग पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, कोई बैकअप नहीं वहां पर, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज यहां पर दौड़ चुके हैं और पूरा कर चुके हैं 22 के रूप में। 8 रन इस ओवर में बने, 8 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर, 1 more good over in टीम मैट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू comes to an end and 3 overs completed, 29 on the board, 23 required in remaining 24 डिलीवरीज। जहाँ तक लक्ष्य तक पहुँचने का सवाल है तो लक्ष्य इस वक्त आसान इस वक्त लगता हुआ, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है यहाँ पर रूफ टेक का काटीपल्ला के गेंदबाजों के लिए। देखते हैं बचे हुए 4 ओवर में उनकी पारी में क्या होता है। तो एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला सौहार्दा ट्रॉफी 2023 के नाम पर इस सुंदर से विशाल से मशहूर यूसीजी उर्वा क्रिकेट मैदान पर इस वक्त एक शानदार प्रगति करते हुए एंड फैंटास्टिक टूर्नामेंट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर इन द नेम ऑफ सौहार्दा ट्रॉफी 2023 विद प्राउडली ऑर्गेनाइज्ड अंडर द ग्रेट लीडरशिप ऑफ मिस्टर हकीम एंड मिस्टर शाकिर एंड दिस टूर्नामेंट इज नाउ प्रोग्रेसिंग अलॉन्ग नाइसली। और इस बीच गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिना तो ऊपर द विकेट, पहली गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया, चिप कर दिया इस वक्त मिड ऑफ की दिशा में, गेंद जब तक पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 30 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका, 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर नाउ। और गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, राजेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ऑफ स्टंप से बाहर कट करना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर 30 रनों पर रुक चुका है। 4था ओवर इस वक्त प्रगति पर और डॉट गेंदों की सख्त जरूरत इस वक्त रूफ टेक काटीपल्ला के गेंदबाजों को इस मैच में वापसी करने के लिए। ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा, इस मोड पर वाइड फेंकना सामने वाले टीम को तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में रन्स प्रदान करने के बराबर होगा। और यहाँ पर गलती यहाँ पर करते हुए गेंदबाज ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी थी उन्होंने। इस बार रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ इम्प्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को खेला डीप थर्ड मैन पर, जब तक गेंद फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस।
और गेंदबाज फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद ड्राइव करना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट एट द लास्ट मोमेंट, he's got a single for that stroke. 34 now for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. Still in overall calculation it's going to be 20 balls left in their innings, 18 more runs now they have to score for victory. 20 गेंदें बाकी, 18 रन और चाहिए विजय के लिए। ये गेंद इस बार रक्षात्मक तरीके के खेल, हाफ स्टॉप फॉलो थ्रू में, लेकिन एक रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके, इससे पहले के गेंद को मिड ऑफ पर फील्ड करते, फील्डर बैकअप करते, एक रन का इजाफा। 35 for 2 and this is the 4th over in progress. 17 required of 19 balls. इस बीच गेंदबाज राजेश अपनी ओर की अंतिम गेंद लेकर तैयार, इस्माइल सामना करते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद इस वक्त टकरा चुकी है स्टंप पर, तो यहाँ पर निर्णायक मोड़ पर एक विकेट प्राप्त कर चुके हैं। इस्माइल रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, चूंकि गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, राजेश की गेंद थी, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, गेंद सीधे स्टंप्स पर टकराई, रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में सफलता उन्होंने नहीं प्राप्त की और आखिरकार अपना विकेट गंवाकर बोल्ड आउट के रूप में पेविलियन वापस लौटते हुए 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 35 for 3 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर, 17 रिक्वायर्ड ऑफ 18 डिलीवरीज। और देखते हैं उनकी पारी में बचे हुए 3 ओवर में क्या होता है। तो इससे पहले कि 5वां ओवर आरंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंग्रेजी में आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए सतीश को। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಸೊ 17 to get from 18 balls and little correction, 35 for the loss of 3 wicket, absolutely. It's 17 to get from 18 balls. The match is looks to be very interesting, but Team Matrix might be the favorite by the condition of the game is concerned, and 2 very good batsmen out there in the middle, and Karthik as well as Sadiq. The nicely swept that one down to square leg region, looking for the second. In comes a throw. They completed a couple of runs. Even they're going for the third. Yes, they completed a third run as well. Disaster for Team Roof Tech Katipalla. Now 14 runs required for the victory in 17 balls. So Karthik. This time I went for the reverse sweep. They're going for the quick single. His arm trying for the run out, but Karthik is a very good runner between the wicket. And Little Master is very quick between the wicket. He's, stealing the singles here. 39 for the loss of 3 wicket. 13 more run required for the victory. Altaf bowls. Went for the sweep shots. Siddiq. Sadiq. So far he's batted very well, brilliantly. The 28 runs he scored in just 15 deliveries. Altaf. Balls to Sadiq. Sadiq this time waiting for the delivery. Just placing the ball quite nicely down to long off region for a single. And with the single scored numbers on to 40 for the loss of 3 wicket. The one-man show from Sadiq. What a great innings is played for his team. Full toss. Nicely placed it down deep cover point region. Altaf already quite deliberately bowled that full toss, so that batsman can make the mistake of hitting the ball and he can get the wicket, but Karthik is this time pulls that one down to mid-wicket region boundary, but there is a protection has been given in the deep. Now umpire saying that ball well within the playing area of field, playing height of that delivery, where Sadiq pulls the ball down to mid-wicket for a single. So 10 runs required from 12 balls, 30 runs unbeaten from Sadiq in just 18 deliveries. One of the best innings in this particular match. 18 balls, 17 balls and 30 runs is scored. With the help of 1 6 and
Three delightful boundaries. 12 required from 2 overs. Rajesh brought it attack. Sadiq is a striker. Outside line of off stamp, and it's going to be a delivery which is the batsman couldn't manage to reach that one. Outside the line of off stamp, 10 required from 11 balls. One more dot delivery will go in to put some pressure. Drives, nice looking placement. Down to deep extra coverage. Oh, misjudgment. Misjudgment in the sense it's an extra bounce while fielder tried to collect the ball. Have a look at it on the replay. Crashing extra cover drive. And the fielder charging from the deep lock. Oh my goodness, bad luck. Absolutely bad luck. Sometime it's happening in the cricket ground. Maybe the ball is hitting some stones which is there in the outfield. Then just changing the direction and getting a bounce. 6 required from 10 balls. Sadiq went for the drive, expansive drive, misses it completely. One more dotted delivery. Ali Sneha Malamar ತಂಡದ ನಾಯಕ. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಗಾಗಿ. Wide outside the line of off stamp. Punishable from umpire. 5 required from 9 balls. Rajesh bowls. Sadiq just places the ball down to short point region for a single. With that single, Skopanda moves on to 48. 4 required in 8 balls. Excellent performance from Team Matrix, which is continuous. But here is a tossing ceremony is going on between captain of KFC Kodikal Akim and then Kiran of little correction Pratap of Sneha Malamar. This time going for the quick single and they complete it. By call by umpire. One more addition. 49 for the loss of 3 wicket. News here is that captain of Sneha Malamar won the toss. They elected to field first. Nicely driven there from Sadiq. Can they come back for the second? Karthik definitely is a very good runner between the wicket. They completed a couple of runs. Now umpire asking for the third umpire. One of the best innings I want to say from Sadiq. We need to wait for the umpire signal. More than 75% of the runs which is taken there by Sadiq himself. And so far in this tournament, some very good innings has been played. Azim of Zaman Boys Color Cup played a great innings of 24 runs in 12 balls. Rashid Baba also played a good innings. This time looks like the batsman a little bit struggling to reach his home. But third umpire have to decide whether the batsman is short of the crease or not. Lights are on here in UCG cricket ground. So not out call from umpire. Sadiq is safe there. So scores are level. Just 1 run required for the victory. 1 run required. Last over, 1 run required for the victory. That's just a format is left in this game. Isam can try for the tie in this match. For that, he need to bowl the maiden over. Isam have to bowl a maiden over if they wanted to tie the match. But Karthik is the one who wanted to get the winning run from his bat. But the man who is responsible for the victory is Sadiq.
One ball which is a dotted delivery. First step which is won by Isam. Still have to win another 5 steps. That means 5 dotted deliveries. That's it. Catch it is a call, but it's a winning run coming up here from the bat of Karthik. Comprehensive victory for team Matrix. Defeated their opponent Rooftech Katipalla by a margin of 7 wickets, and a great victory for Team Matrix. Their winning run continues here. Team Matrix, they got an outstanding season which continues here in UCG cricket ground. Congratulations Team Matrix for your wonderful victory over Rooftech Katipalla. They defeated a very strong opponent and through to the semi-final of this prestigious cricket tournament. So now one more big match is coming up. Sneh Malamar versus KFC Kodikal. And news here is that after winning the toss, Sneh Malamar, captain, elected to field first. And that means KFC Kodikal, they were going to bat first. KFC Kodikal, of course, just like mentioned about most of the top teams which is won some prestigious titles, but only KFC Kodikal in this particular season, their performance is not really up to the mark, and suddenly they wanted to bounce back in this Souhardha Trophy 2023, and for that they needed to perform very well, especially against a formidable team like Sneh Malamar, one who defeated very strong opponent Goryang Boys comprehensively in the first round. And it's going to be a very interesting match between these two teams, KFC Kodikal versus Sneh Malamar. We'll take a short break here.
welcome back once again for the quarterfinal of this prestigious Souhardha Trophy 2023, which is proudly organized by Souhardha Friends in this most beautiful UCG cricket ground. After that, floodlights are on, and the ground is looking so beautiful. And we are all set now for the big match between KFC Kodikal versus Sneha Malemar. So a lot of cricketing action is coming up. After that, I'm announced some tournaments in Urwa cricket ground. We are going to the one more big matches will be organized by Suttarpete Friends Circle in the name of SFC Trophy 2023. Incoming 26th and 2nd of 26th of March and 2nd of Sunday, and the cash will be of 50,000 and 30,000 will be the runner-up with the SFC Trophy. And the first A pool, which will be of Manglore team. B pool will be of local teams. That means that 26 Mangalore pool will be the tournament will be organized, and from B pool, that is the local pool, will be organized on 2nd of April, and the tournament will be organized in Fisheries College Ground, Ekuru. And the interested team will going to enroll their name with the cash prize of rupees 5,000, entry fees of 5,000 they need to pay. So that I request each and every cricket lovers each and every team, please cooperate with the organizers, and please enroll your name for the Suttarpete Friends Circle Trophy 2023, which is going to commence on 26th March and 2nd of April in Fisheries College Cricket Ground. So all set now for the big moment of this tournament, Sneha Malemar versus KFC Kodikal. After winning the toss, captain of Sneha Malemar elected to field first, and so that opening batsman for KFC Kodikal, quite surprisingly, Akeem came as an opener for the side along with Tazuddin. First ball, wow, what a shot there from Abe. This time I think not Izaz, I think so. Izaz, one of his typical cricketing stroke. He loves to play the shot, one of the best slog sweeper of the ball. Have a look at that one, absolutely fantastic. Right from the middle of the bat. And swept that one very hard down to deep square leg boundary for 4 runs. Positive start there from KFC Kodikal. Altogether 29 boundaries in this particular tournament. And the equal number of sixes, just less than boundaries. The 24 sixes. This time up and over, down to deep cover point region, fielder behind the ball. Rizwan behind the ball before he returns the ball to the hands of wicketkeeper Pratap. Ample time for Izaz to complete that couple of runs. Very good start there from Izaz. Dilip again bowling from the far end. Right arm over the wicket, again up and over, again he plays it quite nicely. One bounce into the fence for 4 runs. Izaz is on fire. What a great shot that one, with his effort, batsman going after that one, lofted that one down to deep extra cover, one bounce into the fence for 4 runs. One of the spectators catching the ball down at deep extra cover. And the scoreboard now moves on to 10 on the board without loss of any wicket. The next match, one more big match, the semi-final in the local pools. Of course, Team Matrix will go into face Zaman Boys Ka Ladka. This is the last quarter final. Dilip bowler's back drive, opportunity for run out which is created. Tazuddin is out of the crease. Dilip wanted to hit the stumps, but just misses the stumps. Then Tazuddin survives. 10 without loss of any wicket. Positive start there from Izaz. Dilip bowls, beautifully bowled, good comeback, slower one. Dilip just quickly realizing that in this condition,
bowling with the quick delivery. It's going to be easy for the batsman to pick that one. So he's just reducing the pace. Bowled a flighted and slower delivery, and Izaz completely missed out. Bowled him, clean him up. Dilip celebrates that wicket. Why not? After that, he's got a 2 punishment with the boundary. Then he wanted to back badly in this over. Have a look at the delivery. Magnificently bowled. Cleaned him up with the beauty of the delivery. Izaz departs after playing small cameo of 10 runs in just 6 balls. He's back into pavilion stand for the loss of 1 wicket. KFC Kodigal. Special thanks to Sandeep of Sai Electricals. So far, he's cooperated very well in our commentary box, providing very good sound system. Now he's providing light for our scorer Mahesh. He's finding a little bit hard to find the small numbers in the scoreboard, scorebook. So here is Geetesh will going to start the fresh over. Second over of the power play. Right arm over the wicket. And Tazuddin just taps the ball down to short cow point region for a single. With that single scoreboard numbers on to 11. So 11 for the loss, 12 for the loss of 1 wicket. Again, Shakir chips that one nicely down to the short cow point region. And they completed a couple of runs quite easily. Shakir is a key man now for KFC Kodigal. Because KFC Kodigal, just I mentioned about in this particular season, they are not really in that much of form. So only because of the batsman like Shakir Hakim have to perform very well, especially the Tazuddin is the one. Yesterday he came in in the Kulai Premier League. Tazuddin played some very good innings for his team where he represented. So that is a good sign for KFC Kodigal. Some players are back the natural form. This time ball is in there, going for the big shot, chance of run out in the non-strikers, and wide throw coming from the field. The wicket-keeper Pratap almost looks like his wonderful opportunities created for the run out. But Pratap couldn't manage to capitalize that one. And both the batsmen crossed off for a single. 16 for the loss of 1 wicket. Gitesh balls. Slower one, but line is outside the leg stamp. Lucky escape of Gitesh because Shakir almost looks like he will going to hit the ball down to square leg. There is no protection has been given in the deep. Change of pace there from Gitesh, but line is not good. 17 on the board. Desam Tazuddin drags the ball from outside the line of off stamp to pick the single down to deep long, and of course intention is to play that slog sweep shot down to square leg. One more over completed. Good over from Gitesh. And altogether 8 runs came from that over after completion of over number 2. It's 18 for the loss of 1 wicket. KFC Kodigal really going very well in the first 2 over of the power play. And team Stay Malamar might be thinking about one good over here, because 18 is a very good score for any team, especially in this condition under floodlight. 9.5 runs seems to be it's a good run rate by losing only 1 wicket. But need to capitalize the start what they really got. KFC Kodigal, if they goes on to get the runs in the similar run rate, it's going to be almost 45 to 50 runs. But their first priority intention
to get that runs so that they can get some psychological advantages. Because in this condition, even 40 runs is also the very good run to depend, because this is not a 7 overs game. This is a 6 overs game now. So 4 overs remaining from the far end. Ranjit brought into attack. Drives nicely down to deep long off region for a easy single. So with that single score, Namuzan to 19 for the loss of 1 wicket. 19 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Looks like under floodlight we are having a little bit lights. It's not a full powered light. We can see here in some part of the ground the lights which is not recovering. Going for the safe shot. Wicket keep behind the stump, misses it completely. Wide call by umpire, rightly so. 1 + 1, 2 more to the total. With that addition of that couple of runs, Kobar Namuzan to 21 for the loss of 1 wicket. Ranjit back to his bowling mark. Right arm over the wicket to Tazuddin. Tazuddin this time went for the reverse sweep. Good change of line there from Ranjit. Good thinking, clever thinking. Just seeing the intention of the batsman Tazuddin that is going for the switch it. Just changing the line quite cleverly. It's a 21 for the loss of 1 wicket in the over number 3 is in progress. Ranjit again back to his bowling mark. From the BMR end, Tazuddin went for the big shot. Chance of run out, suicider. Absolutely suicider. That's all happening when you are playing dotted deliveries. He wanted to get over the top of the bowler, but by doing that, mistiming the ball, and Ranjit on his follow through completes the formalities. Tazuddin's disappointment performance continues for KFC Kodikal. Again, he fails to contribute with a big number of runs. He just scored 4 runs out of 6 deliveries. It's 21 for the loss of 2 wicket in the over number 3 is in progress. So new batsman in is one more very recognized and very useful middle order batsman for KFC Kodikal. Akim Surinje came into bat. Ranjit, just like I mentioned, 1 good over is required for team Sneha Malemar. Ranjit trying for that. Beautifully ball. Absolutely perfect. They're going for the quick cycle this time. Miscommunication and misunderstanding between the bowler and the wicket keeper. And maybe after Ranjit saying that Pratap is charging to the ball, have a look at that one. Ranjit thought that Pratap will go in to collect the ball. Pratap thought that bowler will go in to collect the ball. By doing that, they misses the golden opportunity to make the run out. Both the batsmen toss off for a quick single. 22 for the loss of 2 wicket in the over number 3 is in progress. Ranjit. This time appeal for leg before wicket. Umpire says that ball just going down the leg stump. Leg by call by umpire. Very, very confident shout there from Ranjit. Maybe he's very confident because the batsman shuffled across the line after delivery. But the fact that Ranjit bowled a little bit wide of the crease, angle of the delivery might be going to miss the leg stump. That's why umpire Rajesh Patil is not interested. 23 for the loss of 2 wicket in the over number 3 is in progress. Last time in this over. This time chip that one again. Ball is in there. Fielder can't reach there. And here is the batsman coming back for the second. Before the fielder from mid wicket region to collect that one. And 2 more to the total. Manjunath down at deep long on region. And over number 3 completed. It's a 25 for the loss of 2 wicket. Have a look at that. The beauty of the nature. It's absolutely amazing view of nature's beauty. Absolutely orange. And behind the coconut tree. And that's a sign of sunset just completed here. And have a look at the beauty of nature. It's absolutely amazing to watch. Those who are watching live telecast of this cricket tournament through their YouTube channel, this is a magnificent view of nature's beauty.
And Gopi, 25 for the loss of 2 wickets. It's going to be a good start for KFC Kodigal, especially considering that it is under floodlight match, and 25 is always going to be a good score. And but in remaining 3 overs, Gopi, if you manage to continue that performance, it's going to be a 50. And 50 in this condition, I think it's going to be a winning total. And maybe Sneha Malapur thinking about they wanted to restrict the batsmen of KFC Kodigal in remaining 3 overs, but 2 batsmen wanted to continue that performance what they left in the 3 overs. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया 3 ओवर में जो 25 रन भी अगर बटोर लेते हैं तो 50 रनों का आंकड़ा यहाँ पर चुनौती भरा साबित हो सकता है अंडर दिस कंडीशन। और क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज शाकिर और हकीम जो कि काफ़ी अनुभवी बल्लेबाज हैं, और ये दोनों अगर 3 ओवर में जमते हैं तो निस्संदेह KFC कोडिकल 50 रनों के आंकड़े तक पहुँच सकता है। अगर 50 रनों के आंकड़े तक पहुँच गया KFC कोडिकल या फिर 50 रनों के आंकड़े को पार करता है तो निस्संदेह यहाँ पर खतरा पैदा हो सकता है स्नेहा मालेमार के लिए जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे। तो इस वक्त उनके सामने ये मुद्दा ठहरता है कि उन्हें कम से कम स्कोर पर इस वक्त रोक कर रखे, शायद 40-45 के अंदर रोक कर रखे, ताकि उनको आसानी हो जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे लक्ष्य का पीछा करने में। इस बार स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। अंडर फ्लडलाइट्स एक खूबसूरत नजारा हम यहाँ पर देख रहे हैं और निस्संदेह दर्शकों से खचाखच मैदान इस वक्त भर चुका है। एब्सोल्युटली जैम पैक स्टेडियम, और यहाँ पर एक बेहतरीन प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला सौहार्दा ट्रॉफी 2023 की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई। अगली गेंद, ये गेंद पैरों पर टकराई, लाइन के बाहर टिप्पा खाई थी और गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट पॉइंट पर। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 27 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। पारी की भागदौड़ को इस वक्त शाकिर और हकीम इस वक्त संभाले हुए और किरण इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए तैनातों पर तो विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर मोड़ा खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में क्लीन कलेक्शन, थ्रो पहुंचा इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 28 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। एब्सोल्युटली फेस्टिवल एटमॉस्फेयर यहाँ पर छा चुका है इस सुंदर से विशाल से UCG उर्वा क्रिकेट मैदान पर। लॉर्ड्स ऑफ क्रिकेट, अंडरआर्म क्रिकेट के नाम से जो जाना जाता है। और यहाँ पर अगली गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली गुड वन, लिटिल बिट ऑफ कट रहे थे लास्ट मोमेंट केप्लो, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। बल्लेबाज को वंचित करने के बाद स्कोर रुक चुका है इस वक्त 28 रनों के ऊपर। और जहाँ तक सवाल है अगली गेंद का तो किरण इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, हकीम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। ओवर की समाप्ति और पहला बेहतर ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुका है अगर स्नेहा मालेमार के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए, जो कि जिसमें सिर्फ 3 रन किरण ने प्रदान किए और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन जोड़ चुका है KFC कोडिकल। और ऐसा कहना पड़ेगा इस ओवर की बदौलत स्नेहा मालेमार कुछ हद तक इस मैच में वापस आ चुका है। 2 ओवर का खेल बाकी है और देखते हैं इन 2 ओवर में जिस तरीके की गेंदबाजी किरण ने इस ओवर में की है, किफायती गेंदबाजी, उस तरीके की किफायती गेंदबाजी अगले 2 ओवर में स्नेहा मालेमार के गेंदबाज कर पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा अंतिम लीग मैच, अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ इस श्रृंखला का। इस मैच के बाद पहला सेमीफाइनल मैच जो कि खेला जाएगा टीम मैट्रिक्स और जमन बॉयज का लड़का के बीच में, और उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल मैच होगा NM मैंगलोर और इस मैच की विजेता टीम के बीच में। तो इस वक्त मुकाबला जारी है इस श्रृंखला के सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए स्नेहा मालेमार और KFC कोडिकल के बीच। ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार तैनात ऊपर द विकेट, पहली गेंद कहना पड़ेगा ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, मिड विकेट पर गेंद पहुंची और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। खूबसूरती के साथ स्टेप आउट करते हुए गेंद को इस वक्त खेल दिया था मिड विकेट पर और 2 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुका है। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार प्रताप के हाथों से गेंद छूटी और निशाना भी चूका और यहाँ पर निशाना चूका और दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े। अंतिम क्षण में प्रताप के हाथों में गेंद पहुंची थी जरूर और उनके हाथों से गेंद चूकी और निशाना उन्होंने दागा, तुरंत ही स्ट्राइकर एंड पर उनका निशाना चूका और फलस्वरूप ओवर थ्रो के रूप में यहां पर बल्लेबाज दूसरा रन न प्राप्त कर चुके हैं। तो दोनों मौकों में दोनों बल्लेबाज बच चुके हैं। पहले हकीम बचे कॉट बिहाइंड द विकेट, कॉट बिहाइंड के रूप में
कैच आउट के रूप में, और उसके बाद यहाँ पर शाकिर बचे रन आउट के रूप में और 2 रन यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं। और एक बार फिर से इस वक्त तैयार दिलीप गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद उछालना चाहा, प्रताप के हाथों में गेंद, इस बार नहीं बच पाए शाकिर। हालांकि हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर और इस वक्त वो पेविलियन वापस लौटते हुए गेंद को ऑन साइड पर फ्लिक करना चाहता। पिछले 2 गेंद पहले जिस तरीके से उन्होंने खेला था, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ, गेंद को आगे गए, गेंद को ऑन साइड पर इस वक्त उछालना चाहा, लेकिन चूंकि गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और प्रताप ने अपना काम तमाम किया, गेंद को विकेटों के पीछे कलेक्ट गैदर करने के बाद 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। Next match will be the first semi-final match will be played between a team Matrix versus Zaman Boys Kalladka, and because of that I request all the players of these 2 teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chat. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಜಮನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. सो बैक टू दिस गेम, बातचीत और पानी इस वक्त लिया जा रहा है, पानी ग्रहण इस वक्त करते हुए खिलाड़ी, और एक बार फिर से अपने स्थान पर लौटते हुए एक बार फिर से आरंभ होता हुआ 30 चौके और 26 छक्के इस श्रृंखला में लग चुके हैं. 34 एंड 26 सिक्सेस हिट इन दिस टूर्नामेंट अब तक. और देखते हैं बचे हुए 4 मैचेस में इस मैच को मिलाकर और कितने चौके और छक्के यहाँ पर दर्ज होते हैं. तो इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए दिलीप आगे बढ़ाते हुए, माफ कीजिए, गेंदबाजी, एक गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला खूबसूरती के साथ और 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं. आरिस का आगमन हो चुका है नए बल्लेबाज के रूप में और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. शाकिर चतुर खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, आक्रामक स्ट्रोक लगाना चाहा इस वक्त, लेकिन यहाँ पर गेंद को ठीक तरह से गैदर करने में असफल. जोखिम भरा रन जरूर था लेकिन बचते हुए. और जहाँ तक सवाल है स्कोर का, तो स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर. हकीम आउट हो चुके थे 2 गेंद पहले, शाकिर नहीं, और शाकिर इस वक्त जो कि क्रीज पर मौजूद, आरिस से सामना करने के लिए तैयार. और गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दिलीप इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ, गेंद को निकाला जरूर लेकिन 1 रन मात्र मिलेगा और शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड कर लिया. और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 35 रन. 7 रन इस ओवर में बने, 7 रन स्कोर्ड इस ओवर, और कुल मिलाकर कुछ हद तक अच्छा ओवर कहा जा सकता है. पिछले 2 ओवर में 10 रन बने, 3 ओवर के बाद स्कोर था 25 रन, अब स्कोर है 35 रन, जबकि 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं और अंतिम ओवर उनकी पारी का इस वक्त बाकी. और पिछले 2 ओवर में ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतर कमबैक कर चुके हैं स्नेहा मलेमार के गेंदबाज. अंतिम ओवर का खेल बाकी और कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से अंतिम ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ. रात धीरे धीरे इस वक्त रात हो चुकी है और घना अंधेरा इस वक्त मैदान के ऊपर जो कि छा चुका है, और उस घने अंधेरे को चीरती हुई फ्लडलाइट्स की रोशनियां इस मैदान को इस वक्त इस मैदान पर गिरती हुई इस मैदान को चकाचौंध करते हुए. और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला, प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट सौहार्दा ट्रॉफी 2023 की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई. और जहाँ तक सवाल है इस मैच का, तो अंतिम लीग मैच इस टूर्नामेंट का यहाँ पर खेला जाता हुआ. गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज, पहली गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त, शॉट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची, तेजी के साथ थ्रो पहुंचा जरूर लेकिन यहाँ पर 1 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 36 रनों पर. गीतेश गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ कर चुके हैं और शाकिर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद इस बार ड्राइव किया, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, इन फैक्ट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक. और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका 37 रनों पर, 37 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. रन्स अभी भी सिंगल्स पे बनते हुए और एक बार फिर से गीतेश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार स्विंग किया है, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग मारेगा जवार 6 रनों के लिए.
इसके बल्ले से ये स्ट्रोक इस वक्त लग चुका है शफल होते हुए। देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, बल्लेबाज के पास परिपूर्ण समय था कि शफल होने के बाद गेंद को उछाल सके मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करते हुए, और गेंद सीधे सीमा रेखा को पार कर चुकी है, रास्ते पर जा गिरी है 6 रनों के लिए, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर। 43 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 6 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस। गितेश एक बार फिर से तैयार, ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाह चुके, इस बार रनआउट का खतरा, इस वक्त बैक हैंड थ्रो, प्रताप का निशाना चूकता हुआ, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का लेग बाई के रूप में, और लेग बाई की इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 44 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 44 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 6 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। अंतिम 2 गेंदें बाकी। गितेश इस वक्त तैयार, ड्राइव किया, कम्स डाउन द ट्रैक, इस बीच फील्डर काफी पीछे, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, स्ट्राइकर रन पर थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास समय था कि 2 रनों के साथ वो अपना छोड़ पर वापस लौट सके। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 46 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 46 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 6 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस। इस बार चूके प्रताप गेंद को टटोलते रहे और आखिरकार गेंद को पकड़ चुके हैं, और इस बार रन आउट हो चुका है। 1 रन जुड़ेगा, विकेट भी गिरेगा शाकिर का, बाई का इशारा अंपायर का, और 6 ओवर के बाद स्कोर है इस वक्त 47 रन। देखिए किस तरीके से हुआ था इस अंतिम गेंद पर। 47 द स्कोर, स्कोर्ड बाय KFC कोडिकल in the stipulated 6 overs. So 48 the target for Sneha Malava to qualify for the semi-final of this competition to face Manglore. 48 they have to score in the stipulated 6 overs. और जहाँ तक सवाल है, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच होकर पुरस्कृत हो चुके इस वक्त सादिक का टीम मैट्रिक्स के, जिन्होंने 37 रन बनाए थे सिर्फ 22 गेंदों पर। इसको 37 रन इन जस्ट 22 डिलीवरीज, एंड बिकॉज ऑफ दैट फैंटास्टिक नॉक सादिक ऑफ Team Metrics adjudged the man of the match. I request Mr. Sadiq to please go on to the stage and receive the man of the match award from our honorable guests. और जहाँ तक सवाल है यहाँ का, तो 48 रनों का लक्ष्य, और देखते हैं उनकी पारी में यहाँ पर क्या होता है। 6 ओवर में 48 रन बनाने, 48 they have to score in the stipulated 6 overs with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी चंद लम्हों बाद। तो यहाँ पर काफी घना अंधेरा छा चुका है, घना अंधेरा यहाँ पर छा चुका है, और यहाँ पर फ्लडलाइट्स की बत्तियां इस घने अंधेरे को चीरती हुई मैदान को रोशन इस वक्त बनाती हुई, और इस रोशनी तले यहाँ पर इस मैच का द्वितीयार्ध यहाँ पर प्रारंभ होता हुआ, और स्नेहा मालेमार के लिए इस वक्त KFC कोडिकल ने 48 रनों का लक्ष्य रखा है 6 ओवर में। देखते हैं स्नेहा मालेमार के बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं। तो इससे पहले कि उनकी पारी की शुरुआत हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंग्रेजी में आगे का आंखों दिखा सुनाने के लिए सतीश को। तो सतीश, 48 रनों का लक्ष्य, 48 द टारगेट इन 6 overs and exactly 8 runs per over the required run rate for them at this situation, and as far as the victory is concerned for Sneha Malemar, खासकर पावर प्ले का फायदा उन्हें पहले 2 ओवर में उठाना होगा, और एक बेहतर बल्लेबाजी उन्हें करनी होगी। खासकर पहले पावर प्ले ओवर्स में अगर वो कम से कम 18 से 20 रन बटोरते हैं तो निस्संदेह अपने सही पटरी, अपनी गाड़ी को सही पटरी पर ला सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है KFC कोडिकल का, तो यहाँ पर KFC कोडिकल को राइट फॉर द फर्स्ट ओवर बेहतर गेंदबाजी करने के, स्नेहा मालेमार के सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप पर अंकुश लगाने के लिए। फिलहाल जहाँ तक 48 रनों का लक्ष्य है, अंडर दिस कंडीशन दिस स्कोर इज कॉम्पिटिटिव जैसा कि आपने कहा, और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि ये द्वितीयार्ध इस मैच का एक रोमांचक होगा, और एक बेहतरीन क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा इन दोनों टीमों के बीच में।
Thank you very much, Gopi. So, just like I mentioned about 48 runs, which is required for team of Sneha Malamar. Under this condition, definitely it's going to be a good total. But we have to see the batting department of Sneha Malamar. It's not a pretty ordinary batting department. They really got some excellent batting department, especially these two batters, Ravi Padayuru as well as Manjunath, one of the great strikers of the ball, especially in tennis ball cricket, underarm cricket. They're known as one of the best striker of the ball, and wait and see how well they will go to get the start. All up to that 2 over of the power play, how these two batsmen will go into capitalize. And if you go able to get the good start, and they can be the favorite of winning this match. But KFC got to call after getting 48 runs. They doesn't want to lose this match. The bowlers definitely going to try hard for the victory. Chetan brought into attack. First ball, right above the wicket. This time Salyan over the top, down to deep long off. One bounce collected by the fielder, and before the fielder returns the ball to the hands of Chetan, ample time for Ravi to back the couple of runs. So just like I mentioned, the intention is very clear from Ravi that he wanted to go over the top of the infield. He wanted to capitalize the fielding restriction in the power play. And first ball itself is going over the top of the infield, and he got a couple of runs. 2 without loss of any wicket. Chetan bowling right arm over the wicket. This time appeal for leg before it, raising his finger is gone. Flum in front of wicket. Harish Patel took his own time to raise his finger. Ravi definitely little bit. Have a look at that one. Oh, that was a beauty. Absolutely beauty of the delivery. No chance at all for Ravi to survive from that delivery. Against the line, he wanted to go for the big shot. And Harish Pandit takes his own time to see the ball, the line of the ball, which is right in the middle stump. And Ravi departs. It's 2 for the loss of 1 wicket. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡದಿಡ್ಡವಾಗಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಡಚಣೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸುಲಲಿತವಾದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಕೂಡ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಬಂದು ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದೌದು, ಅದೀಗ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. Drives that one down to mid-off region for a single. With that single, Skoban moves on to 3 for the loss of 1 wicket in the over number. First is in progress. 3 for the loss of 1 wicket. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಂಥ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದರ ಮಾಲಕರು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಬಹುದು. ವಾಟ್ ಅ ಶಾಟ್ there from Manjunath. One of his typical signature reverse stroke there from Manjunath. A magnificent strike. Have a look at that one in replay. Switch it is comes into play. Play that one right from the middle of the bat down to deep backward boundary for 4 runs. And with that boundary score jumped into 7 for the loss of 1 wicket. Chetan from the far end, bowling with a short run up. Pass umpire Harish Patel, right arm over the wicket bounce. This time Manjunath continues down to deep cow point region. Again the chase here for the fielder, and before the fielder to run back
towards the deep cover point region. Ample time for Manjunath to complete that couple of runs. Manjunath is now playing the exact role what he wanted to play in the power play. Even they lost the wicket of Ravi, but Manjunath is a danger man and scored a couple of runs again. 9 for the loss of 1 wicket. Chetan again. Again, nicely bowled there by Chetan. Seeing that batsman Manjunath once again playing for the reverse sweep. He's changing the line. Bowled outside the line of leg stump. One more dotted delivery. First over completion of over number first. It's 9 for the loss of 1 wicket. Sneha Malamar chasing 48 to win this match. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನದವರು ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಸಾದಿಕ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಲ್ ಪುಂಚಮೆ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಸಾದಿಕ್ ಇವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. This time, opportunity of run out there. Looks like the batsman is out of the crease. Manjunath departs. Every time this kind of dismissal what Manjunath is having, because run out is become the part of his cricket, isn't it? Again, Hakim did a great job by putting the ball into the stumps. Manjunath departs. Huge wicket is back into pavilion. KFC Kodikal got 2 opening batsmen too early. It's a 9 for the loss of 2 wicket. So best wishes which just came from Ismail Kashipatna is wishing best wishes for KFC Kodikal as well as for this Souhardha Trophy 2023. Thank you very much, sir, for your best wishes. Meanwhile, the tournament which is going to commence in coming days, and KFC Kuntalpadi presenting the KFC Trophy 2023 in the memory of Uday Kulal in Shakti Nagara School Ground in coming 26th and 26th March and 2nd of April, and winners will going to get 50,555 with the KFC Trophy. Runners will going to get 30,333 with the KFC Trophy, and the interested team can enroll their name for this tournament by paying 5,000 rupees as an entry fees. Meanwhile, Shakir ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Again, one more single has been taken there. It's a 10 for the loss of 2 wicket. So far it's a very good over continues here from Shakir. Just a single run considered in 3 balls. Geeta is lofted, not quite getting hold of that properly. Extra cover fielder will go to take the catch. Just like I mentioned, under floodlight, hitting the ball is not easy here. Huge wicket here for KFC Kodikal. They're celebrating that wicket. Why not? Geetesh Danyaman departs. Irresponsible cricketing stroke. Seeing this, there is a fielder in the extra cover. No way to go for the lofted drive. Mistiming it. And is back into pavilion. It's 10 for the loss of 3 wicket.
So new batsman Rakshak came into middle. One more very good striker of the ball. Drives that one powerfully down to wideish long on region for a single. Rakshak is off the mark. Rakshak is a good striker of the ball. As like what the name they got, Rakshak can become the savior for team of Sneha Malamar. Is a very good striker of the ball. High bat lift, just like a baseball players lifting the bat. He's a baseball player. And deep on that one down to deep long on region for a single by Yatin. They're coming back for the second. Excellent running between the wicket. But Shakir might be very unlucky. That ball is just misses the stumps. The backhand flick there from Shakir. But ball just missing the stumps. Otherwise, Rakshak might be very dangerous. But here is a Yatin. Oh my goodness. Looks like Yatin is a twisted ankle. He is always absolutely is in trouble. Just I'm observing the replay while he's going back the second run. His left leg which is totally twisted. That ankle which is totally twisted. That means have a look at it on a replay. Just I'm mentioning. Just observe the left leg. Oh my goodness! That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. He's definitely have got serious injury. I want to say because. Quite understandable because if you see that in a replay that was Atin doesn't know actually he is relaxing and running, but all in sudden some up and downs in the ground might be the problem for him. That ball that he has got the injury, that twisted ankle here for Yatin. That's why he is leaving the field. It's not a good sign. It's not a good sign. And the opposition team KFC Godikal helping to take Yatin to get the first aid. And we can understand that after observing the face of Yatin is feeling a lot of pains. That's sure, and might be have need to get some rest. And I think is needed to get immediate treatment for that. This is the second time in this particular tournament, and previous morning match I once observed one batsman has got the same problem, but he didn't got that much of serious injury. That scenario is reminding the last year's incident, the Nutan Trophy 2022, when Sandeep is got injuries. When he's trying to take the catch while going back, then he's fell into the ground and got an injury into his head. Then he's taken into the hospital, but for the God's sake, he's recovered very quickly within 2-3 days, and he's started to continue the cricket. But here is Yatin. I think it's a twisted ankle. Nothing much worried about. More worried about that. But I think needed to 1.5 months or 2 months of the rest. Definitely need to be taken. But we need to see that after getting X-ray, what kind of the amount of injuries he's got on his ankle. So depends upon that, how many days he want to take the rest.
ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಮೈದಾನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಗೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಡಗೌಟನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕೆಳಗೆ, ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನಿತರಿಗೆ ಯಾವ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು. ಸೊ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯತಿನ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ and is taken for the treatment. We all cricket lovers will go and pray for his quick recovery. The injury is always the part of the cricket players. Sometimes unexpected injuries taken place. I request the batters of Sneh Malamar, please enter the ground. ದಯಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. I request the batters of Sneh Malamar, please enter the ground. So Dilip replaced Yatin. Now Rakshak and Dilip have to anchor the innings for Sneh Malamar. It's 13 for the loss of 3 wickets. 48 is the target. Chetan to continue from the far end. 2 overs completed, 13 on the board, 6.5 runs per over.
third over will going to start from the far end. And Arish Padil signaling here. Will go into restart. Resume. The match will go into resume. Again going for the drive. Dilip wanted a single. But Rakshak doesn't know where the ball is. That's why he's not interested for the run. Rightly so. Hakim is always the very quick wicket keeper. Always searching for the opportunity. Chetan. To Rakshak. Ooh, that ball is not too far away from the stumps, isn't it? Absolutely lucky escape. Last moment that ball got extra bounce and misses the stumps. Otherwise, it's going to hit the middle stump of Rakshak. Chetan again. Right arm over the wicket. Again, balls beautiful delivery outside the line of off stump. Chetan also not feeling comfortable after delivering the ball. Looks like some part in the pitch is very fine, very greasy. So very difficult to grip the ground. 13 for the loss of 3 wicket. Each and every dot ball will go to create the problem for Sneha Malema. Chetan. Balls Rakshak, and after that 2 dotted deliveries. He's just thinking about the rotation of strike. And with that single Skobanamuzan to 14 for the loss of 3 wicket in the over number 3 is in progress. So far it's a very quiet over from Chetan. Very quiet over, and Dilip will going to take the strike. Chetan. Balls. Dilip went for the reverse sweep. Not quite getting that one from by bat, middle of the bat. And one more single is added total. With that single, Skuban moves on to 15 for the loss of 3 wicket. Very slow progressing here for team Sneha Malamar. Another 33 more runs required for the victory. This is over number 3rd is in progress. Chetan. Right arm over delivers. Far above Zalan of going for the run and Souhardha. Dilip wants a single. Rakshak doesn't know where the ball is. He's just responding for Dilip. But excellent piece of fielding there by Shakir. Absolutely fantastic work there by Shakir. Pick up and throw into the hands of wicketkeeper. That time Rakshak is out of the crease. One more wicket is back into pavilion. Sneha Malamar looking in a serious trouble. It's 16 for the loss of 4 wicket. Very good work. Have a look at the flick. Just in a flick, isn't it? Unbelievable throw there from Shakir to the hands of Hakim. 16 for the loss of 4 wicket. KFC Kodikal looking in a commanding position. So new batsman in is Pratap. Takes a fresh guard from umpire. ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಗಾಗಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. Again, looks like it's going to be one more single in the form of bye. Hakim fails to collect the ball. Wonderful over there from Chetan. Absolutely perfect over. 3 overs completed after completion of over number 3. Chasing 38 to win this match. Still the same Malabar searching for the right track. It's 17 for the loss of 4 wicket. 3 overs remaining. Another 31 more runs required for the victory. And before the next over going to commence, it's a time for Gopi to take over the microphone. And Gopi, the struggle time continues here for Sneha Malamar. Not only in the form of a fall of wickets, but even the run rate required is going up to 10.33 runs per over. And more than anything else, injuries for Yatin is definitely going to be a hurting factor for the teammates. That's why the body language is not look like they're 100% in the game. But I think KFC Kodikal, they dominated first 3 overs. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, और खासकर 4 विकेट उसके अलावा इस वक्त यतिन भी चोटिल इंजर्ड होकर बाहर जा चुके हैं. तो यहाँ पर कमबैक करना है तो स्नेहा मालेमार को इस वक्त चाहिए एक गट्सी बैटिंग, दिलेर भरी बल्लेबाजी. 31 रन बनाने हैं, गेंदे बाकी हैं 18. और इस वक्त देखते हैं 3 ओवर में क्या होता है. इस बार ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन पर, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. तो जहां तक सवाल है, जैसा कि आपने फरमाया, फर्स्ट 3 overs dominated by the bowlers of KFC
कोडिकल। और जहां तक सवाल है, देखना यह है कि अगले 3 ओवर में भी उनका डोमिनेशन जारी रहेगा या नहीं। तो इस बीच गेंदबाज दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और गेंद पहुंची सीधे शॉर्ट फाइनल पर, कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। धनुष है गेंदबाज जो कि गेंदबाजी यहाँ पर शुरू कर चुके हैं और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, चूंकि गेंद पहुंची फॉरवर्ड शॉट लेग पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। हर डॉट गेंद के साथ दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ स्नेहा मालेमार के ऊपर और इस बीच एक बार फिर से ये गेंद प्रताप के लिए, रिवर्स शॉट इस वक्त खेला गेंद हवे में, लेकिन फील्डर काफी पीछे, गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो धनुष इस वक्त दिलीप के लिए, ये गेंद दिलीप ने उछालना चाहा गेंद को, लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट एट द लास्ट मोमेंट। इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। जबकि चौथा ओवर उनकी पारी का प्रगति पर 1 गेंद इस ओवर में बाकी और इस बीच प्रताप अपने ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद इस बार स्विंग्स इट अवे एंड दिस टाइम ब्रिलियंटली स्टॉप्ड, ब्रिलियंटली स्टॉप्ड जस्ट इनसाइड डिफेंस बाय द फील्डर। थोड़ा सा भी मिसजजमेंट होता तो निस्संदेह गेंद सीमा रेखा को पार कर सकती थी, उनके शरीर को वंचित करते हुए। यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, परफेक्टली स्ट्रक, रिवर्स शॉट प्लेड बाय प्रताप एंड ब्रिलियंटली स्टॉप्ड जस्ट इनसाइड डिफेंस बाय द फील्डर। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, एब्सोल्युटली परफेक्ट स्टॉप। और इस बीच सिर्फ प्रताप को मिले इस गेंद पर 1 रन और 4 ओवर की समाप्ति 22 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। और ऐसा कहना पड़ेगा स्नेहा मालेमार काफी हद तक संकट की स्थिति में यहां पर नजर आता हुआ। 26 टू गेट इन रिमाइनिंग 12 balls and the required run rate is now gone up to exactly 13 runs per over। टीवी मॉनिटर पर इस वक्त दिखाया जा रहा है 26 गेंदों पर 22 रन चाहिए, माफ कीजिए 26 रन चाहिए 12 गेंदों पर। और इस बीच गेंदबाज शाकिर गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हैं। प्रताप पर सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग, मिसिंग द लाइन कंप्लीटली। गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला इस वक्त जारी रखते हुए गेंदबाज के एफसी को निकल के और एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा और इस बार प्रताप रन लेना चाहते हैं, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि गेंद को विकेट कीपर पीछे की ओर जाकर फील्ड कर चुके हैं। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 2 बेहतर गेंदें शाकिर इस ओवर में फेंक चुके हैं। अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, गेंद को स्विंग किया इस वक्त, लेकिन फील्डर मौजूद, डीप स्क्वायर लेग पर एकमात्र रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 23 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज शाकिर इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। यह गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया सीधे एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथों में और इसी के साथ एक और विकेट स्नेहा मालेमार का गिर चुका है। दिलीप की पारी समाप्त। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था। गेंद को उन्होंने खेला था जरूर, लेकिन सीधे पहुंची फील्डर के हाथों में। प्लेसमेंट बिल्कुल गलत और एक्स्ट्रा कवर पर जो फील्डर खड़े हुए थे ताजुद्दीन, उन्होंने कोई गलती नहीं की और इसी के साथ 5वां विकेट गिर चुका। इस विकेट के पतन के साथ स्नेहा मालेमार के विजय की उम्मीदें काफी हद तक कम हो चुकी है। 8 गेंदें बाकी हैं, 25 रन चाहिए। 25 रन टू गेट फ्रॉम 8 balls और अपनी नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त रिजवान का आगमन होता हुआ। रिजवान एक बेहतर खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं अंडरआर्म क्रिकेट के। खास तौर पर आमतौर पर आदि महेश्वरी क्रिकेटर्स का प्रतिनिधित्व वो किया करते हैं और यहाँ पर स्नेहा मालेमार के लिए वो खेलते हुए इस श्रृंखला में इस बार गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर पर खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल। ही गेट्स एटलीस्ट कपल फॉर दैट और 2 रन बल्लेबाज इस बीच प्राप्त कर चुके हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स इन द ओवर नंबर
5 in progress. Still a ball left in this over. Shakir अगली गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि बेहतर गेंदबाजी. ओवर की समाप्ति. 5 overs completed. 25 runs on the board. 23 to get from last over. अब ऐसा कहना पड़ेगा स्नेहा मार को सिर्फ चौके या छक्के ही इस मैच में वापस ला सकते हैं. 23 to get from last over for Sneha Malema to qualify for the semi-final of this competition. Hakeem starts the fresh proceedings from the commentator box and अंतिम ओवर शुरू होता हुआ स्नेहा मालेमार के बारे में. 23 they have to score और पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज हकीम तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बीच प्रताप के लिए इस बार गेंद को स्विंग किया है रिवर्स शॉट के जरिए 4 रनों के लिए. Fantastic shot came from the bat of Pratap. He just played that one with a twisted bat and finds the gap as well. और यहाँ पर देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त उन्होंने उछाला था. पहले ही भाप लिया था कि यहाँ पर गेंद मिडल ऑफ स्टंप पर आएगी और गेंद को इस वक्त उन्होंने तिरछे बल्ले के सहारे विद रिवर्स शॉट खेल दिया. इस वक्त बैकवर्ड थर्ड बैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. 19 रन चाहिए, 5 गेंदें बाकी. 19 to get from 5 balls. अगली गेंद लेकर तैयार इस वक्त हकीम. गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद प्रताप के लिए ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई बेहतरीन गेंद. गेंद को इस वक्त ड्राइव करना चाहा लेकिन न चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला. यह गेंद रिवर्स शॉट और इस बार गेंद निकल चुकी है. फाइन लेग पर 1 रन मात्र मिलेगा. 30 for the loss of 5 wicket. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟಾಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. और अब अंतिम अवकाश. द लास्ट चांस. 3 sixes required in the last three deliveries for Sneha Malema. Last chance in front of them. 2K inside it and it's going to be a single. 31 now. और अब ऐसा कहना पड़ेगा KFC कोडिकल की विजय यहाँ पर निश्चित है अगर गेंदबाज इन बचे हुए 2 गेंदों में कोई नो बॉल या वाइड ना फेंके तो. हकीम धीमी गेंद रिवर्स शॉट डीप बैकवर्ड थर्ड बैन पर. Not more than a single. 32 now. 16 to get from last delivery. Absolutely formality now remaining in this match. और अंतिम गेंद लेकर हकीम इस वक्त तैयार. दाहिना हाथ ओवर द विकेट. इस बार गेंद चिप किया और गेंद पहुंची एक्स्ट्रा कवर पर और इसी के साथ 15 रन कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री registered by KFC Kodikal against Sneha Malema and with that victory they are through to the semi-final of this competition. So in semi-final match they will meet NM Mangalore. One more good match is now coming up right after this match which will be going to start now between Team Matrix versus Zaman Boys Kalarka. After this match of Team Matrix and Zaman Boy Kalarka, second semi-final match will be played between NM Mangalore versus KFC Kodikal. And now it's time for the first semi-final. Zaman Boys Kalarka will take over Team Matrix. So man of the match award goes to Shakir of KFC Kodikal, adjudged man of the match for his all-rounding performance. He scored 15 runs and in the bowling department he's conceded just 7 runs in his 2 overs quota and captured 2 wickets. And because of this all-rounding performance, he backed the man of the match award. I request Mr. Shakir of KFC Kodikal, please go on to the stage and receive the man of the match from our honorable guests. Sir, come here, So that's now all league matches has been over and first semi-final of this tournament is now coming up between Zaman Boys Kalarka versus Team Matrix and that match is now going to start within just a while and so toss procedure is completed. So
So Team Metrics are won the toss and they elected to field first. So ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರೂಫ್ ಟೆಕ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಸಾದಿಕ್ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಜೀರ್ ಈಡನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ಮುಗಿದಂತಹ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಶಾಕೀರ್ ಇವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ತೆರಳಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಈಡನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. And now it's for the time for the first semi-final match is now going to start between Zaman Boys Kalladka versus Team Metrics, and Team Metrics after won the toss they elected to field first, and we'll be back right after the short break with my friend Satish in English with when the match will going to start right after the short break. Thank you. Dhanyavad. ಭಯಂಕರ ನಸ ನಸ ಚಕ್ Ada di mana saya tadi boleh dalam beli. Nena. Ede bachir kai. So match will going to start and of course those who are watching a live telecast of this cricket tournament in Bedra Media YouTube channel, link will going to change now. So please note all the viewers, YouTube channel viewers, link will going to change and fresh link will going to be sent to the all the viewers of Bedra Media YouTube channel. So all set now for the semi-final in the local group and it's a very good match. Two very good teams. Team Matrix will versus Zaman Boys Kalladka. After winning the toss, captain of Team Matrix, Taslim has got no hesitation in his mind. He wanted to ball first because he is the one who starts the proceedings. So he loves the ball
and he wanted to restrict the batsmen of Zaman Boys Kalatka. Zaman Boys Kalatka has got playing 11. Absolutely fantastic. Azim and Baba always open the innings. Azim is a fantastic striker of the ball. Will go into face. Taslim, first ball, right on the money, right on the target. Wants a single. It's going to be a suicider. Azim wants a single. Baba not interested, rightly so, because ball went straight to the hands of short mid off region. And Azim quickly realizing that there is no run at all.